माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Oath or affirmation, Secretary General. हिमाचल प्रदेश डॉक्टर सिकंदर कुमार। Please. मैं प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। दस्तखत करना। त्रिपुरा श्री माणिक साहा। আমি মানিক সাহা রাজ্যসভায় সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহ করিব। दस्तखत करें। Sri Rao Indrajit Singh, papers to be laid on the table. Chairman, sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1 in today's revised list of business. Sri Krishan Pal ji. इसे आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। श्री पंकज चौधरी। नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री भगवंत कुबा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रमक संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Dhanyawad. श्री संथरू ठाकुर। Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at the serial number 7 of today's revised list of business. Thank you. डॉक्टर मुंजीपारा महेंद्र भाई। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned serial number 8 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. श्री पंकज चौधरी। आ जाएगा। 2 है ना पंकज जी, आपका नाम पे 2 है। सीरियल नंबर 9 में पंकज चौधरी है, कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए। देन भगवत कराद। Honorable sir, with your permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in the revised list of business for today at serial number 5.
Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 4th of April 2022 passed the Criminal Procedure Identification Bill 2022. I lay a copy of the said bill on the table. Report of the Department Related to Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development. Sri M. Shanmugam. Thank you, sir. I rise to lay on the table a copy of English and Hindi of the 33rd report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on implementation of National Apprenticeship Promotion Scheme, National Apprenticeship Training Scheme. Thank you, sir. Reports of the Committee on Public Accounts. Dr. Amit Thambidurai. Permission, sir. I raise to lay on the table a copy of each in English and Hindi of the following reports of the Committee on Public Accounts Committee 2021-22. One is 48th report on levy of anti-dumping duty on imports. Second, 49th report on assessment relating to the agricultural income. And third, 50th report on action taken by the government on the observation recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 24th report, 17th Lok Sabha, on excesses over voted grants on charged appropriation 2017-18. Thank you. Motion for election to the Central Supervisory Board. Dr. Bharati Praveen Pava. Honorable Chairman, sir, on behalf of my senior colleague Dr. Mansukh Manvia ji, I rise to move that in pursuance of Section 7(2)(f), read with Section 8(1)(a) of the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Prohibition of Sex Selection Act 1994, this House do proceed to elect in the manner as directed by the Chairman one woman member from amongst the members of the House to be a member of the Central Supervisory Board constituted under the said Act. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Parliament Affairs Minister. Sir, today as per the list of business we are the scheduled discussion is on the Chartered Accountants Bill and the Delhi Municipal Corporation Bill. And as per the normal routine, we are to meet at 2 o'clock and start the discussion. But since we have only 3 days left for the session to conclude, and the legislative business that is pending, to conclude that, I would suggest, and if the House desires, we may skip lunch and start the legislative business at 1 o'clock. So I had a discussion with some of the senior members and other party leaders also. Right. Okay, 1 o'clock. Then we have received notices from Vishwambar Prasad Nishad, Ram Gopal ji, Mallikarjuna Kharge ji, Susmita Dev, Srimati Mosam Noor, Sri Avir Ranjan Biswas, Sri Tirucha Siva, Sri K.C. Venugopal, Sri Secretary, and Sri K.R. Suresh Reddy about procurement of paraboiled rice. The all notices were on price rise, hike in the price rises, which I have already yesterday said I am not admitting it. So I am not admitting it. So please. या मैं वही पूछना चाहता हूँ, सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी? प्लीज सर, ये रोज आपको हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि इन्फ्लेशन पे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएन और उसके बाद पीएनजी, डीएपी, एनपीके, मेडिसिन, कितने चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और डिस्कशन के लिए अगर सरकार तैयार नहीं, अगर आप मौका नहीं देंगे, हम कहाँ बोलेंगे? कहाँ बोलेंगे? खड़गे जी, खड़गे जी, I heard you. I have already said that we had discussion on some of these issues on
appropriation bill, finance bill. I can show you the records also how the members have spoken. But and if the section of the members they disturb the house, what is the way out for the chairman? नहीं आप बोलिए कि जब डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के दूसरे दिन ही पड़ता है। आज अभी करे क्या? 2 घंटे पहले 80 पैसे फिर बढ़ाए, 80 और किसी को नहीं छोड़ रहे, किसान को नहीं छोड़ रहे, गरीब को नहीं छोड़ रहे। मैं तो मेंशन करने के लिए आपको मौका दिया। Please, no, you have already mentioned the issue. I understand. No, this is not. सुरेश रेड्डी, No, ये अच्छा नहीं। ठीक है। Please, no, करगे जी, please. Chairman sir. Chairman sir, on the please. Chairman sir, on the fireball rice, sir, we have given a notice. It's a very important issue. The whole state of Telangana and other states like Orissa and Andhra. There are other totally provisions agitated under on which this. you can We discuss like this. the discussion on this, sir. The government is totally I am not going to indifferent. suspend the business of the house for this. Sir, the You can government raise is the totally issue indifferent. and then when you get an opportunity. Sir, I have no other option but to walk out. We have no other option but to walk out, sir, if we are not allowed please. discussion on this. I understand the concern major- you are expressing, but when you are getting an opportunity, you must utilize it properly and then put it before the house. Sir, we Not are allowing the house to avail the and then getting it opportunity. adjourned is not going to help anybody. Now, 0 over, Mr. Muhammad Nadimul Haq. Right. Here. No, that's different. Nadimul Haq. Kargeji, you made your point. I have given an opportunity. Please. I know that. Right, Sri Suken Sekhar Rai. What is the issue? Reason है आपसे क्यों नाराज होता हूँ? आप इतना किसानों की बात कर रहे करने नहीं प्लीज मैंने जब करना है बात तो उस समय किया नहीं, आपको अभी याद आया, आप अभी बात करना चाहते, तो मैं क्या करूं सर? प्लीज nothing else will go on record except what is permitted by the chair. Sri Sukendra Sekhar Rai. Sri Suresh Reddy ji, please sit down, you made your point. Sir, They have got every right to walk out. Right, okay. Sir, it is true. It is true that during appropriation bill or finance bill, some casual references were made regarding petro products, etc., rise in prices. But what we want a structured discussion. If 267 is not allowed, then kindly allow us to move a notice for half an hour discussion tomorrow or the day after. Right. So please consider that thing. So this is my appeal to you. Please. Now 0 over mentions Sri Muhammad Nadimul Haq. सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हज यात्रा नहीं हो पाई है। 2020 और 2021 में इंटरनेशनल हज नहीं हुआ। प्लीज सर अब जब ऐसा लगता है कि हालात मामूल पर आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस साल यात्री हज अदा कर सकेंगे, लेकिन सर ये लगातार तीसरा साल है कि आज़मीन यानी यात्री ने फॉर्म भरकर जमा कर दिया है, मगर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुमा ये बताने से कासिर है कि हिंदुस्तान से हज 2022 की अदायगी होगी या नहीं। सारे लोग एक गैर यकीनी सूरत हाल के शिकार हैं सर। पिछली हज कमेटी के मियाद के खात्मे के बाद नई कमेटी की तश्कील नहीं की गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद 1 अप्रैल सर गैजेट ऑफ इंडिया इसमें 1 अप्रैल फूल्स डे को सर ये आपका डिमांड क्या है? हाँ सर मैं बता रहा हूँ कि नई कमेटी का गठन हुआ सर। इश्यू के साथ मैं बता रहा हूँ सर मैं बता रहा हूँ सर कमेटी में 11 मेंबरों को नॉमिनेट किया गया। राज्यसभा से भी जफर इस्लाम साहब को नॉमिनेट किया गया सर। इस कमेटी में कुछ खामियां रह गई हैं, जहां 4 जॉइंट सेक्रेटरी हैं सर, उनको वोट नहीं
पावर है वोट देने का, वहीं पर सर 9 मेंबर जो रियासत से, जो अलग अलग स्टेट से चुन के आते हैं, अभी तक उनका इलेक्शन बाकी है सर। नहीं, ऐसी सूरत में सर आपको हज यात्रा चाहिए, ये इलेक्शन? मेरा सुझाव सर है, मेरा सुझाव है सर। सर मेरा सुझाव, प्लीज, मेरा सुझाव सुन लिए सर। आप अभी तक बाकी विषय बात किया, अभी कह रहे हैं सुझाव सुनिए। मैं सुझाव ही बैकग्राउंड दिया सर, मेरा सुझाव तो सुन लिया। मंत्री रेस्पॉन्ड कर रहे थे, टाइम होगा। जैसा कि ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि पैंडेमिक पीरियड में पिछले 2 वर्षों से हज यात्रा नहीं हुई। हज यात्रा हुई है, लेकिन जो इंटरनेशनल हज यात्री जाते हैं वो नहीं गए। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से तैयारियां, लेकिन हज यात्रा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सऊदी अरब में होनी है, और सऊदी अरब सरकार को तय करना है कि हज यात्रा कब होगी, कितने लोग हिंदुस्तान से जाएंगे। इसी समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय रिकॉर्ड 2 लाख से ज़्यादा हज यात्री हिंदुस्तान से हज यात्रा करने गए हैं। इसलिए पैंडेमिक पीरियड की वजह से है, जो सऊदी अरब सरकार तय करेगी हम उसके साथ हैं, लेकिन हमने तैयारी पूरी कर ली। हक जी ने बाकी विषय उठाया, बाद में उनको बुला के बात करिए, विषय के बारे में बात करिए। श्री वाई एस चौधरी, प्लीज, यू नो हाउ टू मेक ए 0 आवर सबमिशन। आपको बुलाने वाले हैं, विषय को समझ लिया और कैसा इसको रिजॉल्व करना देखेंगे। श्री वाई एस चौधरी, thank you, आपका डिमांड है तो बोलिए। This is regarding Polavaram project for the state of Andhra Pradesh. It is generally called as a lifeline for the state of Andhra Pradesh, and the history goes like the project was originally planned before even independence, and subsequently in 1980 the foundation stone was laid by Sri T. Anjay Garu, the then Chief Minister. Then, however, it was totally neglected by its consecutive governments. In 2008 or so, the then Chief Minister Sri Rajyasabha Garu have just like that started the project without even by taking any approvals. However, unfortunately, he passed away. In 2011 or 12, the then state government awarded the contract to an ineligible contractor. However, the project has suffered fully. Subsequently, in 2014, due to Bifurcation Act, the Government of India agreed to take up the project as a national project and complete the project in full. But subsequently, Parliament also passed a bill for handing over 7 mandals of Telangana to Andhra Pradesh in order to complete the project. In spite of all these things, and after Cabinet approved and taken a decision for setting up PPA, the Polavaram Projects Authority, the then state government was asked to implement the project by the central government. Subsequently, due to lack of coordination or due to lack of clarity about the completion of the project, there is a confusion about the R&R. The R&R Act was amended in 2013, which was originally 1894 Act, to increase the compensation to the land losers. Because of that confusion, project is suffering. By not completing the project, there is going to be a huge loss to the state of Andhra Pradesh, and moreover, about 25,000 crores worth of agriculture production is likely to come up once it is completed, left and right canals. So thereby, it contributes about 1 lakh crores of GSDP, which also generates about 4-5%, means 4-5,000 crores per annum of GST. So I request central government to take immediate action to ensure that the project is completed without saying anything about the state government, because there is no point in keep on coordinating the state government. It's a central project. I request the project may be taken over back to the central government and be implemented, sir. Thank you. Right. Srimati Rajani Ashok Rao Patel. Sir, lions in India were reduced to less 50 individuals in the early 1900s. When the Nawab of Junagadh prohibited their hunting and invested in their conservation. Lions have increased to 700 plus official number. About 60% of these lions are outside of the grid protected area and living with the people in the agro-pastoral, industrial and railway zone. Sir, through you, I want to request that India has been a leader of a scientific census of tigers. The lion population estimate is based on the total counts that are not scientifically accepted. Scientific methods are developed by wildlife
Institute of India and available, but the Gujarat government is reluctant to implement them. Since all Asiatic lions are in a single population, they remain vulnerable to any disease, epidemic, drought, cyclone. Like the Serengeti National Park, Tanzania and Kenya, 1/3 of the 3,000 lions died due to distemper virus in a very short span of few months. Such an epidemic can result in the extinction of the Asiatic lions. Currently, the distemper of virus is killing the Gir lion also. For a viable tiger population, the tiger reserves need to have a human-free space over that 800 square kilometer. The same is true of lions. However, for the only population of Asiatic lion, sir, the space is only 250 square kilometer in Gir forest. The rest of the Gir protected area, forest and Saurashtra, the lions are sharing with people and the industrial area. Since the Gir lions were reduced to a very small number and recovered, they are highly inbred. In such inbred population, the natural process of survival of the fittest is very important, sir. And the lions, in this case, the generation of the lions, since the lions are have the bad genes, they do not survive and reproduce. The MOFCC, GOI, Government of India, have announced Project Lion with central government assisted preliminary in Gujarat. However, the major expenditure planned under the project of the Gujarat government is to build lion hospitals. Sir, lion hospital is the last thing for the lions. There cannot be a lion hospital for lions. That is the last thing to do. Lions need, for their conservation, as explained above, what lions need is a second home. I request you, sir, that the Asiatic lion, which is very precious to us, for our Indians, they should be resettled in 2-3 various places rather than Gir. So we should not keep all eggs in one basket. They will be protected and safe. Right. Professor Manoj Kumar, whoever want to associate, please send. शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। बेहद खुशी की बात है कि आपने सहमति दी इस महत्वपूर्ण विषय के लिए। माननीय, आपके माध्यम से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं पूरे सदन से कि चुनावी घोषणा पत्र की प्रासंगिकता लगातार खत्म होती जा रही है। कई जगह तो चुनाव के एक दिन पहले आता है। तो चुनावी घोषणा पत्र की जो गरिमा और जो महत्ता 52, 57, 62, क्योंकि विश्वविद्यालय में हमारे पास एक पेपर हुआ करता था सर, सोशल पॉलिसी, उसमें हम लोग मैनिफेस्टो एनालिसिस करते थे। अब वो यूनिट ही निकल गया विश्वविद्यालय से, क्योंकि मैनिफेस्टो के प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की अक्रॉस स्पेक्ट्रम, उसमें लगातार गिरावट आ रही है सर। जबकि मानना ये है, अगर मैं 52, 57, 62 की बात देखूं, वहीं तक रखता हूं, तो चाहे भारतीय जनसंघ हो, भारतीय कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, डूएबल थिंग्स को सामने रखते थे और केंद्रीय विमर्श में उस पर चर्चा होती थी। अब इन दिनों क्या होता है सर कि केंद्रीय विमर्श में अधिकांश तौर पर नफरत, घृणा, वैमनस्य और अशोभनीय टिप्पणियां, मैं समझता हूं कि 2015 में एक पिटीशन फाइल किया गया, तो जस्टिस दत्तू की बेंच ने और जस्टिस अमिताभ रॉय के बेंच ने कहा कि चूंकि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है मैनिफेस्टो, तो हम इस पर चर्चा आगे नहीं कर सकते। लेकिन 2013 का एक वाकया है सर, जब जस्टिस रंजन गोगोई, जो हमारे सहयात्री भी हैं इस हाउस में, और सदाशिवम, उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय लोकतंत्र की गरिमा और गंभीरता बहाल रखनी है, तो हमें यह तय करना होगा कि मैनिफेस्टो को एक लीगल शेप दिया जाए, पार्टीज अकाउंटेबल हो, वो आसमानी मुद्दों की बात ना करे, ताकि जमीन के मसाइल बाकी हैं लेकिन आसमानी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः सभी पक्षों से, सरकार से आग्रह करता हूं, एक बार सामूहिक रूप से बैठ करके इस पद्धति को विकसित किया जाए, ताकि चुनाव में और उसके केंद्रीय विमर्श में हम क्या करने वाले हैं वो पॉजिटिव एजेंडा है, ना कि ऐसी चीजें जिससे नफरत की दीवारें खड़ी होती हैं। सर, जय हिंद। I am seeing only few hands are being raised. शरद जी, ये संभव है क्या? Is it possible? Devagowda ji, is it possible to make election manifesto legally binding? I will ask you. We are in a hurry.
Let us. So if they are ready, we are ready. Don't make comments. If they are ready, you are ready. This I just want. No, only thing certain issues has to be discussed, sir, on the issue of the election manifesto. That's my opinion. Political parties should meet, think about this issue seriously, and then move forward in the larger interest of the country. It's a real issue. What has been raised is a very important issue. And when we are in opposition, we say it should be enforceable. When we are in position, our position is different. So all parties should apply their mind and then come to some conclusion. We have now 75 years of experience. That's my appeal. I can only make an appeal as far as that is concerned. Right. Sri Kanakameda Ravindra Kumar. Thank you, sir, Chairman, sir, for giving this opportunity to raise an important issue pertinent to the concerning development of Andhra Pradesh and providing employment opportunities to the people of the state of Andhra Pradesh. Sir, pursuant to the enactment of AP Reorganization Act by the Parliament, the capital has to be established in the state of Andhra Pradesh. Accordingly, the erstwhile government, under the leadership of Chandrababu Naidu, has identified Amaravati as a capital. And after establishing the capital, it is usual practice, the new state is formed, usual practice, RBI, COG and other central organizations, PSUs, used to establish their offices in the region and in respect of a particular state. Accordingly, several lands were allocated to the state of Andhra, in the Amaravati capital by the erstwhile government under leadership of Chandrababu Naidu to construct their houses and to create an employment for all the people of Andhra Pradesh. In the meanwhile, the present government has taken a decision not to continue the Andhra Pradesh and enacted 3 capitals bill. And subsequently, after due deliberations before the court of law and the outside, that bill have been withdrawn. Later on, the division bench of Andhra Pradesh High Court also passed an judgment. Categorically, Amaravati shall be the capital, and they directed the government to continue the capital and to create infrastructure and allot the plots as per the agreement to the farmers, which was giving a land under land pooling system. Therefore, the present government is already directed by the AP government, and the AP government did not prefer an appeal to the Supreme Court. The judgment of the Andhra Pradesh High Court became final. The Andhra Pradesh government also filed an affidavit before the High Court that it requires time to comply the terms of the directions of the Honorable High Court to implement it. So it shows that the Amaravati is, for all practical purposes, is capital. In a question to the RBI has sent a reply to an individual citizen of Andhra Pradesh. First you decide your capital and then we will put our office. That was the state of the affairs is going on now. Though the capital has already been decided by the government and also the capital, by the court. Now a process is going on. There is no ambiguity with regard to the Amaravati is the capital. So in view of the present situation, I request the central government and urge the governments on public undertakings through you, sir, to establish their offices in the Amaravati and to create an employment to the people of Andhra Pradesh and for its development forever. Thank you, sir. Right. Sri Anil Desai. Thank you, Chairman, sir. So my subject is regarding applying Mumbai City bus transport model in Delhi. So Mumbai is known for lakhs and lakhs commuters who travel by public bus transport, which is the lifeline of Mumbaikars, and the commuters next to only suburban local train services. And the discipline which has been maintained, the services BEST, that is Bruhan Mumbai Electric Supplied and Transport. The services which started in year 1873 will be completing 150 years of its public service. Though BST undertaking is a part of Mumbai Corporation, which has a
budget of more than 40,000 crores. And commercial viability, if you happen to see, that it is not profit making, but it is subsidized to see that best services are given to the people of Mumbai. Under the leadership, this is the 5th consecutive continuous term of Shiv Sena, our party, which is ruling there under the able leadership of Uddhav Thackerji, who is also Chief Minister of Maharashtra. My suggestion was that the same discipline and the kind of transportation which takes place in the city of Mumbai, if the same model is applied in Delhi, that is DTC, that maintenance part plus the subsidized transport which is given to the people of Mumbai, the same can be accorded here in Delhi. If you see that Mumbai model, if it is adopted, kind of maintenance is taken care of the entire fleet of BST buses, the separate depots, and the care is also taken to great extent, which is despite the fact that it is not profit making, but subsidized way government is and the municipal corporation is taking care of Mumbai. The same way in Delhi, in the time of, I think, Corona pandemic, that to observe COVID protocol, the buses were not fully loaded with the commuters and all. But after the pandemic has come down, the loads have again started. In Mumbai, there is a queue maintained for every bus. In peak hours also, where a lot of rush is there, and every commuter is eager to get into the bus, whatever he gets. But conductor inside with the driver, he arranges and he controls the check. The very few people, commuters are allowed to stand in a row, and that discipline itself has taken and contributed towards the progress of Mumbai. Delhi being the capital of the country, it needs to have that kind of same kind of model which is there in Mumbai. Right. I'll be happy if it is the Right, suggestion is- Thank you. I hope that Sanjay Singh is hearing this. It's not a suggestion. It is not a suggestion. No? So, it is for every state to take their own decision and then follow their own model. He just wanted to present the Bombay transport model, so both being important cities. M. Shanmugam. Thank you, sir. I want to raise the important issue of the ratification of ILO conventions. Sir, ILO, International Labour Organization, was constituted in the year of 1920. During these 100 years, India is also one of the founder members of that ILO. They passed 190 conventions. Out of 190 conventions, only 47 ILO conventions ratified by the India. The core conventions like freedom of association, right to organize, forced labor, child labor are yet to be ratified by the Union government. With a great labor movement, agitation and sacrifice, labor unions have achieved the basic rights of the labor community. Many democratic countries, including Vietnam, recently adopted ILO Convention 87 regarding freedom of association, ILO 98, right to organize of collective bargaining. Sir, there are two types of bodies. One is industries. They form unions under the Trade Union Act, where in the case of the government employees, they form association under the Societies Act. Now both the bodies demand for betterment of wages, bonus and working condition. When a worker is suspended or dismissed, dispute is raised, disciplinary committee is constituted. In both the cases, they go to the court, namely tribunal. Hence, there is no difference between union organized by the industry and the union organized by the government employees. However, the bureaucrats stand in the way and not allowing to form union the government employees by the Trade Union Act. When Sri Mallikarjuna Kharge was the labor minister, we trade union leaders convinced him and he agreed for it. But unfortunately, he was transferred. India being a democratic and welfare state, I would urge upon the government, especially the Honorable Labour Minister, to take initiative to ratify these important fundamental and the core convention of ILO at the earliest. I will give you a good name,
It will give a good name to our country in the international area. Thank you, sir. Right. When that government comes, I hope that they will remember this suggestion about Khargeji. Sri Prasanna Acharya. Thank you, sir. Sir, the freedom struggle of India has a very long history, and it is a history of dedication, a history of sacrifice and sufferings. Sir, many a patriot participated and led the movement at different point of time to free Mother India. Some raised their swords against the Britishers, and many Indians followed the way of Mahatma Gandhi and fought non-violently to free this country, sir. Sir, one such freedom fighter, his name is Veer Surendra Sai, who belonged to Sambalpur region of Odisha. He raised his sword against the Britishers at the age of 17 only. And throughout his life, he fought against the Britishers. Sir, we know that Nelson Mandela was imprisoned by the foreign rulers for long 26 years. And it is said that it is the highest period of incarnation by any freedom fighter. But this great freedom fighter I am mentioning, he spent 36 years inside the British prison in 2 phases. And he started his war against the Britishers much before the War of Independence of 1857. And sir, he died in the prison at the age of 74. He was blinded by his captors, by the Britishers. And sir, his last days he spent in the Asirgarh fort in Marnau in Maharashtra. Many memorial has been erected in Odisha in his honor, sir. But as yet, there is no memorial in memory of this great freedom fighter in the place where he met his last, and he was tortured like anything, he was blinded, and his whole family was sent to jail. Many were hanged, many were sent to the Andamans, and great freedom fighter like Madhav Singh, who was disciple of Veer Surendra Sai, his entire family was also sacrificed. Some were hanged by the Britishers, some were imprisoned for life, sent to the Andaman jails, and this great freedom fighter, he spent his last in the Asirgarh jail, now in Maharashtra. I would request the central government, and through you, sir, and through the central government to the government of Maharashtra, to kindly erect a memorial in the Asirgarh fortress, where this great son of India met his last days under the British rule. Sir, that will inspire the progeny, that will inspire the next generation, that will inspire the younger generation of this country. So once again, I appeal the central government, and through you and the central government, to government of Maharashtra, to kindly consider it and erect a memorial in memory of this great freedom fighter, Veer Surendra Sai. Thank you, sir. Thank you, Prasannaji. Sri John Britas. Sri John Britas. Thank you, sir. Please send the name. Sir, I am raising a matter which is going to affect the future of this nation. Sir, education is in the concurrent list. The government which harps on federalism takes unilateral decisions in the field of education. Sir, our education system is tampered with half-baked ideas. There is no meaningful discussion with states or the stakeholders. The University Grant Commission recently decided a common university entrance test, CUET, will be held from this academic year for admission to undergraduate courses, and the marks obtained in class 12 exams will not be counted or considered. At a stroke, sir, the UGC has taken this decision without any discussion. Sir, the UGC chairman, who had vitiated my alma mater, that is JNU, was rewarded the UGC chairmanship, and he wants to impress his bosses. No, please make your issue. Don't Sir, make very important, allegations. sir. That Sir, will not go on his record. interviews were splashed across the media, but the inherent flaws in the system, which were aired by the journalists, have not been responded to. Sir, please consider the issues that are already discussed in the country in relation to needs, sir. So the Tamil Nadu members are agitated. Sir, the issue is that
students from the weakest sections are not considered because they don't have hefty amounts of money to pay for coaching. Sir, you want to bring this coaching for the university education also. So there was a raging controversy with couple of the friends of the UGC chairman alleging mark jihad against Kerala students. Please, because we were you are into supposed the to talk on introducing Central University entrance Sir, test. sir, You 4 are points. going- Sir, 3 points. These sir. references Sir, to the okay, EGC sir. chairman Okay, will sir, not please, go on please record. delete. Sir, there are other flaws also. Sir, there is an inherent advantage for those students coming from well-to-do sections. The students from weaker sections will not be having the facility of coaching. So the second thing is that there are verticals of social justice. Think about a student who comes from the weaker sections, do not pass this qualifying exam. I really want the ministers to think about it. This is against the cardinal principles of the social justice. Sir, third important factor is that there is a distinct character for every university. It's not like school education, sir. A student aspires to be part of a university. Right, Mr. Britas, Sir, time is over. Sir, fourth point, sir. Please, what can I do? You went out of the point and now you want to come to the point. What can I do? Sri Dr. Ammumani Ravadas. No, it will not go on record. You see, you know the procedure. Please. See, I suggest to the members, whatever they want to say, they should say it within the time. We try to go out of the issue and then at the end we come to the issue and we will not be able to do justice. That's my concern. Otherwise, I have no problem. I allowed this because it's an important issue. One point of view that has to be properly projected before the House. Please. Thank you, sir. Sir, the Kaveri River caters to the needs of more than 22 districts out of 38 districts in Tamil Nadu. And it satisfies the drinking water needs of more than 6 crore population, including Chennai. And more than 50 lakh farmers are dependent on this river. Sir, after a long legal battle of more than 30 years, the Supreme Court as well as the Kaveri River Tribunal gave its final verdict saying that Karnataka shouldn't construct any activity across the Kaveri in Karnataka without the permission of Tamil Nadu, which is a lower riparian state. Please. Sir, You make your point. Yes, sir, that's what I'm making. Don't bring the name of other states. Karnataka government has unilaterally decided This that is they the are going to problem. construct Please. a dam called Mega No Dam. reference to Karnataka will go on record. 70 TMC water. No reference to Karnataka will go on record because you confirm. I'm calling you, sir. I'm calling you also. Verdict, sir. I'm calling you also. It is completely Please. illegal and they have also sanctioned Please. 1,000 Chandrasekhar. crore Chandrasekhar. in that budget Chandrasekhar. for a project which is illegal. You want to aggravate for the a issue? project which they have Please. not given any permission, any legal permission has not been obtained, sir. Right. Sir, I kindly request the central government to intervene because this is not only a river issue, sir. This is a very emotional issue and this will soon turn into a law and order issue. We have been living as brothers and sisters for centuries across the border and we want the situation to remain the same, sir. Please. Sir, These are all not going because on of record. climate Why are you change, wasting your energy? Tamil Nadu is facing huge problems of water scarcity. The issue is only intervention of the central government. That's Yes, the sir, subject that he is has what raised. I'm Only to requesting, that sir. extent. Sir, today Right, Ammavani. Karnataka has a storage, Right, Amma. sir, just 1 minute. Sir. Other references to other Karnataka states has a will not storage go on capacity record. Of 140 TMC today. And I also seen And that if they tendency build by this some mega dam newspapers dam, their to storage say, capacity to will be write 210 TMC. what is Tamil removed Nadu from the got only records. storage Please capacity take of note 93 that should TMC, not be sir. referred. And we are not going to get any Right, drop of Ammavani. water. Already Right. only excess See, water see, is Devagowda coming ji. as flood water is coming to Sri Tamil Devagowda ji, please. Ammavani Ravadas, it will not go on record. Please. This is not the way. This will not go on record. If the member do not obey the chair, the entire issue raised by the member will not be part of the proceedings. This is my ruling for future also. If anybody goes beyond the chairman's this thing, what they said will not go on record. This has to be taken note by the Secretariat and also media. The House has to be run in accordance with some
rules, regulations and principles. It has become a fashion for some people. And the chairman says also, still they go on to show that as if they are arguing the... And moreover, when we are raising an issue which is sensitive, we should not take the name of other states. It's a simple thing. We are a council of states. We are not here to accuse each other. Only issue will go on record. No mention of any state, any reference to any state will be part of this thing. It will not go on record. Devagodaji, drinking water, please. Yes, sir. Devagodaji met 5-6 times to me and he told me also that only he will express concern about the drinking water, that's all. No. I am only confined myself to the drinking water issue. I am not going to raise construction of any dam, all these things. I am not going to raise. Sir, I know the whole issue and the entire sharing of water, all these things. This is not now I am going to raise. Things what has happened in last 200 years, I know everything, every item I can debate on this house. Only thing is, we have got only drinking water, not only that, the entire Bangalore city is denied by the tribunal, and the same thing by the Supreme Court on the basis of the tribunal, what they have decision was given, 4.75 TMC of water for Bangalore. And I am not raising any state. I am only confining myself to my home state. So the point is, 1,30,00,000 people are in Bangalore. Let anybody from this house, irrespective of whichever party they may be, not concerning this Karnataka or other 3 states, any person as a delegate, let him go and see. And come back to your good self report. The point is today, we are entirely suffering for the drinking water, where to our misfortune, the area which has not been confined to Kaveri Basin, that was the decision given by this Supreme Court. Sir, with folded hands, I can speak volumes on this issue. Right, please. You have made your point. Permit us, sir, to have something. Drinking water, we are the beggars today. Thank you. With folded hands, I will. Please, sir. Sukendra Sekhar Rai, Sukendra Sekhar Rai, please. Wait. Your good self It's an important issue. That's why I allowed him. And he did not make any controversy or comment on others. Sir, your good self is the champion for promotion of Indian regional languages. So with your kind permission, I would like to speak in Bengali. Please. Sir, সম্প্রতি লন্ডন টিউব রেলওয়ে অথরিটি তাদের যে হোয়াইট চ্যাপেল স্টেশন রয়েছে आपने पहले इन्फॉर्म किया ना, इसलिए वो भाषांतर का व्यवस्था नहीं है. He is there. I have informed, sir, he is there. Right. अच्छा. So, লন্ডন টিউব রেল অথরিটি তাদের হোয়াইট চ্যাপেল স্টেশনের কে সাইনবোর্ড লাগিয়েছে বাংলায়। ইংরেজি আছে, ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা সাইনবোর্ড লাগিয়েছে এই কারণে যে হোয়াইট চ্যাপেল এলাকাতে প্রচুর বাংলাভাষী মানুষ থাকেন। তো এটা শুধুমাত্র যে বাংলা ভাষার গৌরবকে স্বীকৃতি দেওয়া তাই নয়, এটা 1000 বছরের পুরনো এই ভারতীয় ভাষা, তার যে মর্যাদা, তার যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, এটাই প্রমাণিত হয় সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে চাই যে আমাদের রাজ্যে অনেক কেন্দ্রীয় সংস্থা আছে যেখানে ইংরেজিতে, হিন্দিতে সাইনবোর্ড রয়েছে। আমাদের তাতে আপত্তি নেই। ইংরেজিতে বা হিন্দিতে যদি সাইনবোর্ড থাকে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তার পাশাপাশি বাংলাতেও সাইনবোর্ড রাখা হোক এবং ভবিষ্যতে যে মেট্রো রেল স্টেশনগুলো আসছে সেখানেও যাতে ইংরেজি, হিন্দির পাশাপাশি বাংলা ভাষার সাইনবোর্ড থাকে, এটাই আমার আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সুকেন্দ্র শেখর রায়। This issue raised by Sri Sukendra Sekhar Rai ji is not confined to Calcutta alone, for the entire country.
And for that matter, all government signboards in every state belonging to center or state government, mother tongue, state language, then Hindi and English. This should be the model. Otherwise, people will not be able to understand. So I hope the government will take note of this and see to it that proper instructions are given to all the concerned agencies. This is to be, because it has to be national policy. And we are a free country, independent country. In the word regional language. These are national languages. Let us not use the word regional languages This is anymore. what, that has been my stand. I said it also. Let us not use the word regional language. In the state language where it is situated. Right. They are nodding their head in agreement. Sri Neeraj Dangi. Yeah. So there is no senior concerned minister available. Sir, they keep mum. Please. When I say something, it will be taken seriously. You don't worry. I'll see to it. Right. Okay, please. सर माननीय सभापति महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का जो अवसर प्रदान किया आपने, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। रेल बजट 2011-12 में डूंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा नई रेल लाइन परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस हेतु राजस्थान सरकार तथा रेल मंत्रालय के बीच में लागत सहभागिता को लेकर के वर्ष 2011 में एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। एमओयू के समय परियोजना की संभावित लागत रुपए 2082.75 करोड़ जो परियोजना की लागत थी एवं रुपए 180.94 करोड़ जो भूमि की लागत थी, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना लागत का 50% वहन किया जाना था। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में आने वाली भूमि अधिग्रहण की लागत को राजस्थान सरकार को वहन करना था। राजस्थान सरकार द्वारा रेलवे को प्रथम किश्त 200 करोड़ रुपए का भुगतान मार्च 2011 में कर दिया गया था और इस परियोजना का शिलान्यास भी दिनांक 30/6/2011 को कर दिया गया था। समय पर कार्य प्रारंभ नहीं होने की वजह से वर्तमान में परियोजना एवं भूमि अधिग्रहण की लागत जो है बहुत अत्यधिक बढ़ गई है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि राजस्थान सरकार बढ़ी हुई परियोजना लागत वहन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए रेलवे व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वयं के संसाधनों से पूर्ण करवाए। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भूमि अधिग्रहण की लागत का भुगतान राजस्थान सरकार द्वारा ही किया जाना था। साथ ही इन्होंने इस प्रकरण में नीति आयोग के साथ चर्चा दिनांक 6/8/2021 के क्रम में परियोजना के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित होने के दृष्टिगत रेल मंत्रालय द्वारा एग्जम्पशन बेस्ड अनुमोदन दिए जाने के लिए निवेदन किया है। अतः माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि प्रकरण में केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित पूंजीगत व्यय से राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए ताकि इस महत्वपूर्ण परियोजना को मूर्त रूप दिया जा सके। धन्यवाद। Sri Muralidharan, Minister for Parliamentary Affairs, I think Sonawal also is here. The earlier issue of signboards in the local language, it has to be made mandatory, and it's not any favor to anybody. People who are traveling, they should know what is this thing, otherwise purpose will not be served. Please take note. Sir, all the directions given by the chair during 0 hour are communicated to the concerned ministers for necessary action. Right. Sri Vijaypal Singh Tomar. Sri Vijaypal Singh Tomar. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आए दिन लोगों को होने वाली परेशानी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण हुआ है ताकि कम समय में अधिक दूरी तय की जा सके और आर्थिक गतिविधि तेज हो सके। जनवरी 21 में टोल प्लाजा पर जो फास्टैग लगाया गया है, उससे तेल की भी बचत हुई है, राजस्व की भी बचत हुई है और कम समय पर दूरी तय कर लेते हैं। लेकिन नेशनल हाईवे पर तो ये हुआ है, राज्य मार्गों पर ऐसा नहीं है। 1-1 घंटे तक जाम में खड़े रहते हैं और तेल का भी नुकसान है, राजस्व का भी नुकसान है और जो नेशनल हाईवे से हम दूरी तय करके जाते हैं वहाँ आगे पूरा बराबर हो जाता है।
ये परेशानी बहुत हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि राज्य सरकारों से बात करके ऐसी उनको एडवाइजरी जारी करें कि राज्य स्टेट गवर्नमेंट की जितने टोल है स्टेट हाईवेज पर उन पर भी फास्टैग लगाया जाए, ताकि वहाँ आए दिन आम जो जाम लगता है उससे निजात हो सके। धन्यवाद। श्री जौहर सरकार। Thank you, sir. I wish to raise an issue that concerns the entire nation in the sense that all of you are aware that thalassemia is a disease that can cause havoc to a family. The second thing about thalassemia is that while a lot of money has to be spent by hapless parents for giving blood transfusion to their children, it is they who have passed it on to the child as dormant carriers. Now, this is one thing, a nation that has controlled polio, a nation that has brought smallpox, eradicated smallpox, a nation that has taken so many salutary steps in the direction of health, may kindly wake up to the minimum requirement in controlling thalassemia, and that is insistence on a blood test by every intending couple. We can do it. We are checking before marriage, we are checking the age. We are going in for so many measures. So to control this deadly disease of thalassemia, I would submit. Now, while you can make it mandatory, people can't afford it because it costs between 500 to 1,000 rupees. So if the nation could have afforded subsidization or even free treatment of COVID vaccines, the nation can come forward, sir, in the interest of thalassemia that is affecting and raising havoc to so many families, to go in for a mandatory check through a subsidized center. That's all, sir. You do that and thalassemia will recede into life. Right. Thank you. Associate President, name Sri Sanjay Raut. देश की अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करने का काम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आईएसआई, अल-कायदा और उनके गिरोह हमेशा करता है। हिंदुस्तान की जो करेंसी है उनके नकली नोट छापकर चलन में लाकर हमारी अर्थव्यवस्था खत्म करने का षड्यंत्र हमेशा चलता रहा, लेकिन अब इस मामले में चीन भी पाकिस्तान से आगे निकल गया है। एक तरफ गलवान वैली में घुसकर चीन हमारी जमीन हड़प कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था में सेंधमारी कर रही है। सर, कल ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने एक इंटरनेशनल गैंग के 8 ठगों को गिरफ्तार कर लिया और वो चीनी ऐप से लोन दिलाने के नाम पर बड़ी मात्रा में ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। अब तक लाखों लोगों से हजारों करोड़ रुपए की ठगी लोगों ने की है। उनके सिर्फ बैंक खाते से ही पता चला है कि सिर्फ 15 दिनों में उनके बैंक खाते में 10 करोड़ रुपए जमा हुए थे। पुलिस को अब तक ऐसे 25 खातों का पता चला है और उसे अंदाज आता है कि ये क्राइम कितना गंभीर और चिंताजनक है। ये मामला सिर्फ पैसों की ठगी का नहीं है सर, ये मामला देश की सुरक्षा का भी है। भारत में बैठे ऐसे सैकड़ों गैंग इस तरह से ठगी की रकम क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चीनी नागरिकों को हांगकांग, दुबई और चीन में भेज रहे थे और साथ में हमारे देश के महत्वपूर्ण डाटा चुराकर भी वो चीन में भेज रहे थे। सर, हमारे देश में 60% चाइनीज मोबाइल यूज़ हो रहे हैं, 50% से ज़्यादा चाइनीज मोबाइल ऐप यूज़ हो रहे हैं। मोबाइल कंपनियों के अधिकांश पार्ट जो है वो चीन निर्मित कंपनी से भी आते हैं। कुछ ऐसे ऐप है जिसमें आसानी से लोन देने का या अन्य प्रलोभन की पेशकश की जाती है, लेकिन उसके माध्यम से ग्राहकों के फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का गैर इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में बोले तो हर चीन की भी नज़र आ रही है। सर, इसलिए मैं सरकार को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चीनी ऐप और ये जो लोन का मामला जो सामने आया है उसके बारे में सरकार ने कठोर Chinese app, not up. ऐप मैं आपके ये दिल्ली की बात है, इसलिए आप और ऐप का हो रहा है। सर वित्त मंत्री जी बैठे हैं तो उसके लिए मैं कहूँगा ये बात बहुत गंभीर है और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। Right, good. Important issue.
M. Muhammad Abdullah. Just mention the issue because time. Thank you, Honorable Chairman, sir. As per the circular issued by the Central Board of Secondary Education on 11th March 2022, no examination center will be changed in term 2 of class 10. Right, Abdullah, sorry, time. Yeah. In this regard, I would like to bring to your note that the students... Over. Your time is over, it will not go on record. Question hour will start. And please, this same system should be followed also with regard to the direction of the chair. The moment chair says something, ये भी आगे हम लोग देखना पड़ेगा. Question 3, 4, 6. श्रीमती गीता चंद्र प्रभा. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री. धन्यवाद महोदय. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या ऐसे जिले जहाँ CSR के दायरे में आने वाली बड़ी कंपनियाँ स्थापित हैं, वहाँ की जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर जनहित कार्य कराने की कोई गाइडलाइन है? माननीय मंत्री जी. जनाब चेयरमैन साहब, सेक्शन 135 of the Companies Act provides the framework for the CSR spending. The first proviso to this, मैडम, ये कहता है कि जहाँ पर कंपनी स्थापित है वहाँ पर वो पहले कोशिश करे कि CSR के फंड वहाँ पर लागू हों, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है. और जो ब्रॉड प्रिंसिपल भारत सरकार ने आज के दिन अपनाया हुआ है वो ये है कि केवल उस स्थान के ऊपर ही नहीं बल्कि कंपनी उसके अलावा भी बाकी देश के अंदर भी CSR का पैसा अगर खर्च कर सकती है तो जनरल लाभ पब्लिक का होगा. इस तौर के ऊपर सिर्फ इसको डायरेक्टरी किया गया, मैंडेटरी नहीं किया गया. सेकंड सप्लीमेंट्री नहीं पूछना चाहती. थैंक यू. डॉक्टर एल हनुमंतैया जी. डॉक्टर एल हनुमंतैया जी. Sir, Section 135(5) of the Act provides companies shall give preference to the local area and areas around where it operates. However, the emphasis on the local area is only directory and not mandatory. This is what they have given. Sir, now to improve the backward districts, it should be made mandatory that the CSR funds has to be used in backward districts. Otherwise, this purpose of the CSR funds will not be served. Please put question. That is what I wanted to ask the Honorable Minister. Thank you, Hanumanthaya ji. Already stated that it is not mandatory. What happens is that generally speaking, companies tend to spend the money in areas where they are located. The main beneficiaries thereafter are, say, states like Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Delhi. And areas in the northeast, say Nagaland, gets very little CSR spending. So in the last 7 years, since CSR has been in vogue, Nagaland has only been able to get 8 crores out of the 1.2 lakh crores spent under CSR by various companies. Having said that, nevertheless, I must say that there is some sort of a guideline for public sector undertakings that they should look into aspirational districts, backward districts where there is gurbat. So that kind of a thing is already on the anvil and it has been passed, and 60% of the funds of PSUs are intended, or hopefully they spend that money in these so-called aspirational districts. Thank you. Mani Prasanacharya ji. Minister, whether CSR funds are allowed for government schemes as a gap funding and thereby depriving other non-governmental schemes. And sir, secondly, CSR fund is allowed for Prime Minister Relief Fund, and whether it is a fact that it is not allowed for Chief Minister Relief Fund. So is it not telling upon the federal structure of this country? So whether government will consider to make amendment in this provision of the Act? Thank you. Sir, out of the 1.2 lakh or 1.25 lakh crores rupees that have been spent under CSR over the last 7 years, not more than 4 to 5% has gone into PM CARES fund.
And most of that money has gone during the COVID 2 years. Before that, the companies by themselves have been able to spend on all those activities that are enumerated under the CSR pattern, under Section 35 and Schedule 5 of it. As far as chief ministers go, never was the chief ministers, well, to begin off with, there was attempts to make CSR go to the chief minister's fund, but it was not accepted by the government of India, because then in whichever state the chief minister is, then the funds from these companies will only go to the direction given by the chief minister. So we don't want to have that. The basic idea of sending CSR is to do the best you can for the public good. And it cannot necessarily mean only one person can think of that, not the chief minister alone. So it is a board-based activity that the board undertakes. We give the general guidelines and the board implements it. And it is a activity which is pan-Indian, no matter where the country comes from, where the company comes from. Thank you. माननीय वीरेंद्र प्रसाद बैश्या जी. Sir, mic is not working, sir. It's working. आपके बगल में हो, please. Thank you, Chairman, sir. Corporate Special Responsibility Fund played important role for the economical development of backward region of the country, sir. In his written reply, Honorable Minister has said, Niti Aayog identified 82 districts of our country with earmark with the rupees of more than 331 crores, sir. And Minister himself admitted right now they have allotted only 8 crore rupees in the Nagaland. Sir, my question is that Northeastern region is a constituent of the 8 states. Out of this 82 districts, Niti Aayog identify how many districts from the Northeastern region and how many money already spent in the Northeastern region. I want to know, and I like to request Honorable Minister look after this issue seriously and try to enhance to help the people of Northeastern region. Thank you. The idea of the government of India is that it should be a broad-based activity. The responsibility of spending CSR funds lies with the board of the company. If we make it directory, then it will not go to states like the gentleman has said. We are trying to ensure that the company, through suggestion, that it should be made to spend the money not only in the area of its operation, but as broadly as possible throughout the country. And that is what is being done. We unfortunately cannot direct any company to say, in the Northeast you must spend so much money. It's not directly, like I said earlier. Thank you. Question number 347, माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी. Sir, question number 347. माननीय मंत्री जी. First supplementary. Sir, as per the information given by the Honorable Minister, the borrowing space for the state given for the year calculated on the basis of the information submitted by the state. Once the COG audited state finance accounts are available, the adjustment on account of overborrowing by the state arises due to deviation in the information that was given. The finance account, as per the information, the Ministry of Finance, Department of Expenditure identified an amount of rupees 17,923.94 crores was excess borrowed by deviating the norms. What steps have taken to recover that amount? Whether that amount was adjusted in available borrowing space? Please, thank you. जैसा कि मैंने उत्तर में पहले ही बताया है कि निश्चित तौर से उसका हिसाब कैग के द्वारा लिया जाता है और जब रिपोर्ट आई तो जो वहाँ से आंध्र प्रदेश का रिपोर्ट आया कि 22,000 उन्होंने अतिरिक्त बोरिंग किया है उस पर भारत सरकार ने निर्णय लिया और नेक्स्ट ईयर बोरिंग में उनका वो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं काटने का एडजस्ट करने का प्रयास भारत सरकार ने किया. Second supplementary. Sir, the release of advance and disbursement of the loan amount will be based on the state sharing, release of proportionate of state sharing in respect of projects identified for finance. In respect of AIB, Andhra Pradesh Rural Roads Project,
Andhra Pradesh Roads and Bridges Reconstruction Project, Andhra Pradesh Mandal Connectivity and Rural Improvement Project. In this connection, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs sent a letter to the government on 17/1/2022 stating that the government did not deposit the proportionate share. Please question. Ravinder. Yes, sir. Proportionate share, and that's why the loan amount is not agreed to release it. Whether subsequent steps any taken by the department to deposit the road to deposit. I'm questioning, sir. It's a long explanation. Please question put. This is my question. So I will move to other person. Please be brief. This is my question, sir. It's a long question. You know, you are taking time of others. Please be brief. I have requested You several are not times. allowing me to put a question. Please. That's my question. Sir, whether the government has taken any steps to and given directions given to the government of AP to deposit the loan amount of the proportionate share of the state government. Thank you. Thank you. माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही बताया कि एफआरबीएम एक्ट हर स्टेट का अपना अधिकार है और उस पर वो निर्णय लेते हैं कि हमें कितना उधारी लेना है, कितना नहीं लेना है, और निश्चित तौर से भारत सरकार उस पर गवर्न करती है कि अगर कोई प्रदेश में अगर ज़्यादा उधार लिया है तो अगले वर्ष निश्चित तौर से उसको काट करके उसको उधारी की सीमा बताई जाती है। माननीय जीवीएल नरसिंह राव। Thank you, sir. Sir, the reply given by the Honorable Minister says that the FRBM limits set by the state government, they are monitored by the state legislature. But a recent report by the CAG says that the state government has dispersed 1,10,000 crores over what has been authorized by the state assembly, state legislature, which clearly shows that the government of Andhra Pradesh has no respect for following any of these norms, FRBM norms or expenditure norms. Question. So my question is, what will the ministry do in the light of CAG observations? What will ministry do to assess real fiscal position of Andhra Pradesh? Thank you. माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी बताया कि संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत भारत सरकार केवल निगरानी रखती है। उस प्रदेश को कितना उधार कहाँ से लेना है, कहाँ खर्च करना है, यह प्रदेश तय करता है। लेकिन भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि जो उधारी है उस ठीक ढंग से खर्च हो, उसकी निगरानी केवल भारत सरकार रखती है। धन्यवाद। माननीय सीएम रमेश जी। Sir, thank you, sir. Sir, how many states have revised the revenue deficit and fiscal deficit limit, and whether the bill passed by the Andhra Pradesh Legislative Assembly fulfills the parameters as laid down by the 15th Finance Commission? Thank you. सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा कि एफआरबीएम एक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है, वो अपना हिसाब से बनाते हैं, और चूंकि ये आंध्र प्रदेश से संबंधित ही केवल सवाल है, मैं पूरे स्टेट का माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको भिजवा दूंगा। थैंक यू। माननीय सुजीत कुमार जी, क्वेश्चन आंध्र प्रदेश फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आपका सवाल उससे जुड़ा है। सर, while the issue is of a particular state, there are other states which are maintaining. No, please. Sir, as per norms, no. It's related, sir. It's related. There are other states which are maintaining. You have to put on this Andhra Pradesh fiscal responsibility as per. Sir, it's about healthy fiscal discipline. Sir, for discussion अलग से आप इस पे कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you. माननीय सुशील मोदी जी। बीजेडी एनटीडी भी नहीं। 348 माननीय श्री नीरज डांगी जी। क्वेश्चन नंबर 348 सर। माननीय मंत्री जी। माननीय नीरज जी। सर, मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से, देश में बाजारों में खुले में मिलने वाली नकली दवाइयों पर बीते 2 वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इन दवाइयों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आप जो सवाल जुड़ा है करंट प्रैक्टिसेस इन परचेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ यह सवाल है, लेकिन आदरणीय सांसद महोदय ने प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स के बारे में सवाल पूछा है।
आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि मेन एजेंसी जो ड्रग प्रोक्योर करती है वो इधर CMSS के माध्यम से होती है या CGHS या जन औषधि केंद्र के माध्यम से होती है। सर, ये ट्रांसपेरेंट मोड पे ये दवाइयों का प्रोक्योरमेंट होता है और इसमें टेक्निकल कमिटी भी रहती है जो ये देखती है। और सर, ये ट्रांसपेरेंट मोड पे दवाइयाँ खरीद होती है, लेकिन फिर भी आपने जो कहा कि कुछ गलत दवाइयों का आपके पास विवरण है क्या, तो अगर है तो मैं आपको सर ज़रूर अवगत करती हूँ, लेकिन ये इक्विपमेंट को लेके सवाल है जो स्पेसिफिक था। सेकंड सप्लीमेंट्री मारी नहीं। सर, दवायाँ तो बाजार के अंदर नकली मिली रही है। हम लोग ध्यान दें, सरकार अपने लेवल पे भी इसके बारे में जानकारी लेवे। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, क्या भारत सरकार आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेतु मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण की स्थापना हेतु स्वीकृति एवं धनराशि जारी करने पर विचार रखती है? धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहती हूँ कि कोविड काल में ऐसे बहुत सारे क्राइसिस के टाइम जो मेडिकल का इक्विपमेंट हो या फिर कुछ इमरजेंसी हमें खरीदना हो वैक्सीन को लेके, सो ऐसी सभी व्यवस्था तुरंत करवाई। उसके लिए कुछ कमेटी बने, कुछ एक्सपर्ट ग्रुप बने और उसके माध्यम से स्टैंडर्ड को देखते हुए, जो कि स्टैंडर्ड मेंटेन हो, इंटरनेशनल लेवल के भी स्टैंडर्ड मेंटेन हो, इसके लिए धनराशि भी आवंटित की गई। मैं आपके माध्यम से आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर का भी धन्यवाद देती हूँ कि लगातार इस कोविड काल में कोई भी सुविधा कमी न हो, इसके लिए सरकार ने प्रयास किए, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सफल हुए। धन्यवाद। माननीय KJ अल्फोंस। To know from the Honorable Minister whether she knows that the Additional Chief Secretary of Kerala, who is also the Health Secretary, has written to the DMOs and to all the field officers saying that the Health Department of Kerala is the most corrupt department. Please, don't mention the name. Yes, please. No, sir, this is a question on health and on corruption. And if it is not being brought to the notice of the Honorable Minister, will she take action if it is brought to her notice? आदरणीय उपसभापति महोदय, जो सवाल उठा है करप्शन को लेके, आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहूँगी कि जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होते हैं वो सेंट्रल एजेंसी के तहत देखे भी जाते हैं, मॉनिटर भी किए जाते हैं और एक्शन भी लिए जाते हैं। और जो स्टेट के प्रोक्योरमेंट रहते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, आदरणीय सांसद महोदय ने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है। ज़रूर इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर गलत काम हुए हैं, लेकिन मेरे रिपोर्ट में है सर कि नो इंसिडेंट फ्रॉम सेंट्रल हॉस्पिटल हैज़ बीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग लास्ट 3 years। तो मुझे लगता है अगर स्टेट का इशू है तो ज़रूर ये। धन्यवाद माननीय सदस्य। जैसा माननीय चेयरमैन ने कहा, किसी स्टेट के बारे में पर्टिकुलर एलिगेशन कृपया न लगाएं। धन्यवाद। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, प्लीज प्रोफेसर मनोज कुमार झा, प्लीज I have already told, please let him put his question। शुक्रिया उपसभापति। मैं आपका काम कह दिया हूं, इसलिए क्यों आप उनको मौका दीजिए। शुक्रिया उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य का सवाल है तो एक बहुत गंभीर चिंता देश के अलग हिस्सों से आ रही है, खास करके CGHS के जो बेनिफिशियरीज हैं, छोटे शहरों में जो हैं, इम्पैनलमेंट का इशू है, रेट का इशू है। और चूंकि प्रश्न संबंधित नहीं था, लेकिन सर आप और वो आप दोनों विशाल हृदय के हैं, इसका जवाब दे दीजिए। धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ज़रूर माननीय सांसद मनोज जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि CGHS का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा के भी उन्होंने जो कहा है कि एम्पैनलमेंट बढ़ने चाहिए, तो ज़रूर इस पर हमारा विचार चल रहा है और लगातार ये CGHS के सेंटर खुल भी रहे हैं। लेकिन सर उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि जितने एरिया में हमारे बेनिफिशरीज़ है उनकी कुछ संख्या होती है जिनके आधार पर इन सेंटर्स को मंजूरी भी मिलती है। लास्ट वीक ने आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख भाई ने भी इस पे विवरण दिया था और आदरणीय सांसद महोदय को मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके क्षेत्र में अगर वो संख्या है और अगर CGHS सेंटर की डिमांड है तो हम ज़रूर इसमें काम करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान जी। The Honorable Minister, through you, whether government is aware about the damage caused by the unchecked presence of health service online aggregators
pushing aggressively for tests, surgeries, for healthcare services without any medical requirement or prescription? If yes, whether the government is considering to stop direct consumer advertising as suggested by the Consumer Drug Advocacy Group of All India Drug Action Network, AIDAN. Thank you. महोदय, माननीय सदस्य फौजिया जी ने जो सवाल उठाया है वो स्पेसिफिक कुछ कंज्यूमर के बारे में जो कि ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जुड़ा है, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा डिटेल लेके मैं ज़रूर सांसद महोदय को अवगत कराऊंगी। लेकिन फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कुछ प्रिस्क्रिप्शन के अगर हमें प्रॉब्लम्स है या शिकायतें हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट उन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उन हॉस्पिटल के थ्रू एक्शन ले सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 349 माननीय शक्ति सिंह गोयल जी। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। सर उत्तर सभा पटल पर रख दिया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति महोदय, बड़ा गंभीर सवाल था। मैं उम्मीद करता था कि कैबिनेट मंत्री हमारे गुजराती भाई मांडविया जी जवाब देंगे। बड़ी शालीन मंत्री राज्य कक्षा की है, उनको ही जवाब देना है। खैर इनका सब्जेक्ट है। मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ इस हाउस में बैठे हुए हमारे में से कोई भी यहाँ हाथ रख के कहेंगे कोविड के दौरान हमें फोन आते थे, हमें डॉक्टर्स ने, हमें गवर्नमेंट ने भी कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी और डेथ हुए हैं, ये हकीकत है। अब यहाँ पे सरकार का जो रिटर्न रिप्लाई है, उस रिटर्न रिप्लाई में कहा गया है कि कोविड की वजह से 5,21,358 डेथ हुए हैं। मैं फर्स्ट सप्लीमेंट्री में आपके जरिए ये जानना चाहता हूँ कि गुजरात सरकार ने पहले कहा था कि कोविड में 10,000 लोगों ही सिर्फ मृत्यु हुई है, 10,000 एंड ऑड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मुआवजा के लिए डिटेल दीजिए, जांच कीजिए। उसके बाद निकला कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग गुजरात में कोरोना से मृत्यु हुए हैं, ऑफिशियल फिगर आया बाहर। तो इधर ये जो 5,21,358 है, उसमें गुजरात का कौन सा फिगर है, 10,000 या 1.5 लाख? धन्यवाद। उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, आदरणीय शक्ति सिंह जी ने, माननीय संसद जी ने उपस्थित किया मुद्दा। पहला तो ये है कि माननीय कैबिनेट मिनिस्टर आज जो कॉन्फ्रेंस पे गए हैं तो वो भी एक देश की सक्षम भूमिका रखने के लिए ही गए हैं। वो देश की एक अच्छी भूमिका जो कि ग्लोबल लेवल को भारत को सराहना जा रहा है। मुझे लगता है अगर इस अच्छी बात को अप्रिशिएट किया जाए तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और आदरणीय सांसद महोदय ने जो पूछा था कि क्या ऑक्सीजन को लेके क्या व्यवस्था और डिमांड के बारे में, फिर एक बार ये माननीय कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख भाई ने लास्ट वीक में और लास्ट सेशन में भी इसका जवाब डिटेल दिया था। मैं फिर एक बार बड़ी नम्रतापूर्वक ये कहना चाहूँगी सर, क्योंकि ये सर लगातार ये मुद्दा आता है, कुछ बातें भी फ्लोर पे रखनी ज़रूरी है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिक्वेस्टेड स्टेट्स UTs to furnish the details as asked for. Sir, इसमें से 20 states and UTs have responded and none of the states and UTs have reported confirmed deaths due to oxygen shortage. Sir, हमने लगातार इस बारे में उन राज्यों को पत्र भी लिखे हैं, वो पत्र के भी डिटेल्स हमने दिए हैं। उसमें सर 11 बार हमने ईमेल्स भेजे हैं, चिट्ठियाँ लिखी है, कुछ राज्यों को रिमाइंडर दिए हैं। सर राज्यों ने देने के बाद ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट पे रख के बोलते हैं। लेकिन सर जैसा कि इन्होंने कहा कि पहले मृत्यु की संख्या कम थी और आज आपने जो डेटा दिए हैं वो 5 लाख का डेटा है डेथ्स का। सर ये बहुत ही दुखदायी है, क्लेशदायी है कि एक ऐसा पेंडेमिक आया कि जिसमें हम इस कोविड को जो नया था उसमें डेथ्स के बारे में भी रिपोर्ट करना हो। तो इसमें सर लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसर्च बेस जो भी आता था उसके नोटिफिकेशन, उसमें गाइडलाइंस जाते थे। और तो और सर जो भी
डेथ के बारे में रिपोर्टिंग था, उसमें भी सर व्यवस्था दी गई कि ये इन्होंने करना है पोर्टल पे। लेकिन सर कुछ राज्यों ने जो कि उस टाइम नहीं किए वो आज भी कर रहे हैं। इसीलिए सर आज आपने जो सवाल उठाया, लेकिन सर आपने गुजरात के बारे में पूछा है तो मैं उसका डिटेल आपको ज़रूर देती हूँ सर। उसके बाद भी ये एक्स ग्रेशिया का भी जो NDMA के थ्रू माननीय हाईकोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया उसके आधार पर ये बढ़ा है जो आपने कहा है उसका डिटेल रिपोर्ट। लेकिन सर ये हमारे पास आ रहा है, ये जो है रिपोर्ट ये सभी राज्यों से आ रहा है जो कि ये दर्शाता है। सेकंड सर सप्लीमेंट्री वो तो ये था कि आज 10,000 है इसमें या 1.5 लाख, वो जवाब तो नहीं मिला मुझे। मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री ये है कि भारत सरकार ने खुद एक नोटिफिकेशन निकाला था कि कोविड से जो भी डेथ होगी उसको 4 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा। वो निकालने के कुछ ही घंटों में, तो कहूंगा दिन भी नहीं, उसमें रिवर्स हो गए और 4 लाख नहीं देना। तो उसकी वजह क्या थी? और कोविड में लोग बहुत परेशान होकर डेथ हुई थी, तो सरकार इसके पुनः विचार करके 4 लाख रुपीस जो भी डेथ कोविड के हुए उनको देना चाहती है या नहीं। उपसभापति महोदय, आदरणीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार इस बारे में बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी मोड पे जो भी गाइडलाइंस है ये दिए हैं। इसमें पहली बार तो सर जो डर था कि पेशेंट के बाद जो इन्फेक्ट होंगे तो उनका क्या, तो वो तो इतना पहला बड़ा डर था कि उसके लिए सर गरीब कल्याण पैकेज के तहत हमने जो इंश्योरेंस दिया जो कि डायरेक्ट कोविड के पेशेंट के कांटेक्ट में आएंगे तो उन्हें हम तुरंत इंश्योरेंस के माध्यम से प्रोटेक्ट करेंगे। सर आज उनका भी हमने मदद की है। सर उसके बाद आप सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि एक्स ग्रेशिया, सर माननीय कोर्ट ने जो कहा कि इनका डिटेल लेना जो कि कोविड रिलेटेड डेथ हुए हैं, सर ये एक्स ग्रेशिया के रूप में जो कि 50,000 का उन्हें मदद मिलेगा। सर ये सेंट्रल गाइडलाइंस के तहत आज स्टेट के तहत आज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कलेक्टर की अंडर जो कमेटी है सर वो इसको एग्जामिन भी करते हैं और उनके तहत ये नाम भी आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम आने के बाद ये डिटेल भी दिए हैं। सर ये NDMA ने 50,000 का ये प्रावधान किया है, ये 4 लाख का नहीं है, ये बात क्लियर हो गई है। थैंक यू। माननीय जुगल सिंह लोखंडवाला। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को और हमारे वैज्ञानिकों सबको धन्यवाद देता हूं कि ये वैश्विक महामारी 100 साल में एक बार आती है और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निगरानी के अंदर कोविड की वैक्सीनेशन का जो इनोवेशन, सैनिटाइजर का प्रदान और मास्क जिस तरह दिया गया, मैं सवाल ही बा रहा हूं, जिस तरह दिया गया आप बैठे उसी तरह सवाल ये मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि पुरानी सरकारें जिस तरह ये महामारी, वैश्विक महामारी जो है, जो सुविधा नहीं दे पाई थी, आज की तारीख के अंदर क्या हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कोई प्रयोगशाला बनाई जाएंगी या बनाएंगे कि जैसे विश्व के अंदर कोई ऐसी महामारी आए तो इसको रोक सके? सवाल बहुत संक्षिप्त रखें प्लीज। प्लीज बैठकर, प्लीज कुर्सी पर बैठकर आपस में बात ना करें प्लीज। कोई रिकॉर्ड पर नहीं जा रही आप लोग की आपस की बातचीत, प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, जो सवाल उठा है कि क्या हमने इस दौरान कोविड के कार्यकाल में क्या किया है और आगे जाके भविष्य में अगर ऐसे ही पैंडेमिक का सामना करना पड़े तो क्या इसके लिए प्रावधान है। मैं आदरणीय सांसद महोदय जी का पहले तो धन्यवाद देती हूँ कि जो काम हुआ है उसमें बहुत ही बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जो डिमांड थी पैंडेमिक के पहले और आज ये लगातार अच्छी बनी है व्यवस्था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आज 3,000 से भी ज़्यादा अच्छे लैब खड़े हुए हैं। कोविड की फैसिलिटीज़ में जो बेड्स बने हैं सर, आज मुझे यहाँ रखते हुए 5 लाख के भी ज़्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बने हैं। ICU के भी बेड 1.5 लाख से ज़्यादा खड़े हुए हैं। PSA प्लांट्स जो कि कम थे
ना के बराबर थे, राज्यों के पास थे वो कम थे, लेकिन आज सर हर एक जिले में पीएसए प्लांट लगना चाहिए, ताकि खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर गौर भी किया और आज 4000 से भी ज़्यादा हमारे पीएसए प्लांट्स खड़े हैं अलग अलग मिनिस्ट्री के थ्रू और पीएसयू के थ्रू, पीएम केयर के थ्रू। सर ऑक्सीजन सिलेंडर हो या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, ये लाखों में उन स्टेट्स को अलॉट भी किए हैं, उसका भी डिटेल्स अवेलेबल है। आज वेंटिलेटर्स को देखा जाए सर, तो मैंने भी खुद देखा कि पहले पैंडेमिक के पहले क्या वेंटिलेटर्स था लगभग 16,000 के करीब। आज सर हमने वेंटिलेटर्स की संख्या देखी है तो वो 60,000 के भी ज़्यादा आज खड़े हैं। तो मुझे लगता है सारी इमरजेंसी को टैकल करते हुए लगातार ये व्यवस्था बनी। उसके अलावा पैकेजेस भी जाहिर हुए, ECRP 1 हो, ECRP 2 हो, NHM हो या फिर हमारा डिजास्टर रिस्पांस फंड हो, ये अलग अलग माध्यम से व्यवस्था खड़ी हुई। और माननीय सदस्य ने ये कहा कि जो लगातार आगे आने वाले दिनों के लिए तो ज़रूर PM अभीम के द्वारा जो बजट दिया है, मैं फिर एक बार आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आगे आने वाले दिनों के लिए भी एक 64,000 करोड़ का बजट दिया है, जो कि हमारे हेल्थ को अगेन एक बूस्ट देगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा, जिसमें ये लैब्स जो कि एक अच्छी लैब की सुविधा भी बने। सर आज BSL 3 लैब जो कि डिटेक्ट करती है कोई नया वायरस आता है तो, लेकिन उसको लिमिटेशन सर ये सुनना होगा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं ये जरूर अनुरोध करती हूँ कि क्यों सुनना होगा, क्योंकि BSL 3 का पता ही नहीं है BSL 3 है क्या। तो BSL 3 ऐसी लैब है कि जो खड़ी होने वाली है 4 लैब्स के रूप में, जो मोबाइल होगी कि जैसे कोरोना का वायरस आया हमें पता नहीं था, लेकिन अगर कोई नया वायरस आता है तो वो उसी जगह डिटेक्ट भी होगा और वो कंटेनमेंट जोन बनेगा ताकि वहां से फैले नहीं। तो ये सोच है सर, ये सोच की बात है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वो आगे की सोच को देख के इस तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ। माननीय जवाहर सरकार जी, माननीय जवाहर सरकार जी। I want to ask one straight question. Please put your question. Every time we ask such questions, they say health is a state subject, death is a state subject, life certificates are given by somebody else's picture. But साफ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि is the division between death and life, between good and bad, according to the federal system, to the states and center? Please question. What is all? Please question. Every time in education Please also question. you say the same. Thank you. So give me a straight answer. Thank you. Thank you. आदरणीय उपसभापति महोदय, ये बेसिक क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन जुड़ा होने के नाते हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट है तो ये गलत नहीं है सर। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर काम होता है, स्टेट को कुछ नियम होते हैं उन आधार पर। सर हम ज़रूर ये कहते हैं कि हम मिलकर काम करते हैं, कोई भी सुविधा हम जो देते हैं तो हम स्टेट के हेल्प को लेके ही करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हम जिम्मेवारियां को टाल रहे हैं, लेकिन सर हम एक रिस्पेक्ट से कहते हैं कि हम जो भी सर आप सर जो भी हम फाइनेंस देते हैं सर वो स्टेट को ही अलॉट होता है सर, स्टेट ने ही वो नीचे देना है सर। हमारी NHM की जो विंग खड़ी है वो स्टेट के थ्रू ही जाती है सर। लेकिन जो आदरणीय सदस्य ने महोदय ने कहा कि जो भी इनपुट्स आते हैं सर वो स्टेट से ही आते हैं, तो हम उनका भी रिस्पेक्ट करके स्टेट के साथ ही जुड़े होकर काम कर रहे हैं और अच्छा काम किया है। माननीय रामनाथ ठाकुर। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि समय सीमा के अंदर ऑक्सीजन से कितने लोग मरे, ऑक्सीजन के नहीं रहने के कारण कितने लोग मरे पूरे हिंदुस्तान में, स्टेज वाइज क्या माननीय सदस्यों को सूचना देने का काम करेंगी? धन्यवाद।
आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसका जवाब मैंने डिटेल पहले ही जो सवाल उठाया उसमें ही डिटेल विवरण दे दिया है और लिखित रूप में भी आज के जवाब में वो दिया है। फिर भी मैं फिर दोहराती हूँ कि सर वो जो डेट्स है जो कि टोटल रिकॉर्ड डेट्स जो कि स्टेट से आते हैं वो आज तक के हैं 5,20,358 डेथ ड्यू टू कोविड और जो कि स्टेट ने दिए हैं सर। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया फिर एक बार दोहराती हूँ कि यूनियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी सारे स्टेट्स यूटीज़ को कि वो डिटेल्स दे दे जो पूछा है, लेकिन आज के दौर पर 20 स्टेट्स एंड यूनिट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन नन ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज़ हैव रिपोर्टेड कन्फर्म डेट्स ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज। जैसे ही सर हम कोई बात छिपाना नहीं चाहते या बताना चाहते, ऐसी बात नहीं है, जो भी स्टेट से आता है आपको अवगत किया जाए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 350 डॉक्टर वी शिवदासन। डॉक्टर वी शिवदासन एब्सेंट। माननीय शांतनु सेन जी। Sir, in the given reply regarding COVID vaccination, our health ministry has categorically accepted that we are still far away from getting all the eligible citizens vaccinated by double dose. Sir, I am not here to give discredit to the government only, as the speakers from the Treasury branch are even busy in giving credit to the present government even during this question hours. But I am here to raise a specific question. Sir, we have been listening to several promises during this COVID vaccination. We have seen there is a sharp rise of COVID vaccination on International Yoga Day. We have seen a sharp vaccination rise. Please question, Dr. Yeah, I am Sandhu. coming, sir. I am Please. coming. On the birthday of our learned Prime Minister, followed by sharp fall in vaccination. My question, which is a long-standing question in the mind of the people at large in the country, can our minister give a specific date? Because earlier I used to learn that by 31st of December 2021, all eligible citizens will be vaccinated by double dose. Forget about the booster dose. Please question. My minister, can she give a specific date by which all the eligible Indian citizens will be vaccinated by double dose? Thank you. उपसभापति महोदय, मैं पहले तो माननीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो चिंता का विषय है वो भी उन्होंने रखा कि वैक्सीन को लेके, लेकिन उसके पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि भारत का सबसे अच्छा सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव चला जो कि दुनिया ने देखा और जो हमारे बेनिफिशरीज है उनको हमने भी देखा। सर सब जर्नल्स का भी हम विवरण लेते हैं, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, अगर आज 184 करोड़ को हम लोग पार कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट डोज 97% दिया गया है, सेकेंड डोज 85% दिया गया है, लेकिन सर उसमें भी मैं कहना चाहूँगी कि ये जो किया है हमने, ये सबको मिलके सबके प्रयासों से हुआ है। हर एक ने अपना, आदरणीय सांसद सभी बैठे हैं यहाँ पे, सभी ने अच्छा ध्यान दिया है। हर घर दस्तक भी चला, अनेक ऐसे प्रोग्राम्स चले, मीडिया ने भी सपोर्ट किया, इसी कारण ये सक्सेसफुली ड्राइव चला। लेकिन सर मैं कहना चाहूँगी कि ये वॉलंटरी है जो कि हमने लिखा भी है, जो 94 करोड़ बेनिफिशरीज को हमने सामने रखा था। हमारी कमिटमेंट थी सर कि दुनिया में जो भी क्राइसिस चल रहे थे वैक्सीन को लेके, लेकिन भारत में ये नहीं होगा, भारत वैक्सीन अवेलेबल करेगा, वैक्सीन बनाएगा। वो सर कमिटमेंट पूरी कर दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये वैक्सीन बना भी और सभी को दिया भी। लेकिन सर ये वॉलंटरी है। मैं माननीय सदस्य को बहुत ही अनुरोध करती हूँ और कहती हूँ कि अगर ये वॉलंटरी है, लेकिन फिर भी हम सब जुट जाए इस मुहिम में कि सबकी सुरक्षा को लेकर हम सबके प्रयास और बढ़े, ताकि जो रहे हैं हम उनमें दे सकें। माननीय दिग्विजय जी। 12 साल के ऊपर बच्चे व वयस्क, उनके लिए वैक्सीन आपने प्रोटोकॉल तय कर दिया। उन सभी भारतीयों को इस बात की चिंता है कि 12 साल से कम बच्चों के लिए अभी तक आपने कोई प्रोटोकॉल तय नहीं किया है, जबकि यूएसए और अधिकांश वेस्टर्न वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट ने एज 5 से लेकर एज 11 तक प्रोटोकॉल मंजूर कर दिया है और वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है।
मेरा प्रश्न ये है कि भारत सरकार कब इस देश के बच्चे जो 12 साल से कम हैं, उनके लिए कब वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल आप तय करेंगे? क्योंकि 6 महीने के बच्चों का भी प्रोटोकॉल के ऊपर काफी काम हुआ है। दिग्विजय सर, आदरणीय उपसभापति महोदय, प्लीज एक मिनट माननीय दिग्विजय जी, आप सबसे पहले लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। अगर प्रावधान बना दिए होते कि सबसे अधिक आप ही को सवाल मिले तो मैं कर देता। धन्यवाद। प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। इसमें क्या नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। धन्यवाद भी नहीं, प्लीज ये भी पार्लियामेंट्री है। माननीय सदस्य, आप जानते हैं हर चीज में अगर आप ही मांगेंगे प्रश्न तो आपके और दूसरे सदस्यों को दूं या ना दूं, ये भी व्यवस्था आपने कर दी होती, ये भी व्यवस्था आपने की होती तो मैं धन्यवाद देता। प्लीज प्लीज प्लीज। आदरणीय उपसभापति महोदय, जो प्रश्न उठाया गया है जरूर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी सुरक्षित रहे इस भावना को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल ही शंका जताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो वैक्सीन का ड्राइव चला या वैक्सीन के जो भी प्रोटोकॉल्स तय हुए उसके लिए सर एक्सपर्ट ग्रुप होते हैं, साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, ट्रायल्स होते हैं और उनके आधार पर वैक्सीन को मान्यता मिलती है। सर उन्होंने कहा कि अनेक देशों में, लेकिन उन देशों के कंपैरेटिव आज भारत ने भी दिखा दिया है कि ओमिक्रॉन की वेव आई तो हम अच्छे सेफ रहे क्योंकि अच्छा वैक्सीनेशन कर पाए। सर ज़रूर उन्होंने कहा है कि एज ग्रुप को लेकिन हम लगातार वो प्रोटोकॉल्स में जो प्रोटोकॉल्स लगे वो 60 इयर्स के हो, चाहे कोमॉर्बिड के हो या 45 इयर्स के हो या फिर अभी 15 से 18 हो या 12 से 14। सर उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य ने कहा 12 से नीचे। सर मैं फिर एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो रिकमेंडेशंस आते हैं, जो हमारे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप होती है जो इम्यूनाइजेशन पे स्टडी करती है, विवरण देखती है, कुछ ट्रायल्स होते हैं। सर वो ट्रायल्स के जब रिपोर्ट्स आते हैं उसका वैक्सीन का क्या प्रभाव है, क्या एफिशिएंसी है, क्या उसका रिजल्ट है, उस आधार पर हम वो निर्णय लेते हैं। ये सर साइंटिफिक बेस एक निर्णय होता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन सर ये ट्रायल चल रहा है, उसके आधार पर ये काम रहेगा। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये साइंटिफिक बेस धन्यवाद रिसर्च होती है। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी। देसाई जी। Yeah, thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, in yesterday's conclave which was held at Pune, Dr. Adar Poonawala, who has come out with the vaccine Covishield and which proved very beneficial to one and all, not only in India but abroad also in foreign countries. He has expressed his doubts that booster, which was necessary and which had come out, those who have taken 2 doses are due for booster, and they had come out with the schedule also. Government has also declared it, but response is very poor from the people of Please India. question. Yeah. What steps are being taken? Because to travel abroad, to take foreign tours or something, that is necessary as he has expressed his apprehensions. May I know from the Honorable Minister through you, what steps are being taken to give this widespread knowledge, or people are made aware to go for the booster? Thank you. के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो सवाल उठा है फिर एक बार बूस्टर डोज को लेके है, ये इसी बेस पे आधार करता है कि जो एनटैगी हमें रिपोर्ट करती है, उनके रिकमेंडेशंस आते हैं जो कि एक नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन पे काम करती है। सर उनके रिपोर्ट के आधार पर ही हम निर्णय कर पाते हैं। जैसे ही उनके रिपोर्ट्स आते हैं हम वो प्रावधान करते हैं, ना कि किसी के स्टेटमेंट पे या ना कि किसी के पक्ष में। सर हमारा काम यही है कि ये साइंटिफिक बेस रहे और जो कि एक वैक्सीन के बाद भी कुछ प्रावधान होते हैं जो देखने पड़ते हैं, ये सभी को लेके ये काम चल रहा है। मुझे लगता है अलग अलग ग्रुप में जो भी नोटिफिकेशन निकले हैं, गाइडलाइन निकले हैं, तो वो समय पर वो रिकमेंडेशन के आधार पर ही किए जाते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 351 पर हम आए, इसके पहले माननीय सदस्यगण मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हाथ उठाते हैं, यहाँ बाकायदे हम लोग नोट करते हैं, और जब समय पूछने का आता है तो आप अगर सीट पे मौजूद नहीं रहेंगे,
नंबर 1, और नंबर 2 कि अपने सीमित समय में अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। माननीय श्री हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर। क्वेश्चन माननीय मंत्री जी। सर उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Recently on 25th February, AIIMS institutions together have conducted an exhaustive survey and reported that warning labels have overwhelming acceptance by consumers of all strata. Is the Ministry of Health and Family Welfare considering acceptance of this study by renowned medical establishments like AIIMS, which recommended warning labels? Thank you. सर आदरणीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है जो लेबल को लेके है जो फूड पैकेट्स पे आता है, तो मैं आदरणीय सदस्य को यही कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, सर ये रेगुलेशंस जो नोटिफाई किए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि कहता है कि ये रेगुलेशंस में दिया गया है कि ये लेबल पे जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि कंट्रीब्यूट टू रिकमेंडेड डेली अलाउंस के आधार पर परसेंटेज के माध्यम से जो कि कंज्यूमर को एक विकल्प देने के लिए बने हैं, तो वो मैंडेटरी है और इसको सर फॉर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ये लेबल फूड पैकेज के लिए देने के लिए अभी शुरू होने वाला है। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर आई हैव ओनली वन सप्लीमेंट्री। माननीय संजय सिंह। सर मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि ऐसे कितने मामले आपके विभाग के द्वारा हल किए गए या कितने मामले आपके सामने आए जिन पर आपका हेल्थ डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, कितने लोगों पे आपने अब तक कार्रवाई की, क्या इसका कोई डाटा है? क्योंकि FSSAI का लेबल लगा के बहुत सारे लोग सामान अपना बेचते हैं जो वास्तव में आपके मानकों को पूरा नहीं करता, बावजूद इसके अगर वो बेच रहे हैं तो उन पे कितनी कार्रवाई हुई? और एक छोटा सा सवाल हो गया संजय, इसी में 2 सवाल आपने संजय जी पूछ लिया। प्लीज जी ज़रूर आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये सदस्य को अवगत कराना चाहती हूँ कि ये सवाल बहुत ही गंभीर है जो कि एक फूड रिलेटेड जो अडल्ट्रेशन है उसके बारे में है, और ये फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के एक्ट के तहत जो भी एक्शंस है वो लिए जाते हैं जो कि अपने मानकों पे खरे नहीं उतरते हैं, तो वहाँ पे सर स्टेट में हमारे स्टेट कमिश्नर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फूड ऑफिसर्स रहते हैं जो कि ये देखते हैं और तुरंत उन पे कार्रवाई भी की जाती है। आदरणीय सदस्य ने जो सवाल किया है इसके डिटेल्स, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि लगातार इसमें 2019 हो 20 हो 21 हो में मुझे डिटेल्स है, लेकिन फिर भी उसमें नंबर ऑफ सैम्पल्स अगर एनालिसिस किए हैं तो लास्ट ईयर के मैं कहूँगी तो लगभग 1 लाख सैंपल को सर एनालिसिस भी किया है। उसमें जो भी है उनको कंप्लेंट के आधार पर पिनल कोड के आधार पर उनको एक्शन भी लिया है और वो स्टेट के तहत किया जाता है। धन्यवाद। माननीय जया बच्चन जी। मैक्सिमम कंज्यूमर्स बच्चे होते हैं और बहुत से पैकेजेस जो हैं वो जेन्युइन नहीं होते हैं, लेबल नहीं होते हैं। क्या सरकार कोई अपने एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू या कोई ऐसे प्रक्रिया के थ्रू जनता को अवगत कराएगी कि आपको ऐसे ऐसे जगह में जाके कंप्लेन करना है और कितने दिनों में इस कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि सर ये एक है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, दिस इज फाउंड इन अ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। थैंक यू जय। आदरणीय उपसभापति महोदय, जो भी सवाल माननीय सदस्य ने किया है तो ये एक गंभीर मुद्दा भी है, क्योंकि बच्चे लगातार कुछ खाते हैं तो उन्हें शायद पता नहीं है, ऐसे माननीय सदस्य का कहना है। लेकिन फिर भी सर हम यही कहते हैं कि जो भी रिकमेंडेशन के आधार पर जो भी स्टैंडर्ड को मेंटेन किए हुए हैं ये लेबल पे आना चाहिए, वो एक्ट के तहत मैंडेटरी है और अगर वो नहीं है तो उन पे एक्शन भी लिया जाता है। फिर भी अगर अवेयरनेस के बारे में कहा जाए तो लगातार ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है मिनिस्ट्री के थ्रू, और हमारी फूड सेफ्टी को लेके, हाइजीन को लेके, हेल्दी डाइट को लेके,
ट्रांस फैट को लेके ये अवेयरनेस किया जाता है। उसमें सर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की भी ये दी जाती है। फूड सेफ्टी के आधार पर जो भी इश्यूज है वो भी उस माध्यम से दिए जाते हैं। सर ऑनलाइन भी हम उस पर काम कर रहे हैं कि जो अवेयर करे। उसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, ईट टू राइट मूवमेंट चल रहा है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि क्या खाना ज़रूरी है और जो उचित है, लेकिन जो कंप्लेंट आती है तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। माननीय महेश पोद्दार जी। Thank you, Vice Chairman Sahab. Sir, the government has replied that nutritional information requires display of nutrients, but sir, there are many harmful ingredients like fat, salt, sugar, preservatives. It is not mandatory to specify them, and the result is that the consumer doesn't know how much to consume and what is the safe limit and what is beyond the limit. Sir, I think the government wants to make the people aware. So will they review and take the comprehensive view so that a person by seeing the level can know if I am exceeding the limit? Thank you, Mahesh. सभापति महोदय, जो पहले ही मैंने कहा है कि जो भी उस कंटेंट में आता है, चाहे वो शुगर है, फैट है, सॉल्ट है, उसका विवरण उस पैकेट पे देना अनिवार्य है, जो कि हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड का जो नोटिफाइड रेगुलेशन है उसमें दिया है। लेकिन फिर भी अगर डेली अलाउंस में कितना खाना है और कितनी हमारी मार्किंग है न्यूट्रिशन की, तो उस माध्यम से ये भी मैंडेटरी किया है कि वो उस लेबल पे आए, ताकि एक विकल्प चुन सके कि इसमें क्या हानिकारक हो सकता है। धन्यवाद। Now question number 352, Honorable KRN Rajesh Kumar. माननीय मंत्री जी। जवाब सभापति पर रखा गया। सभापति महोदय। राजेश जी, put your first supplementary. Honorable Deputy Chairman Sir, first I thank you, this August House member and the ministers, because today the question is reached the serial number 7. Thank to all. Thanks to all your colleagues. Okay. Please. Sir, whether Indian agriculture sector will face the impact arising of the hostilities between Russia and Ukraine, which are expected to push up the prices, availability of potash, a key component used in the manufacturing of the fertilizers. If so, what are the steps intended to be taken up the government? Thank you, Rajesh. पति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभागृह को और पूरा देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछला साल भी भारत के किसान उर्वरक को लेकर के बड़ी चिंता थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में समय समय पर निर्णय लेकर के भारत के किसानों को उर्वरक समय पर और सही दाम पर हमने पूरा कर दिया है। और इस साल भी आने वाला रबी और खरीफ के लिए भी भारत सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनका मार्गदर्शन में पूरा आश्वस्त कर रखा है, ऐसा कोई परेशानी नहीं होगा। और कीमत जो कीमत आज दे रहे हैं, बल्कि दुनिया में जिसका इसका फीड स्टॉक की कीमत 4 दुगना 5 दुगना बढ़ा है, लेकिन भारत सरकार प्रतिबद्ध है, जो कीमत है वही कीमत पर हम किसानों को पूरा करेंगे। Second supplement. Indian Farmer Fertilizers Cooperative Organization is the largest producer of fertilizers as of now. It was under the Ministry of C&F. It is a relevant ministry. Logically, IFCO should work under the C&F ministry for better execution. Why the ministry has decided to transfer this organization to the Ministry of Cooperation? Thank you. उपसभापति महोदय, ये कोऑपरेटिव सेक्टर ही है इसको, इसी के लिए वो सेक्टर में वो काम करती है, लेकिन भारत सरकार का दिशा निर्देशन के अंदर ही हमारा जो एनबीएस के आधार पर जो हम प्रोड्यूसन करते हैं, वो हमारा नियम के तहत ही वो प्रोडक्शन करके हम किसान को देते हैं। उपसभापति। धन्यवाद। माननीय कामाख्या प्रसाद तासा जी।
मंत्री जी का आंसर देखा, मंत्री जी काफ़ी डिटेल से बताया है। मेरा क्वेश्चन है सर, आसाम में फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका यूनिट 1 और 2 बंद हो चुका है। 3 के लिए ऑनरेबल हम लोग का सरदार फाइनेंस मिनिस्टर ने 100 करोड़ का एक पैकेज दिया था, वो पैकेज का क्या हुआ? और 4th यूनिट जो है नहीं होने से 3rd यूनिट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में यह पूर्ति जो है ये फुलफिल करता है एक ही फर्टिलाइजर कंपनी है। इसका यूनिट 2 और 3 बंद हो, 1, 2 बंद हुआ, 3 के लिए 100 करोड़ दिया, उसको क्या हुआ? 4 का BVFCL का यूनिट को हम लोग नेशनल यूरिया पॉलिसी के अंतर्गत हमने 21 मई 2015 को हमने उनको परमिशन दिया है, ताकि इसके अंदर वो फिर से एक बार चालू करने के लिए, इतना हम बता सकते हैं उपसभापति महोदय। माननीय त्रिचू शिवाजी, ऑनरेबल त्रिचू शिवा, your question is on this. Yes, supplementary. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, the new NUP 2015, with the objective of maximizing indigenous urea production, promoting energy efficiency in urea production, and rationalizing subsidy burden on the government. So my question to the minister is, while rationalizing the subsidy burden to the government, will it not be transferring it on the shoulders of the farmers? Because already the farmers are suffering of not getting due and genuine price for their produce, but the input costs have increased. So when the subsidy has been reduced and shouldered on the shoulders of the farmers, will it not burden them? And do you consider of... Thank you. Put your question. Yes. Will you consider of the problems that are faced by the farmers because of the high prices of farmers? उपसभापति महोदय, नेशनल यूरिया पॉलिसी के अंतर्गत जो मैक्सिमाइजिंग इंडिजिनियस यूरिया प्रोडक्शन, प्रोमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी, ये मुद्दा लेकर के हम आए थे। इसी के अंतर्गत देश के अंदर 25 ऐसे गैस बेस्ड प्रोजेक्ट हमने उसको गैस बेस्ड पर कन्वर्ट करके उनको हमने चालू किया है। इसी का नतीजे से करीब 25 से पिछला 14 साल मतलब 2014 से के बाद अगर कंपेयर करें तो 20 से 25 लाख मेट्रिक टन हमने उत्पादन ज़्यादा किया है। तो सदस्य का क्वेश्चन है कि फीड स्टॉक का कीमत वगैरह बढ़ने के बावजूद ये ट्रांसफर जो रैशनलाइजेशन किसानों के ऊपर बोझ बढ़ेगा, किसी हालत में किसानों के ऊपर बोझ मोदी सरकार नहीं बढ़ने देता, क्योंकि BE 2021 और 22 के अंदर बढ़ने नहीं देगा। सुनिए इधर 2021 और 22 का BE आप देख लीजिए, बजट के अंदर 83,548 करोड़ रखा था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सभी फीड स्टॉक का कीमत बढ़ने के बावजूद भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व वाली सरकार, उसको सब्सिडी बढ़ाते हुए आरी के अंदर 1,62,072 करोड़ रुपए हमने बढ़ा दिया, लेकिन किसानों के ऊपर हमने बोझ नहीं बढ़ा दिया। और इसी के अलावा इस साल में हमारा बजट के अंदर पिछले साल का बजट एस्टिमेट से भी ज़्यादा पैसा रख करके 1,09,242 करोड़ माननीय नरेंद्र मोदी सरकार, माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले साल से भी हम लोग 25,654 करोड़ रुपए बजट के अंदर परियोजना ज़्यादा किया है। फिर भी इस साल अगर बढ़ने के बावजूद भी फिर आरी के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार किसानों के ऊपर किसी हालत में बढ़ा नहीं बढ़ने देगा, ये विश्वास देता हूँ। धन्यवाद। माननीय जयप्रकाश निषाद जी, प्लीज। माननीय जयप्रकाश निषाद जी। सबसे पहले तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि बहुत सारे उर्वरक कारखाने बंद हो गए थे, उन्होंने बना के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में जो कारखाना बन के तैयार है, क्या किसानों के लिए भरपूर मात्रा में उर्वरक समय से देने का काम करेंगे?
गोरखपुर पिछला फरवरी के अंदर कमीशन हो चुका है, अभी उसका प्रोडक्शन चालू है। तो निश्चित रूप में हमारा एनआईपी और एनयूपी के तहत जो इतना प्लांट हमने खड़ा कर रखा है, इस उर्वरक के अंदर देश बने, इसी का एक मुद्दा लेकर के हुआ था। तो करीब करीब आने वाले दिनों के अंदर 1,04,000 मैट्रिक टन यूरिया देश के अंदर बनेगा और निश्चित रूप से किसानों को हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 353 माननीय श्री जीसी चंद्रशेखर जी। सर माननीय श्री जी प्लीज। क्वेश्चन नंबर 353 सर। माननीय मंत्री जी सर उत्तर सभा पटल पर रख दिया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, rural India doctor to patient ratio is around 1:10,926 as per National Health Profile 2019. In our state, Uttar Kannada district, if any emergency occurs in Sirsi Taluk, the patient has to go travel around 2.5 hours, 100 kilometers to Hubli or Shivamogga around 3.5 kilometers. जी, question hour is over now, please. Sir, this is the third time, sir, it is happening like. Now, we are taking this bill, the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2022. Srimati Nirmala Sitharaman to move a motion for consideration of the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2022. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Chartered Accountants Act 1949, the Cost and Works Accountants Act 1959 and the Company Secretaries Act 1980 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Honorable Minister, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Sir, I'll do it to my reply, sir. Motion moved. There is one amendment by Sri John Britas for reference of the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajyasabha. Member may move his amendment at this stage without any speech. Sri John Britas, Honorable John Britas, absent. So motion not moved. So now debate and Dr. L. You have 10 minutes, Hanumantayya ji. Yes, sir. Thank you, Deputy Chairman, sir. The Chartered Accountants, Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Bill 2021 was introduced in the Lok Sabha on 17 December 2021. It was referred to Standing Committee on 21st December and passed in Lok Sabha on 30th March 22. Sir, this bill amends the Chartered Accountants Act 1949, Cost and Works Accountants Act 1959 and the Company Secretaries Act 1980 to change the disciplinary mechanism under the three professional bodies of CA, CS and cost accountants. Sir, this bill seeks to bring more scrutiny and autonomy in the functioning of these three professional institutes, namely the Institute of Chartered Accountants, Cost Accountants and Company Secretaries of India. Sir, the statement and objects and reasons of this bill states that amendments are as per recommendations of the High Power Committee created under the Ministry of Corporate Affairs aimed at strengthening the existing mechanism of this functioning of three institutes. Sir, now the bill makes provisions for a non-chartered accountant as per the presiding officer of the disciplinary committee, which could hamper the professional functioning of the committee. Sir, the other professional bodies like medical council or the bar council are headed by professionals who understand the nuisances of industry and bring in experience and expertise. And how would a non-CA understand the technical nuisances of the issues in front of the committee? Is my first question. Sir, the second question is, external members still decided by same institutes. Sir, I just wanted to
Section 9A, very broad coordination committee is proposed under this bill. Sir, existing mechanism is taking care of the required coordination between the institutes. Under Section 17 of the CA Act, as a non-standing committee, the coordination committee of all the three institutes already exists. And I wanted to ask, what is the purpose of making this coordination committee? This may be made as standing committee. This is my suggestion. Sir, Section 21A and 21B of this bill, 2 CAs, 3 non-chartered accountants or presiding officers will be 1 out of 3 non-CAs is made the provision. But the non-chartered accountants should not be the presiding officers of this disciplinary committee. The reason being, sir, it is because application of complex accounting, the functioning standards, auditing standards, code of ethics, taxation, GST, customs, money laundering, etc. required in case of professional misconduct by the CA, by the chartered accountant. So only the chartered accountant may fully appreciate these type of cases which are coming into this disciplinary committee. So I request the non-chartered accountants should not be the presiding officers of this disciplinary committee. That is my another request, sir. Sir, Section 20C says any firm which has been declared from undertaking any activity or activities relating to the profession of a chartered accountant into the profession, the practice under any law, time being in force or any competent court. Sir, this Section 20C, there may be a serious consequences if firms are removed. That is very, very important. So this provision should not be there, so that the one more problem in this is, these committees are, this department itself is self-funding department. Government is not spending even any amount on these 3 institutes. Their studying is independent, the students are being funded by their parents, and the committees are running under the fees collected by the students. When that is the case, the government's interference as much as possible should not be to the long way. It should be allowed, the autonomy of these bodies should be allowed, and the government also interested in allowing the autonomy of these bodies. But on the other hand, backside of the door, they wanted to enter and control all the institutes, which is not correct. Sir, as per the Section 20A, Register of Firms has been made a separate chapter. Of course, that is okay and good. I agree with it. If the name of the firm is registered outside India, then identical or similar name should not be registered in India is the condition. Sir, how do you verify this? I wanted to know from the Honorable Finance Minister in this case, if the same name is registered outside India, many a times the Indian people who are wanted to register may not be able to get these names, so that if there is repetition, it will be disqualified. That should not be allowed, and I wanted that section has to be corrected properly. So verification of names registered outside India through one single window agency, which may lead to verification of name, may be very difficult. So we should not put people into trouble just by names. So that is what my request is. Sir, Section 19(2) and 20B, in these two, in the register of members, firms' inclusion of information pertaining to pendency of actionable cases. Sir, this
entry of pendency of actionable complaint or information, the cases should be made only after the member or the firm held guilty by the board of director or disciplinary committee and the final order is passed. Sir, here there is a problem. During the process, if a firm or a person, his name is announced here, he will have the adverse effect. So unless the final order is passed, his name should not be published. That is another request by me. So I am requesting section 21(8) as per the bill, non-withdrawal of the complaint filed with this disciplinary directorate under any circumstances is the condition. Sir, I just wanted to ask the Honorable Finance Minister again, if anybody files a submission or files to the disciplinary directorate, if they are not allowed to withdraw their own things after the correction by them, what is the problem for the disciplinary committee is my question. Why it should not be allowed to withdraw? Sir, can we be so strict that treating these firms, treating these persons as criminals under these acts? So I sincerely request the government allowing withdrawal of the complaint filed before them must be there. It should be there because the person who has filed any complaint, filed his own cases, can be allowed to withdraw. But the bill doesn't say so. That is very, very strict and it should not be there according to me. Sir, section 21(9) says availability of the status of actionable information. Availability of status of actionable information and complaints pending before the disciplinary directorate or the board of directorate or the disciplinary committee. These only after final order is made by the BOD, which I have already said. See, unless... Please wind up now. I will do it, sir. Unless the board of directorate or the disciplinary committee are made available in public domain, then the firm will have the adverse effect in the public domain. Afterwards, if the case is going to be in his favor, the firm may not get any business afterwards. He may not be able to practice at all. So that is the reason I request the Honorable Minister allow these only after the final decision is done by the Board of Director. So these are my submissions under this bill, sir. Thank you. After correcting this bill, this can be passed. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Sri Suresh Prabhu. So thank you, sir. And I know this is in a way a very important piece of legislation, bringing amendments to some of the very important institutions, professional bodies that function in the country. As we know, when we want to accelerate the rate of growth of Indian economy, it is obvious that a main important responsibility will be that of the corporate sector. Because as the finance minister said in a budget speech, as well as reiterated it on a number of other occasions, that we must boost private investment. Besides public investment, which is really now responsible for bringing in a very good, respectable rate of growth for the Indian economy, we must have a corresponding boost from the Indian private sector, which is actually called a corporate sector. There are, of course, non-corporate sector entities as well, but major burden lies on the corporate sector. And the corporate sector's functioning, therefore, becomes very important. How do you ensure that a corporate sector which collects monies from the secondary market, from the primary market, put it back as equity or even loans, they borrow from the banks as well as from others. How do you ensure that this
corporate sector functions properly. So, in a collective wisdom of this parliament, we passed a law just 2 years after the independence, way back in 1949, when we created Indian Chartered Accountant Institute. We created subsequently Cost and Works Accountant Institute, also Company Secretary Institute. These are the three major professional bodies which have a very important role to play in ensuring that corporate sector functions properly, and they have to also make sure that their own function is also transparent. How can you guarantee that a sector which has to rely on such entities and the members who are getting the membership flowing out of the charter of these institutes, how do they maintain properly? So their functioning also has to be proper. So therefore, this is a very important legislation, I would feel, which are trying to deal with the various aspects related to these. There are, of course, few provisions which are sought to be amended. Let me, first of all, Honorable Chairperson, I would like to disclose my interest. I am a chartered accountant by training, and I used to also practice as a chartered accountant for quite some time before, I don't know, rightly, wrongly, I decided to come into public life, and now I completed 40 years in public life, 26 years in the parliament. So I don't know, it was a right decision, wrong decision, I don't know. For us, it's a right decision, Mr. But Prabhu. I am a chartered accountant by training, that's why I want to disclose that and tell you that in that context I am speaking. So I was asking my institute, of which I am a member, that I heard that you are opposing this bill tooth and nail. I said, why are you opposing it? They said, no, I think there is some misconception, we are not opposing. So I said, where are you supporting? So I collected from them that they are almost on several points, they have accepted a proposal which was mooted by the ministry. So it's a good thing that there was a dialogue between the government and I, knowing my Honorable Minister, who I have worked for many, many years, that she will definitely consult somebody without doing anything like this, so I really appreciate it. So therefore, it is not true that Institute of Chartered Accountants of India, I cannot speak on behalf of the other two institutes because I am not a member of them, but they are not fully opposed everything that has been said in the bill. So there have been a lot of acceptance of the proposal, including determine the fee for the entry of the name in the register, powers to discipline chartered accountant firms, that is section 21A, 21B, increasing quantum of punishment, maintenance of register of firms, duration of council term, finance of the council, increasing the penalty for falsely claiming to be a member, etc., etc. So now, this is a good thing that new laws, new amendments are being proposed. The stakeholders were consulted, and therefore, in that spirit, I feel it is also necessary to understand if there are any apprehensions on the part of members of the Chartered Accountant Institute as well as other institutes. So on the first one, I think this is very important to note, is related to disciplinary action to be taken. As we know, no one can dispute the fact that every institute and every member of that institute must function in a manner which has to be firstly in accordance with the law, but also in line with the professional conduct rules that have been framed from time to time. And the regulation of that, ideally, should be self-regulation. In fact, the former president of the institute is also sitting here. So, it should be in regulation, should be such that it should be done in a transparent way, but also must inspire confidence of the society. It is true that some instances that have happened in the last several years, people are questioning about this issue. So I can understand the response, but I will only point out to my the Honorable Minister about the certain issues which are related to this. So number one, the provision related to the constitution of Board of Discipline, which is sought to amend section 21A(1) and section 21B(1), we are trying to propose that there should be 3 non-chartered accountants besides 2 chartered accountants. I would like to
just point out one important issue related to this. See, normally, the disciplinary action will be taken when there is a professional misconduct. The professional misconduct will arise out of, normally, most of the professional misconduct. There can be complaints like fighting between the partners of the chartered accountant firm. There could be issues related to certain other issues which are really speaking not professional as such, though related to professional chartered accountant firm, but not professional in that sense of the term. So what is professional misconduct largely will come out of a very important issue related to balance sheet and profit loss account, broadly you can say financial statements. Now these financial statements had to be prepared, and I was saying in context of, there is another chartered accountant sitting here, Mr. Gujral. So these statements which are prepared in case of corporate sector, particularly largely which are related to us, under the Companies Act. So there was a provision in Companies Act 1956, and when we repealed that act, we replaced it with some other new code. The provision still subsists in the same way. And what does it say? It says an auditor has to certify the balance sheet and profit loss account, the financial statements, to be true and fair. See, very important part. When you say true and fair, it is not even our intention of this legislation, our parliament, because we only passed the law. We only made the provisions about how the auditor should certify. In that we said they should certify that it's true and fair. It is fair, the word fair. What is fair is a very subjective term. The fairness, if my son will think I am not fair to him, my son's friend will think his father is fair to him. What is fairness will differ from person to person. A very subjective assessment. Now my point is, if a subjective assessment is the cause of disciplinary action, in that case, let it be left to the judgment of the professionals. How can you decide the fairness of a financial statement which is so technical in nature when a non-chartered accountant can sit on judgment and decide about it? Let us look at it, sir. If there are normally, in a medical cases also, there are a lot of misconduct possible. The Indian Medical Council goes into it. But suppose if you are looking at a medical procedure, whether it was done rightly or wrongly, can it be decided by a non-medical professional? Can you tell a non-doctor to say that please tell me that whether this surgical procedure was corrected properly or not? And if it comes to judgment like this, what would be the effect of that? Suppose because I am a chartered accountant, I can say I know everything, and if I sit on judgment to decide whether that medical procedure was right or wrong and I give a judgment, what implications it will have? So I am not saying that fairness of a financial statement is important, but the fairness of these proceedings also are important. Therefore, I understand why it is proposed by the government that non-chartered accountant, but will it suffice the purpose for which it is made? Will it achieve the objective? Or it will create some unintended wrong consequences? Because when I am going to sit on judgment and say, oh no, this is wrong, what is my technical competence to decide that? And therefore, this is extremely important. There is another chartered accountant. I discovered he is a chartered accountant recently, Mr. Arun Singh. So we are very few. We are a minority. So please bear with us. So sir, I was saying that this disciplinary action to be taken, and as I said, largely it flows from financial statements. And as I said, financial statements are also certified in a way that should not be done to give an impression about a statement which is completely wrong or misleading. So what is misleading and what is wrong is actually very important. And therefore, all over the world, because this is what is the practice followed most of the countries in the world, at least the advanced ones, what is important therefore is
there has to be some sort of a codification of this. How do you make sure that true and fairness has been achieved when the balance sheet was signed by chartered accountant or the auditor in that case? So auditing is a technical term which we use. But what is auditing really speaking? End of it, you are giving an assurance. So audit is a function which gives assurance to all those who want to rely on the statement. So it's a public statement, public document, and in case of companies, obviously it's a public document. It is available on the website of Register of Companies, anybody can access it. In case of listed companies, it is available with the stock exchanges, respective stock exchanges where you are listed. So in this case, it is very important that there is an auditing standard on auditing SA 200. What does it say? Sir, it says, overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit according to standards on auditing is the mother standard of all standards. And it also says that it is an assurance which is given in a way that provides reasonable assurance about the financial statement of the company. Now, what is reasonable is very important. So there is a concept of materiality in auditing. Because when you audit companies, and Indian companies are also now becoming bigger and bigger, we have large companies, so you cannot conduct the audit of those companies unless you use the concept of materiality. Use materiality and find out whether this particular aspect is material in nature, that's why I should report on it, and therefore you can qualify the report. So even though you say it's a true and fair picture of the company, you can qualify your statement as an auditor. In that qualification, you will say something which is material in nature. So my request is, considering all these important aspects of this, while I understand why this government is thinking on these lines, but I personally feel there is a need for a serious rethink about a composition of Constitution of Board of Discipline in which no harm having an outsider. This is absolutely a part of fairness. But the numbers should not be such that we'll have non-chartered accountants outnumbering chartered accountants who are qualified to do that. And I give an example of doctors. Suppose if you sit a medical board in which you get 10 people, of which 8 are non-doctors, what would be the finding of that medical board would mean, end of the day. So I think this is something which I request the Honorable Minister, and I know I've known her for years, she's a most reasonable person, so we will definitely look into it. If not now, I'm not proposing amendment, but I'm sure over a period of time, you will definitely look into this. The second part which has just been mentioned, and this is something which I was wondering why there should not be, if under section 21(8), anybody can file a complaint against a professional body or a professional member of that body, rightly so. It has to be like that. But when you file a complaint, it should be taken to the logical end. What is logical end? The logical end would mean that the complaint should be heard by appropriate authorities, should be disposed of in a manner after probably giving even judgment on that particular process. But during the pendency of that complaint, it is always possible that you can withdraw the complaint. Sir, even in the courts, if you file a petition, the courts allow you to withdraw. Of course, you need to seek their permission. Here in this house, if I present a bill, I will seek the permission of the house, but then I can withdraw the bill. So I don't know why there should be a provision which does not allow the withdrawal of complaint. Because complaint has to be taken to logical end, I am fully agreeing. But for whatever reason, I decided to file a complaint, and then I realized that probably it was not the way it should have been filed, or the merit of that complaint I was not knowing at that particular time, whatever could be the reason. But I think there is a need to also allow the withdrawal of complaint rather than saying this. Of course, there are provisions which is trying to bring in more coordination between the three bodies. I am told there is already a coordination between the three bodies. Of course, there is a reason to bring it. I only feel that when you decide the terms of reference of these coordination committees, which is going to be chaired by the Secretary of the Corporate Affairs Ministry, should be done in a way
that we must realize that there are three distinct bodies dealing with three distinct functions, though related to same sector, corporate sector, but completely different functions. And that's why, in the wisdom of this parliament, we decided to have three different bodies. We never, otherwise we could have made one single body. But we realized that there is need to have three different bodies. And when we have three different bodies, coordination is always a good idea, there's nothing wrong. But making sure that this coordination will happen in a way, keeping in mind the distinct identities as well as the different role of these individual professional bodies. I think that's something, if it is done properly, would really help in a very important way. I also feel that the removal of firms, I think, Madam Minister, I would like to just bring it to your attention, something which again is an important aspect. Ultimately, if you find that a particular professional member has not done a good job and it is finally concluded, so then the end will definitely happen in the removal of his membership, rightly so, because that's the ultimate punishment you can give. Because if you feel that he's not performing his professional duties rightly, what right he has got to continue to be a member, understandable. But there are instances, because we have multiple regulators in the country. There's a capital market regulator, SEBI. There is a banking regulator, Reserve Bank of India. There is an insurance regulator, IRDA. And there are multiple regulators, even for pension fund, we are regulators of different kinds. Suppose if one of the regulators, for whatever reason, points out that there is something wrong and this firm or this member is not done a correct job, you should not then jump to conclusion immediately to remove his name from the register of members. That is what might happen, and that is something which will be unfair and even denial of natural justice. And also, in what context other regulators, because we are now creating even a disciplinary committee here. So let the disciplinary committee deciding about it is understandable and logical. But because of certain adverse findings on some other context by other regulator or other bodies, not necessarily regulators as well, if we are going to finally terminate a membership, it will be very unfair. So I'm sure that is not her intention, and therefore I'm sure you will take note of this eventually. But I know it is not your intention, I'm just pointing out to you that what would be the situation as a result of that. But coming to the very important aspect, sir, this is a time that we have a great opportunity to bring about huge increase in our service exports. So luckily, I succeeded the finance minister as commerce industry minister, and I had known the good work that she had done, and I'm not sure I could carry forward such a good work as she did. But the huge potential for service exports, and our service exports will rise faster than merchandise exports over a period of time. And in service exports, one of the services that we can export in a significant way is this professional service which are coming from these three institutes. Whether chartered accountants, whether cost accountants, or whether company secretary institute and the members can actually bring about a huge increase in their export earnings and also create huge job opportunities. There are many possibilities that you can render these services offshore. Sir, this particular pandemic has shown that most of the work now is carried out from distant places. So just imagine in all these financial services, in auditing, in taxation. Auditing, of course, is a regulator subject because you have to do audit, you have to be registered in that particular jurisdiction. But otherwise, you can carry out such services in a very efficient way, remotely. And there offers a great opportunity for all these three professional bodies. So in that context, we must strengthen them, make them more effective, make them more efficient. And there are a number of young chartered accountants who are now wanting to be chartered accountants, despite the fact that they could see not a good chartered accountant like me, but still they want to become chartered accountants. And I know that this is possible, that we can create huge employment opportunities for these not millions, but few lakh chartered accountants or aspiring chartered accountants. And cost accountant, company secretary, the number will be higher. So I feel, realizing this, we should keep, I'm just going.
So we'll really need to strengthen these professional bodies. I'm sure we'll take these appropriate measures along with this amendment that we are doing. We'll also work on ensuring that this potential that these particular three professional bodies hold will be exploited to the fullest. Sir, thank you very much. Thank you, Mr. Prabhu. The next speaker is Srimati Mausam Noor. Thank you, sir. I rise today to oppose the Chartered Accounts, Cost and Works Accounts and Company Secretaries Amendment Bill. And I'd like to thank my party for giving me an opportunity to speak on this important bill. So let me begin by pointing out on behalf of All India Trinamool Congress that something fundamental has changed in how our parliament functions. While this particular bill has been scrutinized by the standing committee, the scrutiny percentage of bills in general has fallen. So in the 15 Lok Sabha, it was 71%. In the 16 Lok Sabha, it dropped to 25%. What is the number now? In the 17 Lok Sabha, as of December 2021, it was a dismal 13%. Sir, my question is the government taking the parliament for granted? Sir, this government is not allowing the discussions on national issues which are affecting the masses, such as the burning issue of price rise. Bills such as these are important to ensure prevention of white-collar crimes and high-value fraud. But what about the loot happening to the common people today in the name of fuel price hike? We are discussing cost and chartered It's a shameful accountant. burden on their livelihoods. Speak on the bill. More Speak on the bill. shameful that we as their elected representatives are prevented from speaking on it in Parliament. Sir, I would like to state the grounds on why I rise to oppose this bill. Sir, number one, this amendment bill proposes a radical change in the composition of the bodies which regulate the functioning of important members of the financial sector. This bill proposes the presiding officer of disciplinary boards formed be a government nominee and not a member of the institutes. In case an additional board is formed by any of the three committees, the presiding officer and one of the two members must not be members of the institute and will be chosen from a roster of people provided by the government. So not only does this allow for non-sector experts to influence the functioning of an industry-specific institute, but also gives the union government the power to interfere in the matters of a trade body. This is in direct contradiction to one of the government's favorite achievements, ease of doing business. What happened to the 2014 promise of minimum government and maximum governance? The inclusion of non-domain experts into the body and as the president is detrimental to both quality and morale. While there has been instances of accounting fraud, bringing in an outsider to regulate the sector may lead to situations where the outsider has no expertise and is unable to understand and suitably check fraud. So my second point would be the bill does not address the issue of ICAI whimsical censoring. Sir, in the recent past, ICAI has used the penal provisions to arbitrarily censor the content that some chartered accountants posted on social media. So the new bill does not address this issue. A suitable middle ground must be reached between the need to regulate by the government and prevent outreach by the members and the need for domain expertise in regulating such a technical field. In other technical institutions, such as the Bar Council of India too, the members are from the field. The government, however, seems to be making a habit of stepping into expert fields as it has done with the National Medical Commission. While government nominated members can provide requisite regulatory oversight, there must be a way of ensuring they are people with the necessary domain expertise. So the third point, the bill provides for disclosure of pending complaints or actionable information against members and firms. Disclosing details of pending complaints before finding guilt may tarnish their professional reputation and goes against the first principles of grievance redressal that complaints be evaluated and acted upon in a free and fair manner.
Any premature disclosure is not only against the judicial decision-making process, but also an open invitation to unethical interference. We can't be living in a country where we shoot first and ask questions later. We live with the rule of law, where people are presumed innocent until proven guilty. This should apply in financial cases as much as in criminal cases. Sir, I would like to end with one last comment. The ICAI has criticized the Chartered Accounts Act 1949 for leaving the definition of other misconduct open-ended, calling this terminology vague. The present amendment does not address the ambiguity of this definition. If anything, the proposed changes widen the scope of said ambiguity, as any matter could easily be categorized as misconduct, and now the government's nominees are in the body to nudge it towards taking this interpretation. The absence of clearly defined parameters, coupled with the government's presence within the institute, could set a dangerous precedent for obscure and intrusive functioning. Sir, I conclude by asking the Centre, what really is the policy? Minimum government and maximum governance, or maximum government and zero governance? Thank you, sir. Thank you. The next speaker is Sri P. Wilson. Thank you, Chairman, sir. Sir, I first of all thank that the bill is debated, because whenever a bill is passed without any debate, it is called as a black letter law. The Honorable Chief Justice of India has deprecated these types of practices, that bill being passed without any debate, and therefore I thank you, sir, for debating on this bill. Sir, this bill brings in amendments to 3 principal acts, namely the Chartered Accountants Act 1949, the Cost and Works Accountant Act 1959, the Company Secretaries Act 1980, and the major amendment is the revamping of the Board of Discipline and Disciplinary Committee under these acts. Sir, no doubt I would first of all appreciate Honorable Finance Minister that the intention is to finish the disciplinary proceedings in a time-bound manner. But in this amendment bill, there are a lot of infirmities which I would like to place before this august House. Sir, the bill seems to curtail the role of the professionals and the elected representatives of the governing council in each of the professional institutes, in the disciplinary bodies and in the disciplinary matters. Sir, first of all, I would say clause 21(8) says that you can't withdraw a complaint given to a body. Sir, my question is, how can you prevent a person from withdrawing the complaint? You can't compel a person to prosecute a complaint which is not interested in it. Therefore, sir, this is going against the well-settled legal principles. Sir, there are 2 disciplinary bodies, namely Board of Discipline, which acts as a disciplinary authority in case of misconducts falling under the first schedule, and is empowered to impose minor penalties like censure, temporary suspension up to 6 months, and fine of rupees 1 lakh, and which is now increased to 2 lakhs under the amendment bill. The other disciplinary authority, sir, is the disciplinary committee, which deals with the second schedule misconducts and is capable of imposing punishment not only restricted to censure, but permanent removal or removal for any specific period, and impose fine which may extend to 5 lakhs, which is now increased to 10 lakhs under the amendment bill. Sir, reading of clause 22 of the bill shows that the Board of Discipline constituted under the original section 21A is now substituted with a new provision wherein it is revamped. Earlier, the Board of Discipline had 3 members, wherein all of them could be the members of that institute of the same profession. Out of the 3 members, 2 would be nominated by the council, including the presiding officer, and 1 by the union government. Sir, in the amendment bill, the present Board of Discipline under clause 22
will have only one member nominated by the council, and other two members should not necessarily be the members belonging to the institute. Thus, the lay persons are brought inside this disciplinary committee. Sir, what they have to do with this professional body, sir, that too in disciplinary matters. Sir, the presiding officer of the Board of Discipline will now be a non-member. He is a lay person. Thus, the professional or the members of the institute is reduced to one in the Board of Discipline, which is empowered to impose minor punishment. Furthermore, the power to nominate the other two non-members is given to the central government, reducing the work of the council to the status of preparation of the panel alone. Under the amendment bill, the union government, by nominating 2 out of 3 persons, assumes the bureaucratic control over the Board of Discipline of all the 3 professional bodies of respective councils, and the Amendment Act enables the same. Sir, will it not compromise the independency of these professional bodies? What the central government has to do with these professional bodies? Honorable Union Minister has to explain with regard to this. Sir, insofar as clause 23 is concerned, it deals with the disciplinary committee. Sir, section 21B is now substituted with the new provisions. Under this clause, the elected president or a vice president of the council who was acting as the presiding officer are now removed from the disciplinary committee altogether, and the committee is now taken over by lay persons who are non-members of the councils. He will now be nominated by the central government, and he will be acting as a presiding officer. Apart from this non-member, there will be 2 other non-members nominated by the central government. By virtue of the amendment bill, council can only nominate 2 of its members. Thus, sir, Conclude out now. of 5 Conclude members, now. sir, 2 minutes, sir. Thus, out of 5 members, only 2 members shall be the professionals, and other 3 will be the non-members, non-professional members who are lay persons nominated by the union government. Sir, on the contrary, in the Principal Act, all 5 members, including the president or vice president, shall be a professional and shall be the member of that institute. Thus, sir, the number of professional persons are reduced Thank in you. the disciplinary Thank you, committee. Mr. Sir, Wilson. 2 minutes, Thank sir. you very Two- much. 2 minutes, sir. 2 minutes, sir. No, Sir, no. this discipline- Your 1 time minute, is sir. over. 1 minute, I I'll have given finish. you said 1 minute, sir. 2 I'll minutes. finish I now. have given I'll 2 conclude, minutes I'll conclude, more. sir. Now you have no time. I'll Please conclude, conclude. sir. Please conclude. Sir, I'll call the my other question is- speaker. Sir, my question is, how can a disciplinary body with a majority of members being lay persons nominated by the union government can deal with the allegations of the misconduct, which involves a high degree of technicalities owing to the profession? Why should the central government control these disciplinary bodies, and why is that the central government is Thank poking you. its nose into Thank these you. bodies? The next speaker Only is last, Sujit sir, Kumar. last, sir, only one Shri Sujit point. Kumar. Sir, 1 minute, sir. 1 minute, sir. 1 minute, sir. 1 Your minute. time is Sir, over. the- Nothing will go on record now. I have called the next speaker. Please take your seat. Please take your seat. Mr. Kumar. Please take your seat. Mr. Kumar. Sir, I, on behalf of my party, Biju Janata Dal, stand to support the amendment bill, which has been brought to revamp the working of the 3 professional bodies. In a reply in Lok Sabha, the Honorable Finance Minister has asserted that this amendment bill will not infringe on the autonomy of these 3 institutes, and I have no reason to doubt her assertions. Rather, sir, I feel the amendments will make these 3 bodies more accountable and enable them to adopt global best practices and also reform and speed up the disciplinary mechanism of these institutes. Sir, the disciplinary track record of at least one of these institutes, the Institute of Chartered Accountants of India, has come under a scanner in recent months, and no less than the Honorable Prime Minister has flagged it once at the time of launch of the GST. Sir, the statement of objects and reasons of the bill states that it seeks to address the conflict of interest between the administrative and the disciplinary arms of the institutes. To achieve this, the bill proposes to change the composition of the 2 disciplinary entities,
the disciplinary board and the committee to allow for more external representation. Sir, here I would like to very respectfully disagree with my former speakers, very erudite and very learned speakers, Suresh Prabhu ji, Honorable Member Hanumantia ji, and also Mr. P. Wilson, who have apprehensions that non-CS should not be members of the disciplinary committee, and they have argued how can such a technical subject as accountancy be understood by non-CAs. Sir, very respectfully, I disagree with them. This is akin to saying that only a chartered accountant is competent to understand matters of disciplinary proceedings. Because disciplinary proceedings by very nature are non-adversarial in nature, and they are based on the principles of natural justice. So, sir, if a doctor, if a person who is not a doctor can make a good health minister, if a person who is not an electrical engineer can make a good power minister, why can't a non-CA be part of the disciplinary committee? Because it's at the end of the day based on principles of natural justice. Sir, the bill also seeks to achieve speedy disposal of cases by providing for time-bound disposal of cases. Sir, the Parliamentary Standing Committee, which had deliberated this bill at length and applied its mind, has also supported the amendments. I will thank Honorable Suresh Prabhuji, because we had read in media that the ICAI had raised serious objections to the amendments, but he has clarified that it's not the case. But both ICSI and the Cost Accountants Institute do not have any objection. So the Parliamentary Committee also has suggested setting up of Indian Institutes of Accounting, IIAs, on the lines of the IITs and IIMs. Sir, I think it's an innovative idea which should be explored by the government, because it will end the ICAI's statutory monopoly over certification. It will also, sir, bring in greater competition and also greatly enhance the quality of accounting education in our country. I think this will also make the profession of accounting more inclusive, because more people can join IIAs if they are set up. Sir, the bill increases certain fines under the 3 acts. So now if a partner or an owner of a firm is found repeatedly indulging in some misconduct, then disciplinary action can be taken against the firm. Sir, another welcome step is to change the nomenclature of Cost and Work Accountants Act 1959 to Cost Accountants Act 1959, and also to rename the Institute of Cost and Works Accountant to Institute of Cost Accountants. Sir, I'm not sure why the word work was included in the first place, but anyway, it has been omitted now. Please, Honourable Speaker, please wind up now. Please wind up. Sir, I'm concluding. Sir, the firms can also now, firms must also now register with the institutes. Sir, this will enable the disciplinary mechanism also for the firms. Sir, I think, sir, these 3 acts were enacted decades ago, when the business and the corporate landscape of the country was much different and has transformed quite a bit now. So, sir, I think the need for this amendment is very much there. And also recent corporate events like the ILNFS case has put the profession of chartered accountancy under a serious scrutiny. So, sir, I think these amendments will certainly improve the administrative accountability and governance mechanism, and also help in the ease of doing business process, and also help, sir, in achieving India reach the target of the $5 trillion economy that we have been talking about. So I support the bill. Thank you. Thank you, Sujit Kumar ji. The next speaker is Ayodhya Rami Reddy. I believe this bill, the Chartered Accountants, Cost and Work Accountants and Company Secretary Bill 2021, is a blatant attempt to take away the autonomy of these 3 professional institutes. By bringing these amendments, the Centre is setting up a precedent that could negatively impact the independence of other professions as well. Sir, we have few objections on the proposed changes under this bill. Objection number 1, a non-standing committee under Section 17 of a similar nature already exists, and measures should be made to make it more formal. Chairmanship by Secretary of Ministry will intrude on autonomy and independent decision making. But Ministry says that the Standing Committee has no specific terms and is informal.
but this committee can be made formal. The other point is the discipline and disciplinary committee. The objection is a non-member will not have understanding, in-depth understanding of the accounting and auditing standards and practices. But I must tell my friend Sujit, where he was telling, see, there are business functions and there are support functions. To support business, I think the support functions like chartered accountants, cost and work accounts, and company secretary must have the basic knowledge at a leadership level as a minister or beyond, or a secretary. There it is different. Because there, somebody prepares the notes and everything for you. But here, you have to really get into the details. So for that, certainly business knowledge is essential to support, as a support, CAs and all these are all support functions of the business. So I believe the in-depth knowledge and understanding is a must. So that one point that we have an objection on that. The conduct of professionals should be judged by professionals only, is what we believe. Then there are more chronic problems in judiciary. If you look at the government, by amending the CA bill, wants independence of adjudication of disciplinary proceedings, then this problem is more chronic in judicial system, which has more far-reaching consequences and even a threat to democracy. Judges are appointed by a group of judges, judges are transferred by a group of judges, and also promoted by a group of judges. And even framing of charges against an errant judge shall be done by judges according to Judges Enquiry Act 1968. So my submission is, the government is reforming the disciplinary committees of chartered accountants and also doctors, why not judges? Also, till date, no judge of the High Court or the Supreme Court has been impeached. And even the CBI has to seek sanction of the concerned High Court if it has to proceed even against a retired judge. Where is the fairness here? Then coming back to the liability of firms for misconduct of partner. Clarity is needed on many issues. Repeatedly found guilty, not defined. If a person is a partner in more than one firm, whether all firms are liable, then if all partners of a single firm are found guilty of misconduct, but not repeatedly, will action be taken against the firm? Whether it is applicable in case of limited liability partnership, and if so, it would be unlawful to conduct whole firm or for misconduct. Action against entire firm will cause hardship to all other partners and employees who are faultless. Please wind up. Yeah, final, sir. Just similar way for, suo motu proceedings. The bill disallows disciplinary directorate to make investigations to suo motu without any precondition of reason to believe. So this unfettered power can be abused for ulterior purposes. Disclosure of pending complaints. In the similar way, the bill provides for disclosure. This will harm the reputation of the person if tomorrow it comes to know that he is not found guilty. Member of disciplinary committee. Here also the disciplinary committee consists of external members who are nominated by central government. This disciplinary committee also has non-professional members. You need to look at. So Thank you. The conclusion, sir, as a business person who has the knowledge on chartered accountants, company secretary and cost accounts, I conclude by saying that the CA fraternity is being singled out, whereas other professions with even more glaring problems remain untouched. Thank you, Mr. Reddy. The next speaker is M. Thambuduraj. Thank you, Vice Chairman, sir. As other members previously said, the persons who are not knowing a chartered accountant, whether they can deal all these things. Sir, I was also holding this ministry, company affairs, 98, 99. I am not a chartered accountant. But still I am the minister for this concerned department, I know that. At that time, I visited many conferences conducted with this Cost Chartered Accountant Association, and I attended many conferences. They requested so many demands, what to do and what are things. Here, with a good intention, our government has brought such amendments. Because already former finance minister, Mr. Chidambaram, raised when Madam was here discussing a finance appropriation bill at that time. Where is the confidence of private investors in the country? See, to create the confidence of the private investors only, this chartered accounts has to be regularized. That is more important. Because some members were concerned about that, if at all you are entering in the autonomy of this thing, what will happen? Dr. Anumataya said,
See, whatever the rules we are bringing, to regularize only the Parliament is bringing, not any intention to interfere or belittle them. That is not our intention. Sir, here also, some of the proposals already been accepted and legal changes are being undertaken in consult with the institutions. The institutions already accepted and consulted by the government. They are accepted the amendments, certain things that is brought up. Sir, and also there was a demand from the Institute of Cost Accounts of India meet me. They have to be treated along with the chartered accountants. That kind of thing they are demanding. But most of the things always conflict is that chartered accounts and cost accountants, this association. That has to be sorted out. That is I am requesting Honourable Minister, she will take up that issue. This is very important, sir. And also, sir, even the Prime Minister, the disciplinary track record of ICAE had come under the scanner a few years ago, with even the Prime Minister flagging it at the time of the launch of goods and service tax. Sir, this is even Prime Minister aware of all these things. Our cabinet, all the cabinet knows that what is going on. Therefore, with the good intention, government has brought this kind of amendment. Therefore, I appreciate and welcome that. I support this bill, support the amendments brought by the Honourable Finance Minister. As former Minister for the company, supporting this. Thank you. Thank you. Thank you. The next speaker is Bisambar Prasad Nisad. धन्यवाद उपसभापति महोदय इसके पहले मैं आज चूँकि त्रेता के संगमेरपुर के महाराजा निषाद राज गो की आज जयंती है, मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। आज मंत्री जी सदन में चार्टर्ड अकाउंटेंट कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी संशोधन बिल लाई हैं। अब जब ये धरातल पे आएगा तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। मानवर इन्होंने सेक्शन 9A में संशोधन किया है और चाहते हैं कि भारत सरकार का सचिव नियुक्त हो। काउंसिल पहले से है जिसमें केंद्र सरकार के 8 नामी होते हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी। मनोहर देश में 3,41,000 करीब सीए हैं, 7 लाख विद्यार्थी हैं। आज हम देख रहे हैं कि जब परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे सीए की तमाम परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश में तो सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। तो जिस तरह से हो रहा है और इसमें एक संशोधन इन्होंने किया है, 21A 21B में संशोधन करना चाहते हैं। मानवर इस परिप्रेक्ष्य में जो दृढ़ नियामक संस्थान न केवल देश की कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है, बल्कि देश की जनता के धन को घोटालों से भी बचाते हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था धोखाधड़ी और घोटालों से अछूती नहीं रही है। बड़े बड़े घोटाले देश के अंदर हुए हैं, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार हो। इस सरकार के सत्ता में आने से पहले हुए हर्ष मेहता सिक्योरिटी स्कैम 1992, ट्राइस और इंडिया लिमिटेड स्कैम 1975-76, द ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, केतन पारिक स्कैम्स 2001, सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड 2008, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज स्कैम 2008, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। निषाद जी बिल पर बोलिए, डिस्कशन दूसरा है, आप दूसरे बोल रहे हैं। नहीं, वही बता रहे, तमाम जो घोटाले हुए मानो आप बिल पर बोले तो इसे बता रहे हैं ना। तो ये जो माननीय मंत्री जी लाई हैं, तो चूँकि आधा अधूरा लाई हैं, इसमें हम चाहते हैं कि इसमें जो गलतियां हैं वो सुधर जाए, सिलेक्ट कमेटी को चला जाए। तो जो उसमें हमारे सदन में जो है करीब 6 मेंबर सीए हैं, सब लोग उसके सिलेक्ट कमेटी के मेंबर रहें, तो उसमें जांच लें। नहीं, बाद में तमाम कठिनाई आती है, बाद में फिर बिल में संशोधन करना पड़ता है। तो माननीय मंत्री चाहेंगे कि इसको सिलेक्ट कमेटी भेज दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज जॉन ब्रिटस। योर टाइम इज 3 minutes. Everyone. Sir, I stand to oppose the bill, and I think that after having heard Suresh Prabhuji, Honorable Finance Minister would be contemplating to withdraw the bill, because a ruling party member has firmly put across the objections towards this bill. Though Mr. Tambidurai is supporting the minister without having any portfolio in the government,
I don't know why the government should pursue with this bill, because cutting across party lines, there have been opposition to this bill. Sir, I have gone through the speech of the Honorable Finance Minister in the Lok Sabha. There are certain aspects which she tried to emphasize. One is that she wants to make the pillars of corporate governance more important. That is one of her articles in her speech. Second is to in line with the global standards. And she also confides, or rather reiterates, saying that she doesn't even have a faint intent to dilute the autonomy of these institutions. These are the cardinal points on which she actually spoke in Lok Sabha. Apart from saying that she doesn't have any interest in the money of these organizations. Sir, I feel that there is a method in the action of the government. They want to dilute the autonomy of every organization in this country. Already they have finished off many constitutional institutions. Now, these are institutions, autonomous institutions, which are of repute and functioning more or less properly. But the government wants to control these organizations. I really want to know whether it is to uphold the governance or to ensure the control or interference. So there is a committee that has been made. That is a coordination committee under the chairmanship of the Secretary of MCA. Madam, already in this council, there are 8 members nominated by the government. And I would submit with the finance minister, she should at least ascertain the presence of these government nominees in the present council. Sir, I can even point out that the joint secretary of MCA, his attendance would be less than 10%. So they have not shown any interest to enrich the governance of these bodies. And they think that bringing bureaucrats is a panacea for the ills. That is where the government is going to err. Honorable Finance Minister was a free thinker when she was a student. And I really want her to, look at the, I would say, the opinions that have been expressed from different parties. Sir, there has been a mention about the government not being interested in the money. Is it not a fact that these institutions put together contributed something like 28 crores for the PM Care Fund? Is it not a fact? Was there a coercion from the government, from the secretaries? And is it also not a fact that her own department, Income Tax Department, has served a notice Please on wind one up of these now. institutions for diverting 8 crores to PM Care Fund, flouting the norms? So there are so many issues. I would certainly urge upon the government that if at all they are interested to protect the autonomy of the organization, they need to enrich the autonomy instead of trying to creep it and also interfere with the functioning of this organization. Sir, just now a report has come that only 8% of the autonomous organizations submit their periodic audit reports. 8% only. 92% of the central organizations, approximately 400 in number, they don't even submit their audited reports. The government is not interested in that. The government is interested in these. Thank you, Mr. Vitas. Your time is over. I have given you 1 minute more. It's over now. 1 minute, sir. It's Just over. 1 minute. Please Sir, conclude. I'll sir, call the next speaker. Just see the amount at the disposal of these organizations. 2,499 crores for the Institute of Chartered Accounts of India. And for Institute of Cost Accounts of India, 359 crores. And Institute of Company Secretaries, 885 crores. You want the bureaucrats to interfere and interrupt? Is it that what the government wants? I really wish that Suresh Prabhu's counsel prevails over the Honorable Sri Anil Desai. Thank you, Vice Chairman, sir. Thank you for allowing me to speak on this Chartered Accountants, Cost Accountants and Company Secretaries Amendment Bill 2022. Sir, ICAI Act 1949, which governs the activities of the Chartered Accountants in India, is a 73 years old organization, and under the autonomous status which was granted to it, has been working efficiently in its sphere of activities and discharging its obligations quite deftly.
And under the present mechanism, there are government nominated members on the council, 8 are there. May I know from the Honorable Minister what feedback the government has received regarding their work record in discharging their responsibilities as of today? You may get an insight on their work performance. So what changes government intends to bring in by appointing more non-CA members in different bodies? In respect of constitution of Board of Discipline and formation of disciplinary committee, the main objection being raised by the chartered accountants is about appointing non-chartered accountants, non-cost accountant and non-company secretary as the presiding officer of the disciplinary committees of the respective bodies. So their contention is that this amendment will damage it because conduct of professionals like CA or ICWS or company secretaries should be judged by the professionals of the similar nature. Similarly, coordination committee, which is off day, that is presently it is in the shape and it is doing its job quite fairly, then what is the necessity of bringing about one more or formation of a new coordination committee? Secondly, sir, government has already set up NFRA, that is National Finance Reporting Authority, to oversee the auditing profession and accounting standards in India. In 2018, it was formed. And it has the powers to investigate professional misconducts of chartered accountants for listed companies and non-listed companies also. Sir, today, more than 10,000 chartered accountants have been rendering free of charge, that is honorary services in looking after the affairs of this chartered accountants institution. To get into new mode, government will be making it have more expenses for that. Where would the extra expenditure would come? And that would run into crores of rupees. So only an option is that I think by revising the fee structure or registration members, the CA students will be burdened to that to meet this expenditure. So another important aspect of the bill is that proposed setting up of an Indian Institute of Accounting, IIA, in various parts of India. Sir, IIAs will offer 5 years degree course and all that, and they will be given certificate as CAs, CPAs, and they will be given, they will be able to practice like chartered accountants. But what is the logic behind it when we have such a finest of 3 professional institutes like they are autonomous in nature too? Then what is the purpose? Will it not create multiple of institutions? Will it not create more confusion? Will it not complicate the whole process? So these are the things, and to set up IIM like institute, 350 crores around that is the expenditure. This is hard-earned money of the taxpayers. So why would we go for this kind of expenditures where already mechanism and infrastructure is there in place? So multiple institutions will definitely create confusion. So, Honorable Minister, Honorable Finance, just 2 minutes I'll take. Please wind up. We have some time constraints. Please understand, Honorable Member. So, we have some time Finance constraints. Minister had mentioned in Lok Sabha in a reply that big four international auditors like we have Deloitte, we have KPMG, we have Ernst and EY, we have PwC is there, and we do not have the matching size of our chartered accountants firms at this stage. With this legislation in place, that will definitely. Let me complete, sir. Thank you. Hardly we get some time. Please conclude. If we are not given chance to make our point, I mean, what is the? Please conclude now. Please give me 2 minutes. I'll just finish. I'm sorry. Because with this legislation in 3 place, minutes for every speaker. You have already crossed 3 minutes. But we should now not forget please conclude. that in the past, whatever big financial frauds have taken place, these very firms, these auditors were responsible for it. We do agree that in our system also there are wrongdoers, there are exceptions, but there are provisions in the law which take care of them, which punish them. But it should not be so that just on the suspicion, the chartered accountants or the cost accountants should be taken off their licenses. Thank you, J.K. Vasan. Sir, एक second. Last point. I have called J.K. Vasan. Last. Please sit. Please be seated. I have given you more time. Please, J.K. Vasan. Please. Sir. Yeah, please. It should come. This will not go on record. Please. Sir, it should come on record now, whatever I say. He talks. On record, please.
Sir. Sir. Sir, three premier institutions in the country, ICA, ICWAI and ICSI. Professionals from these institutions enjoy a lot of independence and accountancy. However, sir, at the same time, there have been instances when they have come under the influence of their own clients. Hence, the need of this legislation to regulate these professions have become very much necessary. Three important points, sir, I would like to quote. One, about the amendment. The bill sets out specific time limit for disposal of inquiries by the Board of Discipline and the Disciplinary Committee. Number two, sir, the second point is about disciplinary action against CA firms. This is accountable for the firms and lapses for their professional misconduct. The third point is about setting up a coordination committee, sir. The committee will have an important role in overseeing the development and harmonization of these three premier institutions. It also provides specific functions, sir, for the coordination between the committees, sir. Overall, sir, I feel the amendment bill is very timely in setting up an institutional mechanism to ensure that the professionals in the field of accounting and corporate secretaryship and also institutions themselves to maintain the highest standards of performance and ethics for all time to come. Thank you, sir. Thank you, Mr. Vasan. The next speaker is K. Ravindra Kumar. Not present. The next speaker is Naresh Gujral. Sir, the government is rightfully very keen to ensure total transparency and accountability in these three institutes. Sir, as our economy has grown in recent years, so have the frauds in the corporate sector, whether it's banks or corporates or exchanges. And there is a view that a lot of these frauds could have been prevented had the chartered accountants been more vigilant, and these auditors are to be blamed. And I fully support the government that those who were responsible for it must get punished expeditiously, and the punishment should be very strong so that it serves as a deterrent to other chartered accountants in this country. Sir, in fact, I feel this should be a wake-up call for the institutes. They have been lax. They have taken a long time in trying to discipline their members, and I do hope that they will now also start looking inwards. Sir, however, it would be wrong to blame only the CAs for the corporate frauds that have taken place. It has been done with the connivance of the board of directors of these companies. I would say in many, many cases, whether it was SEBI or whether it was RBI, the regulatory framework had failed our country, and that also needs to be looked at very, very expeditiously. Sir, obviously, this bill, in order to discipline the CAs and others, is bringing in disciplinary boards. And many of my distinguished colleagues have spoken about it, including Mr. Prabhu. I don't want to be repetitive. All I can say is, sir, that when you have 5 members in this board, I would urge the Honourable Minister to make it a balanced board and make it 6. And the chairman should be somebody who's proficient with the subject, somebody who has domain knowledge of this subject. And I would urge you, madam, that even if you appoint the deputy CAG as a chairman, I think everybody would be satisfied because there will be some domain expertise there. So I hope that the government would relook at it and make sure that, like the medical councils or like the law council, the CAs also receive their due justice. Sir, in the end, I would say that
the Honorable Minister has been working very hard to bring in ease of doing business in this country. But one minor point which I have brought up before also has probably escaped her notice, which in regard to the company secretaries. Sir, there is a strange law in this country that if you have a company with a paid-up capital of 10 crores, earlier it used to be 5 crores, then whether this can be a holding company, for example, there is a 10 crore company which owns one flat in Delhi or Bangalore or wherever, does no other business, but by law, it is supposed to have a company secretary full-time on its rolls. I don't understand the logic behind it. So I do hope that the minister would relook at it and change this and link it with turnover. If the company has a turnover of 10 crores, 50 crores, 100 crores, you can decide. But to have a full-time company secretary sitting idle the whole year makes no sense at all. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Mr. Gujarat. The next speaker is Narayan Das Gupta. Thank you, sir, for allowing me to speak on this amendment bill on account of Chartered Accountants Act 1949, Cost and Accountant 1959, and the Companies Act 1980. Sir, because I had the opportunity and privilege to head this Institute of Chartered Accountants, I know from the day one when the institute came into being in 1949 under an Act of Parliament. That was and even before the Constitution came, of Constitution of India that was adopted on 26 November 1949. Before that, I would like to share with this august house the history of this institute. It came with this idea that because there was a deficit of trust in the financial statements, that's why there was a debate in the Parliament, and this responsibility was given to the institute with total autonomy in terms of this was an autonomous body in all respects. Even, sir, the expenses in today's date, we have on record around 340,000 members, 7 lakh students. In that way, 1 million, a family of 1 million members we have in today's date. And the responsibility which were given, whether it is accounting standard, audit standard, quality of the audit, or the disciplinary mechanism, that is a very robust system in the institute. As far as examination is concerned, for the last 74 years, we are conducting examinations, and at no point of time there was any complaint of any leakage of the papers, as per the requirement. Second thing, sir, for the members of I will just give the background of that. In today's date, this institute is working through the council, elected body. 32 members are elected from the 5 regions, and 8 are nominated by the Government of India. Through this process, it is working. There is a representation from the Ministry of Company Affairs. There is a representation from the CAG, representation from the other government department that is working. And now the disciplinary mechanism also. There is a two types system, disciplinary board and disciplinary committee. Board decide whether there is a prima facie guilty or not. And if he found prima facie guilty, matter is referred to disciplinary. I would like to share with this august house, for the last 75 years, whatever decision have been taken by the disciplinary, they have been subject to the scrutiny of the tribunal, High Court, Supreme Court, and hardly any decision has been reversed. This is because of the robust system in place in the institute. I don't think why there is a need of changing. As our Thambudrai, our colleague in the house, he said he was a minister for the Ministry of Company Affairs, but he was not a chartered accountant. Why not? Sir, can a non-judicial person preside over any judicial proceedings? This is a question minister can become, but we cannot compare that way. Sir, I have just to submit that. Now, there are amendment 1A, 9A of this Amendment Act. They say coordination committee. What is the need of this coordination committee? When there is a council, there are members, 8 members of the government nominees, similarly in disciplinary committee, and there are more than 40 committees of the institute, where in each committee there is representation from the government. From the apex body, business apex body, that way this is a system. Thank you, Mr. Gupta. Pardon, sir, because these amendments which have been proposed, coordination committee, disciplinary mechanism, these are not required. The institute is known for its independence, its integrity, its excellence.
Thank you. This is a tinkering with the independence of the institute. I will request the honorable minister through you, sir, that if the amendments are not required at all, I am not going into the amendment. And if there is because we are here, 6 members chartered accountant in this house, I will request. Thank you. This matter may be Dr. referred to Fawzia the Khan. select committee. This is what I will say. Sir Charles Darwin, the father of modern science, has said, it is not just the species that is the fittest that survives, but what survives most is the species that is the most responsive to change. Sir, as a rule of nature and as a responsible opposition, we are certainly responsive to change and reform, sir. It must be remembered always, and it is also true, that like civilizations, governments and oppositions, laws and legislations also evolve out of the shortcomings that must have remained earlier, or the mistakes that may have been made earlier, or as per needs of the hour. Sir, the intent to reform and to increase accountability is definitely welcome. Coming from a dynamic and highly capable finance minister who has a good grip over her subject, there is little scope to disagree. But there is definitely scope for suggestions and raising a concern or two without going into repetition. More important is that the concerns of all stakeholders need to be addressed before going further, sir. The views of the ICAI and the view of the Standing Committee must be taken into consideration more sensitively, I feel, as per the views of the speakers who were speaking earlier. While the intent of the bill is effective coordination, the apprehensions expressed by them and the dilution of autonomy and decision-making must be suitably addressed before the passage of the bill is my view, sir. My concern here is the intent of the government is to regulate CACS, but the larger question is, do we have the required infrastructure and manpower for the proposed additional responsibilities? Has the government planned to address this issue? While speaking about manpower, the officers are already overburdened with work. Are we going to be recruiting more officers for this process? Currently, the recruitment via UPSC is declining year after year. So this is an important issue, sir. Sir, the bill provides for disclosure of pending complaints or actionable information against members of the institutes and firms registered with them. Sir, I would like to ask, recording details of pending complaints in the register of members and register of firms before they are found guilty may adversely impact their reputation. Doesn't it give scope to vendetta politics? How are we assured that disclosure of pending complaints is not going to be selective in nature? Sir, also, while concluding, I would like to request the government, sir, to formulate financial literacy programs for people in general, so that women and men have an idea about issues like investments and taxation. Taxation not just limiting merely to income tax, but also GST, capital gain, and so on, sir. It is time for our public at large to become more financially literate. It is important that they understand, maintain, sir, 1 minute, just half a minute, maintain, file income tax returns, and have the necessary skills to set up and grow businesses. A time must come, sir, when the janta could act as a regulator. Sir, if you want to reap financial blessings, you must sow financially, it is said. And David Buck, I will end with his quotation, financial education needs to become part of our national curriculum and scoring systems so that it's not just the rich kids who learn about money, it's all of us. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Shri Neeraj Dange. केंद्र सरकार हर एक पर, चाहे वो व्यापारी हो, डॉक्टर हो, उद्योगपति हो, शिक्षक हो, सरकारी कर्मचारी हो, स्टूडेंट हो, अधिकारी हो, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, दुकानदार हो,
या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों नहीं हो, सभी पर अपना एक शिकंजा कसना चाहती है और सभी को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। यही हर बिल में, हर कानून में अपने तरीके से उसे बदला जा रहा है या संशोधित किया जा रहा है, ताकि देश के ऊपर उसे जबरदस्ती थोपने का कार्य सरकार कर रही है, और ये विधेयक भी उसी का एक उदाहरण है। मैं कुछ पंक्तियां सरकार पर कहना चाहूँगा। नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार पर, अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करूं। हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को हम अगर मोटे तौर पर समझने की कोशिश करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज, ये तीनों ही इंस्टीट्यूट जो हैं, इनके मैनेजमेंट, इनके संबंधित काउंसिल्स जो हैं वो संभालते हैं। और इसी प्रकार से अगर किसी तरह का मिसकंडक्ट अगर होता है तो उसको रोकने के लिए एक डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है, और तीनों काउंसिल्स में समन्वय स्थापित करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है। मैं समझता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज से संबंधित व्यवस्था को स्वायत्त रूप से मजबूत बनाने के लिए जरूरत है, ना कि इनके अनुशासन तंत्र को सुदृढ़ करने के नाम पर सरकारी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और स्वतंत्र कामकाज को बाहरी तौर से प्रभावित करने की। यह प्रस्तावित बिल अगर इसकी विवेचना करते हैं तो प्रमुख मुद्दों पर यह बिल अपने कथित उद्देश्यों से भटकता हुआ नजर आ रहा है। हम उन प्रमुख मुद्दों पर जो है बात करना चाहेंगे। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सदन का। हम बात करेंगे डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म की। यह बिल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड अनुशासन समिति, जो कि इसकी एक शाखा है, उसके इर्द गिर्द घूमता है, और प्रस्तावित बिल में एक स्वतंत्र डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म जो है उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। ऐसे में बिल में प्रस्तावित डिसिप्लिनरी बोर्ड एंड डिसिप्लिनरी कमेटीज के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो संबंधित इंस्टीट्यूट के सदस्य नहीं होंगे, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा संबंधित काउंसिल्स द्वारा तैयार किए गए व्यक्तियों के एक पैनल में से नॉमिनेट किया जाएगा, और इसके अलावा डिसिप्लिनरी बोर्ड में एक बाहरी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा, और डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर 2 बाहरी व्यक्तियों को केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। यह कदाचित इस बिल के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हो सकता है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि इंस्टीट्यूट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी आर्म्स के लिए विधेयक में डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स की संरचना को बदलने का प्रस्ताव है, ताकि अधिकाधिक बाहरी हस्तक्षेप और प्रतिनिधित्व को अनुमति मिल सके। सर, मेरा समय कितना सा? हाउ मच टाइम आई हैव? आपका टाइम है, बोले। हाँ, हैव यू फिनिश? हाउ मच टाइम हैव बीन अलॉटेड सर? आपका समाप्त हुआ क्या? आप और बोलना चाहेंगे? यस सर। आपका समय यस है, सर। आप बोल सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह कि वर्तमान स्ट्रक्चर के तहत तीनों इंस्टीट्यूट्स की डिसिप्लिनरी कमेटी के बाहरी सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से नॉमिनेट किया जाता है, और सीए अधिनियम के तहत केंद्र सरकार स्वतंत्र रूप से डिसिप्लिनरी बोर्ड में एक सदस्य को नॉमिनेट करती है। यह स्पष्ट नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कार्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे एड्रेस किया जाएगा। 3 सदस्यों के बोर्ड में सदस्यों के रूप में 2 गैर सीए की नियुक्ति के प्रावधान का अप्रत्याशित प्रभाव हो सकता है, क्योंकि सीए के काम को मुख्य रूप से गैर सीए द्वारा आंका जाएगा। गैर सीए सदस्यों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग, स्कोप ऑफ ऑडिट, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिट जैसे सत्य और निष्पक्ष भौतिकता परीक्षण आदि का गहन ज्ञान नहीं होगा। ऐसे में बिल के अंतर्गत यह प्रस्तावित किया गया कि अनुशासन समिति के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पद पर केंद्र सरकार द्वारा एक नॉन सीए व्यक्ति पदस्थापित किया जाएगा। इसके पीछे सरकार की क्या गोपनीय मंशा है, यह समझ से परे। अभी तक आईसीएआई में प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बनते आए हैं, एवं आईसीएआई के का कहना है कि भविष्य में भी यही प्रक्रिया वो अपनाना चाहते हैं। वर्तमान में अनुशासन समिति में 5 सदस्य थे, जिसमें से 3 आईसीएआई से थे तथा 2 सरकारी नामित थे। अब सरकार एक और नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति कर रही है, जिससे अनुशासन समिति में 2 सरकारी नामांकितों से बढ़कर के 3 सरकारी नामांकित व्यक्ति हो जाएंगे। प्रोफेशनल्स के आचरण को केवल प्रोफेशनल्स द्वारा ही आंका जाना चाहिए, क्योंकि वह पेशे की तकनीकी नीतियों और परिषद द्वारा निर्धारित आचार संहिता और उनकी व्यवहारिकता या जटिलताओं की समझ सकता है, जिसे बाहरी व्यक्ति को समझने में, मैं समझता हूं कि वो बाहरी व्यक्ति समझने में सक्षम नहीं होगा। सीधे तौर पर, जैसा पहले हमारे एक वक्ता ने भी कहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नॉन सीए होना ऐसा दुष्प्रभाव डाल सकता है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट को सर्जरी सिखाने के लिए किसी इंजीनियर को भेज दिया जाए, और इस तरह का उल्टा कार्य मौजूदा सरकार ही कर सकती है, मेरा यह कहना है।
बिल के उद्देश्य बिल के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है तो यह बिल डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को मजबूत करके इंस्टीट्यूट्स के सदस्यों के खिलाफ मामलों में त्वरित निपटान को प्राप्त करना चाहता है, जो क्लियर नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें बदलाव होना चाहिए। बहुत क्लियर है कि if same people will not be available for the parallel meetings, which will definitely hamper the speedy disposal of the pending cases. धन्यवाद। मैं धन्यवाद। सर बस कंक्लूड कर रहा हूं एक लाइन के साथ। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ में मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार कितनी भी मनमानी कर ले, कितना भी देश को अपने ढंग से चलाने की कोशिश कर ले, हर गलत निर्णय के अंदर हम लोग जो है विरोध करते रहेंगे और आपको झुकने पर मजबूर करेंगे। धन्यवाद। एक लाइन के साथ सर, सिंगल लाइन सर, हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने नफरत को गले मिल मिलकर शर्मिंदा किया है। धन्यवाद। जय हिंद। श्री अरुण सिंह। Thank you, sir. By the Chartered Accountant Act, Cost at Work Accountant, Company Secretaries Amendment बिल 2021 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। मान्यवर, अभी लोगों ने जो कहना शुरू किया कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंजेस किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो ऑटोनॉमी है उसको भी खतरा है, उसको भी समाप्त किया जा रहा है। सरकार इसको कंट्रोल में लेना चाहती है और धीरे धीरे इस प्रोफेशन को समाप्त भी करने की कोशिश कर रही है, ऐसा विपक्ष के लोगों ने कहा। इन अमेंडमेंट के माध्यम से कैसे इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी समाप्त हो सकती है, इसलिए लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। आज भी जो सीए इंस्टीट्यूट है, किस प्रकार का कोर्स डिजाइन करना है, स्टूडेंट को कैसे एंट्री देना है, एग्जाम लेने का अधिकार, मेंबर को एनरोलमेंट करने का अधिकार, उनको ट्रेनिंग समय समय पे देने का अधिकार, वो तो सीए इंस्टीट्यूट के पास ही रहेगा। तो इस प्रकार से बातें करना मुझको नहीं लगता कि कहीं भी तथ्य से संबंधित है, इसलिए इसको मैं खारिज करता हूं। समय समय पर अमेंडमेंट आए, कोई पहली बार तो आया नहीं है। सीए एक्ट में अमेंडमेंट 1959 में आया, उसके बाद 2006 में आया, उसके बाद 2011 में आया, फिर आज 2021 में ले आया जा रहा है। ये समय की परिस्थिति के हिसाब से जैसे हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, जो सुधार हो रहा है, उसको देखते हुए लोगों का और विश्वास इस प्रोफेशन पे कैसे हो, और उसको ध्यान में लिया करके यह अमेंडमेंट ले आया गया है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। आज जो सीए जो प्रोफेशन है, अगर देखा जाए तो करीब 7 लाख से अधिक इसमें स्टूडेंट रजिस्टर्ड है और 3.4 लाख जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 164 ब्रांचेज पूरे देश भर में है और पूरे विदेश में 44 फॉरेन कंट्रीज में यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनका चैप्टर है, और फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव जो है 31 कंट्रीज में है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनका प्रेजेंस पूरे ग्लोब में है, पूरे विश्व भर में है। और तो और अगर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज देखेंगे तो उसमें 70-80% उनके जो फाइनेंस को हेड करने वाले हैं वो यहाँ के पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं, वही वहाँ की भी इकोनॉमी और वहाँ की कंपनियों को संभाल रहे हैं। 23 कंट्री ऐसी हैं विश्व की जिनके साथ हमारा एमओयू हुआ है या एमआरए है, तो यहाँ के लोग जाकर वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते, 1-2 परीक्षा दे करके वहाँ के लोग यहाँ के भी आकर के परीक्षा दे करके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं 23 कंट्रीज में। और यहाँ तक कि जो ग्लोबल अकाउंटिंग, इंटरनेशनल ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी है, जिनका बहुत पूरे विश्व भर में जिसके आधार पे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, ऑडिटिंग होती है, IFAC, IFAC, कापा, CAPA कापा और SAFA सापा, ये तीनों जो इंटरनेशनल ग्लोबल बॉडी है, मैं बताते हुए हर्ष हो रहा है कि तीनों के फाउंडिंग मेंबर है, उसमें यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उसका एक सदस्य है। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अब उनका विश्वास जो यहाँ के सीए हैं उन पे रहना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए।
अब पहले क्या होता, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल लग जाता था। तो दोषी जो है उसको सजा तुरंत मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष है वो 6 साल, 5 साल क्यों इसके लिए अपना केस का इंतजार करे। इसके लिए सरकार ने सोचा है कि एक जो कमेटी है और डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म अनुशासन समिति है, उसमें सुधार लिया है। और इसलिए सुधार का मैं तारीफ भी करूंगा कि जो निर्दोष है उसको जल्दी न्याय मिल जाएगा, नहीं तो 6-7 साल उसको इंतजार करना पड़ता था। अब सेपरेट एक तरीके से डायरेक्टरेट, सेपरेट डायरेक्टोरेट होगा, 2 ज्वाइंट डायरेक्टर होंगे, वह जो केस आएगा उसको इवेल्युएट करेंगे, इस केस पे एक्शनेबल है कि नहीं एक्शनेबल है, वह निर्णय उसको तुरंत उसको कर लेंगे। और अगर वह एक्शनेबल है तब जाकर अनुशासन समिति के पास जाएगा, और वह भी समय रहते हुए 180 दिन में केस का निपटारा कर देगा। तो इससे कहीं बहुत बड़ा यह चेंज जो ले आया गया है, ये अच्छा ही है। इससे मुझको लगता है कि काफ़ी प्रोफेशन है, उस पर लोगों का और विश्वास बढ़ेगा। न आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा गया, होता तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा गया, लेकिन सोसाइटी का विश्वास उस पर उठता है। तो इसलिए यह अच्छा ही प्रोविजन है। इसके साथ साथ कुछ इसमें यूनिफॉर्मिटी ले आई गई है, जैसे कास्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, उनके जो है 4-4 साल के टर्म होते थे, तो अभी अमेंडमेंट करके इन सभी का जो है तीनों का 4-4 साल का टर्म रहेगा, जो काउंसिल के मेंबर होंगे। और उनका पहले 3 साल का टर्म था, तो अब 3 बार का टर्म था, अब 2 बार हो जाएगा। तो इसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। इस बिल में एक और अच्छी बात है, पहले क्या होता था, मेंबर्स की जब फीस बढ़ाई जाती थी और स्टूडेंट की भी अगर फीस की रिवीजन होती थी तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। और इस बिल के माध्यम से कहा गया है कि मेंबरशिप जो फीस है उसका इंक्रीज करने का अधिकार काउंसिल के पास ही रहेगा, वह काउंसिल उसके फीस के बारे में डिसीजन ले सकता है। और इसमें एक हमको और अच्छा दिख रहा है कि जो पेनाल्टी क्लाज है उसको बढ़ाया गया है। पहले पेनाल्टी जो थी बहुत कम थी, उस पेनाल्टी को अगर कोई दोषी है तो उस पर 10 लाख रुपए का पेनाल्टी लगाया जाएगा, और कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, 5 साल में लगातार ऑफेंस कर रहा है, तो उस पर 50 लाख का उस पर पेनाल्टी लगाया जाएगा। ये अच्छा कदम है, इससे लोग जो है थोड़ी कुछ लोग जो गलत करते हैं खौफ रहेगा और उनको सबक मिलेगा और वो ऐसा काम नहीं करेंगे। इसका भी अच्छा ही इसके लिए भी अच्छा ही इसमें मैं समर्थन करता हूं। और सेक्रेटरी जो इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी होता है उसको अधिक एम्पावर किया गया है। दैट इज आल्सो गुड मूव ऑफ द गवर्नमेंट कि वो CEO रहेगा, सो ही विल बी एबल टू टेक द डिसीजन टाइमली एंड अप्रोप्रिएटली, वो उसको डिसीजन को लेने का समय पे ले लेगा। और कुल मिलाकर के पूरे के पूरे जो भी अमेंडमेंट है वो उसकी सराहना करता हूँ। कुछ लोगों ने ज़रूर एप्रीहेंशन व्यक्त किया है, लेकिन वैसा वो सच नहीं है। लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा काम करो तो क्यों डरोगे। और दूसरी बात क्या है, कोई सीधे अनुशासन समिति में तो केस आ नहीं जाएगा, पहले केस का इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन के बाद अगर एक्शनेबल है कि नहीं है फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, और इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें गर्व है कि आज जो CA जो प्रोफेशन के लोग हैं वह ग्लोबल स्टैंडर्ड अभी नहीं, बहुत शुरू से उसको मानते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और वो ग्लोबली दे आर वेल अवेयर ऑफ। और इस प्रोफेशन के लोग भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे बैठे हैं। कई बैंकों के जो शुरू से लेके इस पोजीशन पे HDFC जैसे बैंक को ले जाने वाले भी CA थे, और इवन डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के भी अगर उसका डीन है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, तो वह भी CA है। और बहुत सारे ऐसे नाम हम बता सकते हैं, यहाँ तक कि 80% जो कंपनियां हैं, कंपनी के जो CFO हैं वो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, और इस बिल के माध्यम से अवश्य रूप से सोसाइटी में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए आगे बढ़े हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें भी इसका एक कुछ न कुछ जरूर योगदान आगे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद माननीय अरुण जी। माननीय अब्दुल वहाब जी, माननीय अब्दुल वहाब नॉट प्रेजेंट। माननीय विनय विश्वम जी।
an old saying. The one who pays the fiddler has the right to decide the tune also. It is applicable to everything nowadays. In the market-friendly days, when it became market fundamentalism in the country and the whole world, it is the moneyed people and the rich people that decide the character, the habit, activities of everything. Not only for the CAs, chartered accountants, even for the government bodies, for the government itself, it is the truth that they decide the tune. In that background, the move of the government to bring certain amendments and regulations in the matter of the chartered accountancy is to be viewed. There is a feeling that the professional character of the profession is going to be eroded by the involvement or intrusion of the government. The government is trying to put its hand on every activities of the chartered accountancy. It's mainly a professional task, and that professional character has to be upheld. I don't know, the present government or the bill would appreciate how much, to what extent, this basic necessity of the chartered accountancy. Sir, the Board of Discipline, the main controlling body of the whole profession, how it is going to be conducted and how it's going to be constituted. Majority of them seems to be are drawn from the profession. They are there, but only for namesake. Politicians and the government nominees are going to control it. That means the government wants to control everything. Every walks of life has to be run only by the government is not an appreciable approach that we can support. The same way, the bill talks about a disciplinary committee. Discipline to any profession is a must. Please conclude. We know it. But a professional task, a professional job should be judged by professionals only, not by politicians, not by bureaucrats. But the government wants to control that also. Thank that you. kind of, no sir, one sentence. This kind of overhandedness of the government is going to affect the profession in a very bad way. That's why I am. Thank you. I am constrained to oppose the bill. Thank you, Vinay Vishal ji. माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी. Sir, thank you, sir, for giving this opportunity to speak on these bills. At the outset, I raise my objection. The way of the bill has been presented. And sir, the proposed amendments in the present bill pertains to different statutes dealing and different with distinct institutes and was enacted in different years. In order to amend them, the government has brought single bill before the Parliament. The bill mainly focuses on the constituting disciplinary committees of 3 institutes. Sir, audit and accounting require highly specialized skills which are aligned to a common man, and if the majority of the bench members are laymen who are non-CAs, the decision can turn out to be based on expectations of public perception rather than merit. The government nominees in the present bench generally don't understand the intricacies of compliances with the standards of auditing, accounting standards, law governing the audit, either Companies Act or Income Tax Act or other statutes under the audit to carry it out. The conduct of the professionals should be judged by the professionals only. The National Medical Commission Act 2019 envisages a disciplinary mechanism for the failure of the doctors by the majority of the doctors. Similarly, the situation with the Bar Council of India established by the Parliament under Advocates Act 1961 and also Architects Act 1972. None of these bodies are confronted with the issue of conflict of interest. One can imagine a situation where the failure of a doctor is primarily judged by an engineer and vice versa. Can a lawyer's failure be judged by a chartered accountant? Why this vital, and that at the disciplinary committee level, the issue is judged based on the facts of the case and the larger question of law not settled at the initial level. Sir, the question of law largely taken up to the High Court
where the appeal against the decision of the disciplinary committee appellate authority lies. Therefore, it is essential that the failure of the professional should be judged by a professional who has got in-depth knowledge of the intricacies issue related to the profession and domain expertise. With these submissions, I request the Honourable Minister to consider these main important objections and make necessary changes in that. Thank you. Dr. Narendra Jadhav ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to wholeheartedly support this bill on Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants, and the Company Secretaries Amendment Bill 2022. The bill proposes to strengthen the disciplinary mechanism under the existing acts and provide for a time-bound program, time-bound disposal of cases against members of the three institutes. Sir, I commend the bill for prescribing timelines for completion of disciplinary proceedings involving misconduct by the members of the respective professions. The bill also empowers the three reputed councils to constitute multiple boards of discipline and disciplinary committees. However, the bill allows central government to nominate the same persons as presiding officer or members across different boards of discipline and disciplinary committees. This may be incompatible with the objective of speedy disposal of cases against some members. Sir, appointing the same set of people on multiple boards of discipline may prevent these entities from hearing cases of misconduct simultaneously, thereby leading to delay in disposal of cases. This may hinder speedy disposal of disciplinary cases. With these remarks, Deputy Chairman, sir, I commend the bill for passage wholeheartedly. Thank you. Thank you, Narendra Jadhav ji. Mani Abdul Wahab ji. Thank you very much. Regarding this bill, I appreciate our minister, but only thing is there is a constitute of some other committees. From 1948 itself, our company secretary and CSR, very famous in the world, in India also. But now outside agencies coming. That is the only thing I have to point out. The existing for disciplinary action, some other agencies coming. So it will dilute the quality of our company secretaries and what is happening today. I urge our minister to reduce the number of other government nominees and please don't give to outside agencies for the disciplinary actions. Thank you. Thank you. माननीय सुशील कुमार मोदी जी. महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों के अंदर 5 लाख से ज़्यादा कंपनियों का नाम कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्टर से हटाना पड़ा। केवल 2 साल में 17, 18 और 89 में 3,79,000 जो कंपनीज थी उनका नाम हटाना पड़ा और ये पाया गया कि ज़्यादातर कंपनियां बैंक फ्रॉड, चीटिंग, राउंड ट्रिपिंग, इन सारी चीज़ों के अंदर शामिल हैं और इन 5 लाख में करीब 2.38 लाख कंपनियां जो थी वो शेल कंपनियां थी। एक ही एड्रेस पर 100 कंपनियां हैं, एक ही और बड़ी संख्या में ऐसी कंपनीज थी जिनका ना कोई पता ठिकाना था, ना कोई इनकी जगह थी। तो सचिव महोदय, क्यों ये बिल लाना पड़ा, आप इसी से अंदाज कर सकते हैं। और इन सारी शेल कंपनियों के पीछे कहीं ना कहीं कोई सीए का दिमाग था, कहीं ना कोई सीए उसके अंदर शामिल था। इतना ही नहीं, सचिव महोदय, मैं पिछले दिनों ईडी अरेस्ट सीए इन हैदराबाद फॉर एडिंग शेल कंपनीज लाउंडर फंड्स टू हांगकांग, ईडी अरेस्ट दिल्ली सीए इन मनी लॉन्ड्रिंग केस linked to fertilizer scam. 8 chartered accountants arrested for GST fraud. Sati Mahoday, 16 for gambling arrested, 3 chartered accountants arrested.
CGST official and 2 CAs arrested on charge of extortion. सती महोदय, ये जो पिछले 5 साल के अंदर जो बड़े पैमाने पर ये पाया गया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो कहीं ना कहीं, और उसमें कुछ लोग हैं, वो सारे लोग नहीं है, कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की शेल कंपनी, इस प्रकार के और भ्रष्टाचार के खिलाफ में हैं, और इसलिए सरकार को मजबूरन इस बिल को लाना पड़ा है। सती महोदय, जैसा मेरे पूर्व के सदस्य ने कहा, हम उनकी परीक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, उनके एग्जाम में, उनके करिकुलम में, उनके रिजल्ट में, उनके लाइसेंस के अंदर, उन सारी चीज़ों में उनको स्वायत्तता है। केवल एक जगह जहां सरकार हस्तक्षेप नहीं बल्कि उसको मजबूत करना चाहती है, वह डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में। और मैं सदन को बताना चाहूँगा, अभी क्या थी स्थिति सती महोदय, 4 कमेटी है डिसिप्लिनरी कमेटी, और 3 के चेयरमैन कौन है? तो ICI के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 3 कमेटी के चेयरमैन हैं, और एक कमेटी के एक जोन के चेयरमैन कौन है? तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो 4थे जोन के डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन हैं। सती महोदय, तो इसीलिए चूंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो चेयरमैन होता है चुनाव जीत कर आता है, लाखों रुपया करोड़ रुपया खर्च होते तब वो चेयरमैन बनता है, और इसलिए वो अपने मेंबर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। और इसलिए पिछले वर्षों में पाया गया कि सैकड़ों की संख्या में केसेस पेंडिंग है, वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, दबा के रखा गया, फ्लिम्सी ग्राउंड पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया, यहाँ तक कि CBI, ED और सरकार ने जो कंप्लेन रेकमेंड किया था उस पर भी वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सती महोदय, जो लोग कहते हैं कि उनको एक्सपर्टाइज नहीं है, CA होना चाहिए, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो डायरेक्टर डिसिप्लिन का जो पोस्ट, डायरेक्टर डिसिप्लिन, वो CA होगा, और 22 लोग रहते हैं उसके अंदर कमेटी में, डायरेक्टोरेट में, उसमें 11 CA होंगे, और वही लोग पूरा केस तैयार करके और डायरेक्टोरेट के सामने प्रेजेंट करेंगे। और सती महोदय, जहाँ तक कमेटी की बात है, कंपोजिशन की बात है, केवल सरकार ने ये किया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो नॉन CA होगा। और सती महोदय, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कहते कि एक्सपर्टाइज नहीं है, कल डिसिप्लिनरी कमेटी का जो निर्णय होता था वो अपील में कहाँ जाता था? ट्रिब्यूनल में जाता था, वहाँ तो कोई CA नहीं है। ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, वहाँ तो कोई CA नहीं है। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ तो कोई CA नहीं है। तो सती महोदय, केवल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो विरोधाभास था, कन्फ्लिक्ट था, उसी को केवल दूर करने का प्रयास किया गया, और केवल ये कहा गया है कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो नॉन CA होगा। और पहले सरकार नॉमिनेट करती थी सती महोदय उसके मेंबर्स को, लेकिन अब सरकार नॉमिनेट नहीं करेगी, जो CA की काउंसिल है वो एक पैनल तैयार करेगी, और उसी पैनल में से सरकार जो नामों का चयन करेगी। तो जो राज्य केंद्र सरकार को नॉमिनेट करने का अधिकार था वो भी इसमें से समाप्त हो गया। आप पैनल बनाइए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, सरकार उसमें से चयन करेगी, आप मेंबर्स का पैनल बनाइए, सरकार उसमें से चयन करेगी। इसलिए सती महोदय, मुझे इसलिए इसमें कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं है सती महोदय। और फिर ले मेंबर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, तो कोई क्या वित्त मंत्री बनने के लिए और हार्वर्ड से पास होना जरूरी है क्या? या स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्या MBBS डॉक्टर हैं क्या? तो सती महोदय, एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन उस फील्ड का ज्ञान जरूर उसको होना चाहिए सती महोदय। तीसरी बात सती महोदय कि इसका जो फंड्स है, 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ICI के पास फंड इकट्ठा है, और इसे सरकार ने ये नहीं कहा कि उस फंड पर हम कोई उस फंड को लेने जा रहे हैं, केवल ये कहा कि जो CAG है वो CAG के जो ऑडिटर्स का पैनल है उसमें से आप नाम तय कीजिए, और आप जो नाम तय करेंगे वही ऑडिट करेगा, सरकार या CAG ऑडिट करने नहीं जा रही है। और सती महोदय, पिछले दिनों कई प्रकार के मामले आए, समय नहीं है, एक समय में IDBI का Tier 2 का जो बॉन्ड था उसमें करीब 800 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया गया, जो उसके रेगुलेशन के खिलाफ में था। बैंकों में पैसा जमा करने की होड़ मची रहती है, और लोगों को मालूम है कि अगर किसी बैंक में पैसा जमा करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलता है सती महोदय। तो सती महोदय, केवल जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया गया है। और सती महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, दुनिया के अधिकांश देशों में,
चाहे यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, साउथ अफ्रीका हो, दुनिया के सभी देशों के अंदर जो अकाउंटिंग जो संस्थाएं हैं, उनके जो डिसिप्लिनरी कमिटी है, उसके अंदर नॉन सीए जो हैं वही उसके मेंबर्स होते हैं, ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे, सेपरेशन ऑफ इलेक्टेड बॉडीज मेंबर्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसेस। अमेरिका में तो सबसे महोदय 56 बोर्ड्स है, यहाँ तो भारत में एक केवल आईसीआई है जो सीए की डिग्री प्रदान करता है। अमेरिका में 56 बोर्ड्स है और उस बोर्ड्स के जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो सरकार करती है। साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में अकाउंटेंट्स उसके 175 मेंबर हैं, 130 देशों के लोग उसके मेंबर हैं। उसकी अनुशंसा है कि डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर नॉन जो अकाउंटिंग के लोग हैं वही उसके मेंबर होना चाहिए, ताकि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर सके, और नहीं तो उस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण वो उसमें नहीं कर पाएंगे। सती महोदय, एक और विरोध किया जा रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी की क्या आवश्यकता है। सती महोदय, 3 संस्थान हैं और अगर तीनों 2000 में एक एमओयू साइन किया इन लोगों ने, और उस एमओयू में यह प्रावधान था कि मिलकर कोऑर्डिनेशन करेंगे। 16 साल हो गया, एक बैठक नहीं हुई, बैठक का एजेंडा पता नहीं, क्या निर्णय लिया गया। अब सरकार ने कहा कि तीनों जो संस्थाएं हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, जिसको प्रिजाइड करेंगे कंपनी सेक्रेटरीज के, जो कंपनी अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं, और तीनों संस्थाओं के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उसके मेंबर होंगे। इसमें क्या आपत्ति सती महोदय, इसका भी विरोध किया जा रहा है। और सती महोदय, जो एक सबसे महत्व की बात है, अभी तक केवल कार्रवाई करने का अधिकार था चार्टर्ड अकाउंटेंट पर, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है उन पर कार्रवाई करने का चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को अधिकार नहीं था। और ये सदन सत्यम स्कैंडल के बारे में जानता है, 7100 करोड़ से ज्यादा का आईटी का फ्रॉड हुआ था सती महोदय, और उसके बाद आईसीआई ने खुद जो है रेकमेंड किया कि जो कॉर्पोरेट जो फर्म्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के, उन पर भी कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाए। तो सती महोदय, इस बिल के द्वारा केवल मेंबर्स नहीं, अगर कोई मेंबर जो किसी फर्म का सदस्य है और लगातार 5 साल तक शिकायत अगर मिल रही है, तो वैसी स्थिति में अधिकतम 25 लाख रुपया तक उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसके मेंबर को या उसको डिबार किया जा सकता है। और सती महोदय, पहले कोई टाइमलाइन नहीं था कितने दिनों में प्रोसीडिंग पूरी होगी। अब इसमें प्रावधान किया गया है कि 365 दिनों के अंदर प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी। पहले प्रावधान था कि कोई भी विड्रॉ कर सकता है, आपने कंप्लेंट फाइल किया और मिल गए और कुछ अंडर हैंड डील हो गया, विड्रॉ कर लिया गया। अब इसमें प्रावधान किया गया कि कोई भी विड्रॉल कंप्लेंट नॉट परमिसिबल, कोई भी इसके अंदर कोई और इसको कंप्लेंट को विड्रॉ नहीं कर सकता है। और सती महोदय, पहले जो चेयरमैन था उसी को सेक्रेटरी का भी पावर था, सारे पावर्स चेयरमैन के पास थे। अब नया प्रावधान किया गया है कि जो प्रेसिडेंट होगा या चेयरमैन होगा और जो सेक्रेटरी होगा, दोनों के पावर के अंदर और विभाजन किया गया, दोनों के पावर को अलग अलग किया गया है। और सती महोदय, इतना ही नहीं तो साथ ही साथ मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा, जो NFRA बना है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तो अब उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो अनलिस्टेड कंपनीज है 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा जिनका टर्नओवर है, जो बैंक्स है, जो इंश्योरेंस है, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो NFRA और निर्धारित करेगी। इसलिए सती महोदय, मैं सदन के माध्यम से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी आश्वस्त करना चाहूँगा, बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, एक एक मेंबर के पास जाते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संघर्ष, जो ऐलान किया है, उसको परिणति तक पहुँचाने के लिए आवश्यक था कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो बॉडी है, इसके जो डिसिप्लिनरी, इसमें जो डिसिप्लिनरी कमिटी है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। और ऐसा नहीं सती महोदय कि सारे के सारे लोग गड़बड़ है। अभी मैं गया था अबू धाबी, एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल के अंदर, अबू धाबी में 800 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल अबू धाबी में, केवल दुबई के अंदर 1500 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। और जब कोई कहता है कि मैं CA हूँ, तो हमारी उसकी प्रतिष्ठा समाज के अंदर तुरंत बढ़ जाती है। IAS है, ये IPS है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अधिकांश चार्टर्ड अकाउंटेंट ईमानदारी से काम करते हैं। और जैसा PM ने कहा, ICI के सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा कि क्लाइंट के लिए काम मत करो,
देश के लिए काम करो। क्लाइंट के लिए काम करना अलग बात है और देश के लिए काम करना अलग बात है। इसलिए सभापति महोदय, मैं निर्मला सीतारमण जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनकी प्रेरणा से ये बिल इस सदन के अंदर आया है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इनकी ऑटोनॉमी को प्रभावित नहीं किया जाएगा। केवल जो गलत लोग हैं, जो मिसकंडक्ट करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं पर कार्रवाई करने के लिए इसके अंदर कड़े प्रावधान किए गए। धन्यवाद। धन्यवाद सुशील मोदी जी। माननीय मंत्री जी का रिप्लाई। Dhanyavad, sir. So I thank all the 21 honorable members who have participated in this discussion today. This is a very important step being taken. There is one bill which is now passed through the Lok Sabha, aiming to bring in certain amendments to the three acts, which are the Chartered Accountants Act, the Cost and Works Accountants, and the Company Secretaries Act. Amendments are being brought in through one legislation so that all the three can be brought in with the same kind of amendments. And that has been after good consultation with the legislative department, who have advised us that one amendment through one legislation, the three can be amended, because the objective is similar. Objective is also to bring all the three on par and strengthen all the three of them without in any way affecting the autonomy that they enjoy. Now, this is not done purely by discussions that have been held by the ministry. There has been a very well constituted committee, the Meenakshi Datta Ghosh Committee, which was formed in April 2017, and who submitted their report in September of 2017. And 2017, all the recommendations have been studied in detail, and in an era where self-regulatory model has already come into question, global best practices are very clearly saying this model probably cannot actually meet up with all the expectations professional bodies have to characterize themselves with, and therefore the Meenakshi Datta Committee has given a lot of inputs on how to make these more robust. Equally, sir, in the last 8 years, particularly when after Prime Minister Modi 2014 onwards started giving a lot of attention to the economy, particularly in supporting all sections which have the inclination towards becoming entrepreneurs, giving startup the ecosystem that they so require, and making sure that the startups ecosystem is not just a blessing for metropolitan cities. We also aligned ourselves with the tier 2, tier 3 cities where smaller entrepreneurs are also being addressed through financial inclusion and through the Stand Up program. Today is the day when Stand Up was launched several years ago in 2016 by Prime Minister Modi, and the Stand Up India together with Startup India show that companies today are eager to register themselves as LLPs, and many companies and LLPs have got incorporated in the last few years. And because these LLPs are bringing in a newer kind of environment, we also see that the requirement for regulating them also needs to be robust. So the country has witnessed rapid changes in the way in which the economy is now being profiled, and therefore, even with the Companies Act and even with the IBC, we need to see how the LLP can make these companies which are smaller, driven by individuals who have innovative ideas and who today are contributing to the Indian economy in a very big way. So at this time, the sanctity of the audited financial statement, which is where all the chartered accountants' role come into play, has got to be maintained, has got to be given its due position, and we need to have, therefore, audit and certification quality. We need to also have a favorable investment climate being brought in.
And therefore, a line which I said in the Lok Sabha, I like to repeat here. I recognize the importance of the three pillars, the chartered accountants, the cost accountants, and the company secretaries in the corporate governance structure. And if the corporate governance structure has really got to be robust to meet with the global investment expectations about our standards of audit, about our standards of investment policy, about how auditing certificates are being given, we need to have greater robustness brought in, and also a level of accountability brought in. Many members have made my explaining a bit lesser because they recognize that since after Satyam scandal, subsequently till 2013 when the ILFS scandal happened, we have repeatedly been questioned about the number of failing chartered accountants or chartered accountants who did not deliver as was the expectation through the letter and spirit of the Act needed to be acted upon. And in that, you find that over and over again, questions are being asked as to why wouldn't it be a more transparent process. With these concerns, a lot of consultations had been held, stakeholders have been repeatedly met, and also even a standing committee once earlier, sir, had gone through these issues, and at that time it was felt, and it was in fact recommended by the standing committee then, that we need to have a greater transparency in the mechanism. And that is where from that standing committee, we've had this voice for greater transparency to be brought in. Now, there was also a question as to why there should be only one act. Will it mean that the three institutions are now going to be governed by this one act? I would like to dispel any doubts that honourable members might have. Those three acts are there. They are going to continue. They will govern the functioning of the three institutions. But this one act, which is now going to have an impact on each of the three acts, is only to the limited extent of bringing in greater transparency in the disciplinary processes with which these institutions function. And therefore, the three institutes governed by their respective acts will continue to have the responsibility for the functions which have been with them always, whether it is for qualifying people, licensing people, regulation of their conduct. All this will continue to be with them. And even as regards students, sir, the institutes had earlier also full powers, and that shall not be interfered with. That will continue to be with them. So whether it is a question of thinking about increasing the fee or registration of members and even certification of practice, they are all now, as is before, as it was earlier, they continue to be, and this act has nothing to do with that at all. The council will have full powers to fix the fees and certifying the members. So there were references made to section 18 of the Act saying administering funds of the institutions. They will continue to be as per the provisions of section 18 of the Act. So there is no change at all in the composition of the councils responsible for the management of affairs of the institutes. The ICA has 40 members, 8 of them government nominees, 32 elected members. SI and the Institute of Cost Accountants of India, 5 government nominees and 15 elected members. The institutes, therefore, shall continue to function under overall control, guidance and supervision of their respective councils, which are as per their acts. So, therefore, sir, I just want to emphasize that in the proposed amendments, the council shall continue to constitute these bodies as per the existing practice. Government will not constitute them. That has to be, I would like to reiterate that point, that the government does not constitute these. There will also be no change in the number of members in these bodies. So I want to assure members that the proposal which are in the Act will have to be laid bare to understand it.
The coordination committee, about which a lot of members have spoken, it may be noted, sir, that the two other institutes, the cost accountants and the company secretaries of India, have not objected. In fact, the Chartered Accountants institution also in September of 2019 itself, under the chairmanship of the Secretary of Corporate Affairs, has also agreed in a meeting with the Secretary of Corporate Affairs in September 2019, agreed for the constitution of a coordination committee. So I don't think we should have any doubts if one of the institute has not supported and the other two have. All the three have, in fact, been in favor of forming the coordination committee. So I just want to highlight the fact, sir, that in the year 2000, in an MOU which was signed by the ICSI, which is the company secretaries, with the ICAI and the Cost Accountants Institution, a coordination committee was formed indeed. There was a coordination committee, but it has not even worked all right. So unless this new coordination committee is going to come into play, the old one being a point of reference where members have raised this question saying such a committee exists, why do you want a new one? It is only because the old one has not even taken off. It is important to understand also, sir, that this coordination committee is not a new idea at all, not only for the three institutions, but there are institutions like IIMs, Indian Institute of Management, which have a coordination committee. The IIIT has a coordination committee. In fact, even for those who were voiced concern, saying, why should a lay person be heading the committees? There should be a member who understands chartered accountancy. I'd like to say whether it is the NAFRA, which is the NFRA, or even the IIIT, sir. The IIIT's chairman is the minister himself. So none of their functioning has gotten affected negatively just because a non-professional member is being brought in. Globally, the conduct of chartered accountants who are auditors and public interest entities are regulated by independent authorities. That is what is happening with NAFRA also. The PCAOB of USA, the FRC in UK, the ASCI in Australia, the IRBA in South Africa, the CPAB in Canada are all headed by people who are not professional chartered accountants. So the National Financial Reporting Authority, the NAFRA, sir, which actually looks at public interest enterprises, many members did speak about it, are also dealing with these matters with non-members, with lay members. So their independence from the profession has not in any way undermined the decision making that they have been all the while engaging in. So, and also the proposed amendments are very much in line with the core principles which have been given by the Independent Audit Regulators, which is a global body, International Forum of Independent Audit Regulators, which is normally the body to which all the chartered accountants do refer for guidelines as regards best practices. And also the International Federation of Accountants, which also periodically gives independent, which is a non-governmental body, sir, it's an international body, that also gives a lot of these guidelines. The Institute of Chartered Accountants of India is a member of this International Federation of Accountants. So if they have given guidelines, why would they be in discord with the existing institution? The standing committee that I was referring to earlier, which had already gone through this matter in 2004-05, in its 11th report, sir, very clearly, which was given in 2003, said that it recommends strongly majority of lay members in the disciplinary board. And I like to put on the record a word, which is a paragraph which I'd like to take from that standing committee's report. And I quote, sir, the committee recommends that such a body should be headed by a person not below the rank of joint secretary belonging to the legislative service. 2 members should be from the council and 2 should be outside experts
from the field of law or accountancy, unquote. So the standing committee then in 2003 has actually looked into it and recommended similarly. Whether it is the UK, the USA or South Africa, and in particular the state California, have all got lay members, and the current standing committee has also gone through this bill, and therefore any suggestion that a select committee reference be made would be only superfluous because members of the Rajyasabha are also members in that standing committee which has actually looked into the details. The current standing committee gave it and then submitted in the Lok Sabha post which I have come here, sir. I am referring to 2003, but even now, the current standing committee has gone through it, not 2003, and 2003. So, I just wanted to therefore highlight one concern some members have referred to here, saying why should the status of an actionable complaint be already put up? Won't it hurt the cause because till it is proven that the person is guilty, why should you put it out? So putting the status of an actionable complaint, sir, in public domain or entering them in the register of members, many of them have also highlighted that, does not intend to victimize the member. On the contrary, the manner and the interval of putting out such information in public domain and entering it in the register of members shall be in accordance with the regulations framed by the council itself. So there's no way in which somebody is going to pick and choose, saying, choose to put this in public and not somebody else's name. So there is a system and a protocol decided by the council itself which will govern it. So, sir, the two institutes have not objected to putting out names such as this. So, largely, I think, sir, the points that have been raised by all the members have been addressed. I just want to underline the fact that it is a global best practices which have governed many of the features of this bill, which is now before us. It is necessary that we appreciate that without touching the independence of the autonomy of these institutions, we'd like to bring in these changes, sir. So I think largely the points which have been raised by the members have been addressed, and therefore I would think I appeal to all the members to kindly pass this as has come from the Lok Sabha, because this is with an intention of making the three institutions a lot more transparent in their disciplinary matters and raise the quality of the disciplinary processes. Above all, I think this would also facilitate India to be able to support institutions and firms which can be encouraged by the Council to create something similar to the Big Four, which we periodically talk about, but completely of Indian origin. If the quality and if their strengths are being encouraged through this, I would think it is possible sooner to have institutions of that size which can meet up with the global demands. Thank you very much, sir. Thank you, Honorable Minister. I shall now put the motion moved by Srimati Nirmala Sitharaman to vote. The question is that the Chartered Accountants, the Cost Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Announcement regarding notice of amendments. Honorable members, I have to inform that the Speaker Lok Sabha in the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha has treated certain consequential changes pertaining to the change of year from 2021 to 2022 as patent errors in clause 10, 25, 60 and 93. Accordingly, the relevant amendments proposed by Sri John Brittas, member at serial number 10, 57, 58, 108, 109, 159 and
160 have become infructuous and therefore are not to be moved. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are two amendments, number 2 and 3 by Sri John Britus. Are you moving? Okay. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There is one amendment, number 4 by Sri John Britas. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There is one amendment, number 5 by Sri John Britas. Sir, along with Suresh Prabhuji. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 5. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. There is one amendment, number 6 by Sri John Britas. I move, sir, again. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 6 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There is one amendment, number 7 by Sri John Britas. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There is one amendment, number 8 by Sri John Britas. Yes, sir. I am moving. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 8 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted. Clause 9 stands part of the bill. There are two amendments. Number 9 by Sri John Britas. Number 164 by Sri Vinay Viswamji. Amendments moved. I shall now put the amendment moved by Sri John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 9 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 is adopted. Clause 10 stands part of the bill. There is one amendment, number 11 by Sri John Britas. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 10 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 10 is adopted. Clause 1 stands part of the bill. There are two amendments, number 12 and 13 by Sri John Britas. I move, sir. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 11 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 11 is adopted.
Clause 12 stands part of the bill. There is favor. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 12 is adopted. Clause 13 stands part of the bill. There is one amendment, number 14 by Sri John Britas. I move, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 13 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 13 is adopted. Clause 14 stands part of the bill. There is one amendment, number 15 by Sri John Britas. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 14 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 14 is adopted. Clause 15 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 15 is adopted. Clause 16 stands part of the bill. There are two amendments, number 16 and 17 by Sri John Britas. I move, sir. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 16 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 16 is adopted. Clause 17 stands part of the bill. There are three amendments, number 18 to 20 by Sri John Britas. I move, sir. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 17 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 17 is adopted. Clause 18 stands part of the bill. There are two amendments. Number 21 by Sri John Britas. I move, sir. Number 165 by Sri Binay Vishwam. Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Sri John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Binay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 18 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 18 is adopted. Clause 19 stands part of the bill. There is one amendment, number 22 by Sri John Britas. I do move, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 19 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 19 is adopted. Clause 20 stands part of the bill. There is one amendment, number 166 by Sri Binay Vishwam. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 20 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 20 is adopted. Clause 21 stands part of the bill. There are three amendments, number 23 to 25 by Sri John Britas. I move, sir. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 21 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 21 is adopted. Clause 22 stands part of the bill. There are 17 amendments. Number 26 to 41 by Sri John Britas. I move, sir. Number 167 by Sri Binay Vishwam ji. Amendments moved. I shall
first put the amendments moved by Sri John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it, the amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Sri Binay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it, the amendment is negative. I shall now put clause 22 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 22 is adopted. Clause 23 stands part of the bill. There are 16 amendments. Number 42 to 56 by Sri John Britas. Number I move, sir. Number 168 by Sri Vinay Vishwamji. Amendments moved. I shall first put the amendments moved by Sri John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Division चाहिए I shall now put clause 23 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 23 is adopted. Clause 24 to 26 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 24 to 26 are adopted. Clause 27 stands part of the bill. There are two amendments, number 59 and 60 by Sri John Britas. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 27 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 27 is adopted. Clauses 28 to 41 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 28 to 41 are adopted. Clause 42 stands part of the bill. There is one amendment, number 61 by Sri John Britas. I move, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 42 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 42 is adopted. Clause 43 stands part of the bill. There is one amendment, number 62 by Sri John Britas. Sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 43 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 43 is adopted. Clause 44 stands part of the bill. There is one amendment, number 63 by Sri John Britas. I move, sir. Division चाहिए क्या? Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 44 to vote. Those in favor will please say aye. Please. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 44 is adopted. Clause 45 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 45 is adopted. Clause 46 stands part of the bill. There is one amendment, number 64 by Sri John Britas. I move, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 46 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 46 is adopted. Clauses 47 and 48 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 47 and 48 are adopted.
Clause 49 stands part of the bill. There is one amendment, number 65 by Sri John Britas. I do move, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 49 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 49 is adopted. Clause 50 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 50 is adopted. Clause 51 stands part of the bill. There are two amendments, number 66 and 67 by Sri John Britas. I move, sir. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 51 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 51 is adopted. Clause 52 stands part of the bill. There are three amendments. Number 68 to 70 by Sri John Britas. I move, sir, strongly. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 52 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 52 is adopted. Clause 53 stands part of the bill. There is one amendment, number 71 by Sri John Britas. To move, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 53 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 53 is adopted. Clause 54 stands part of the bill. There is one amendment, number 72 by Sri John Britas. I move, sir, strongly. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 54 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 54 is adopted. Clause 55 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 55 is adopted. Clause 56 stands part of the bill. There are four amendments, number 73 to 76 by Sri John Britas. I move very politely, sir. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 56 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 56 is adopted. Clause 57 stands part of the bill. There are 16 amendments. Number 77 to 92 by Sri John Britas. Move, sir. Strongly. Amendments very strongly. moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 57 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 57 is adopted. Clause 58 stands part of the bill. There are 15 amendments. Number 93 to 17 by Sri John Britas. Move, sir. 07. Number 93 to 107. Are you moving? Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 58 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 58 is adopted. Clauses 59 to 61 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 59 to 61 are adopted. Clause 62 stand part of the bill. There are two amendments, number
110 and 111 by Sri John Britas. I move, sir. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 62 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause 62 is adopted. Clauses 63 to 67 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 63 to 67 are adopted. Clause 68 stands part of the bill, though there is one amendment, number 112 by Sri John Britas. I do move, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 68 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 68 is adopted. Clauses 69 to 74 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 69 to 74 are adopted. Clause 75 stand part of the bill. There is one amendment, number 113 by Sri John Britas. I move, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 75 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 75 is adopted. Clause 76 stands part of the bill. There is one amendment, number 114 by Sri John Britas. Move, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 76 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 76 is adopted. Clause 77 stands part of the bill. There is one amendment, number 115 by Sri John Britas. I move, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 77 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 77 is adopted. Clause 78 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 78 is adopted. Clause 79 stands part of the bill. There is one amendment, number 116 by Sri John Britas. Since the minister has promised to review it later. Please, are you moving? I'm not moving. Are you moving? Not moving. I shall now put clause 79 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 79 is adopted. Clauses 80 and 81 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 80 and 81 are adopted. Clause 82 stands part of the bill. There is one amendment, number 117 by Sri John Britas. Are you moving or not? Further not moving because they are very tired. Please, be specific. Not moving. Not moving, sir. I shall now put clause 82 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 82 is adopted. Clause 83 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 83 is adopted. Clause 84 stands part of the bill. There are two amendments, number 118 and 119 by Sri John Britas. I shall now put clause 84 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 84 is adopted. Clause 85 stands part of the bill. There are three amendments. Number 120 to 122 by Sri John Britas. Not moving, sir.
I shall now put clause 85 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 85 is adopted. Clause 86 stands part of the bill. There is one amendment, number 123. John Britus, are you moving? I shall now put clause 86 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 86 is adopted. Clause 87 stands part of the bill. There is one amendment, number 124 by Sri John Britas. Moving, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 87 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 87 is adopted. Clause 88 stands part of the bill. There is those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 88 is adopted. Clause 89 stands part of the bill. There are three amendments. Number 125 to 127 by Sri John Britas. Moving, sir. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 89 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 89 is adopted. Clause 90 stands part of the bill. There are 16 amendments. Number 128 to 143 by Sri John Britas. Moving, sir. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 90 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 90 is adopted. Clause 91 stands part of the bill. There are 15 amendments. Number 144 to 158 by Sri John Britas. Move, sir. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 91 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 91 is adopted. Clauses 92 to 94 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 92 to 94 are adopted. Clause 95 stands part of the bill. There are two amendments. Number 161 and 162 by Sri John Britas. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 95 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 95 is adopted. Clauses 96 to 100 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 96 to 100 are adopted. Clause 101 stands part of the bill. There is one amendment, number 163 by Sri John Britas. Move, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 101 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 101 is adopted. Clauses 102 and 106 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 102 to 106 are adopted. Clause 1 stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by Sri John Britas. I move, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 1 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1 is adopted. The enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be passed. Sir, rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022. श्री आपके लेटर का जवाब जा माननीय प्लीज माननीय सदस्य प्लीज टेक योर सीट्स। मैं क्लियर करना चाहूंगा, माननीय संजय जी का पत्र मिला था, माननीय चेयरमैन के यहां से उनका जवाब भी गया। अभी एक पत्र चेयर को मिला हमारे सदस्य माननीय गोयल जी से। दोनों लोगों ने सवाल उठाया है कि बिल के इंट्रोडक्शन यहां नहीं हो सकता। दरअसल बिल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, यहां कंसिडरेशन और पासिंग के लिए आया है। प्लीज नंबर वन, मैं लेट मी कंप्लीट। नंबर सेकंड, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर वो हाउस तय करेगा। ये एस्टेब्लिश परंपरा है, जब से आपकी संसद काम कर रही है। देयर आर इन नंबर ऑफ रूलिंग्स, मैंने खुद इस पर डिटेल में रूलिंग दी है। रूलिंग से भरे पड़े हुए प्रेसिडेंट की हाउस तय करेगा, आप डिस्कशन से तय करेंगे, ये आपको स्वीकार करना है। और उसके लीगल स्क्रूटनी का आप सवाल उठाते हैं तो जुडिशरी तय करेगा, नॉट चेयर को अधिकार नहीं। श्री अमित शाह टू मूव नो परमिशन, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। श्री अमित शाह टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट 2022। उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। माननीय मंत्री जी बोलना चाहेंगे आप? जी, उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे चर्चा का यहाँ पर बिल पेश करने का मौका दिया है। महोदय, ये बिल जो मैं लेकर आया हूँ, ये राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एकीकरण के उद्देश्य से लाया गया बिल है। मान्यवर, दिल्ली का कुल क्षेत्र लगभग 1484 वर्ग किलोमीटर है। एनडीएमसी और दिल्ली कैंट को छोड़कर पूरे दिल्ली की सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी ये तीन नगर निगमों की है। और एनडीएमसी और कैंट के इलाकों को छोड़ देते हैं तो लगभग 1484 में से 1400 वर्ग किलोमीटर, लगभग 95% क्षेत्र, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम के ये तीन बांटे गए निगमों की है। लगभग 1,20,000 कर्मचारी ये सिविक सेवाओं की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। मैं ये इसलिए बताता हूं कि इसी से तीनों नगर निगमों का सुचारू रूप से काम करना कितना महत्वपूर्ण है वो स्पष्ट हो जाता है। राजधानी के अंदर ही राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास, ढेर सारे देशों के राजदूतों के निवास, उनके कार्यालय, और जब भी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश के आते हैं तो राजधानी की उनकी मुलाकात बहुत स्वाभाविक बनती है। उस स्थिति में राजधानी की सिविक सेवाओं का महत्व और बढ़ जाता है। वो सुचारू रूप से चालू रहे, वो नागरिकों के लिए, दिल्ली के नागरिकों के लिए और देश के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, इस संशोधन जो मैं लेकर आया हूं उस पर बाद में सभी सभासदों से इनके विचार सुनने के बाद मैं जवाब दूंगा। उसके पहले मैं इसका एक इतिहास बताना चाहता हूं। मान्यवर, 1883 से पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के तहत
ये नगर निगम काम करता था। 1957 में एक कानून के द्वारा दिल्ली का म्युनिसिपल प्रशासन एस्टैब्लिश किया गया। उसके अंदर 93, 1993 में और 2011 में इसको अमेंड किया गया और 2012 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन द्वारा दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम लाकर दिल्ली नगर निगम को 3 निगम निकायों में बांट दिया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। और बांटने के कारण को भी मैंने गृह मंत्रालय में बहुत खंगाला है, मगर किसी भी फाइल पर कोई कारण limited revenue gap of 2,200 crores just a year ago in these municipalities altogether. That is salary and other pension bill and other expenses of 8,940, their official figures, sir, minus earnings of 6,725 crores. Deficit is 2,200 crores. How will it be bridged by this bill? Is there a single provision in this bill, any policy which will improve this? So this is supposed to be a bill for improvement. Secondly, will he tell us how Own Finance Commission of the central government has recommended a devolution of 488 rupees per person per year for every municipality in India. 488 rupiya prati vyakti prati varsh. That comes, sir, for Delhi for the current year or year ago to 4,087 crores. Sir, did you as the central government give 4,087 crores to the municipality of Delhi? Never. If you check up, you gave to a lot of other municipalities. Not the full amount, but you gave, not to Delhi. Then, sir, it is estimated that if you add up what you have not given to the Delhi municipalities for the last 10 odd years, I'm only taking 10, 11 years, the amount is about 12,000 crores. And you are saying improvement? You are first starving somebody and then saying he should be a healthy, bonny child. You are giving him no water and food and you are saying that we are improving them. Sir, thirdly, have you said anything in this bill about why the municipal corporations tax for property tax only 4 lakh properties, whereas in Delhi the minimum count of properties taxable for property tax is 1.2 million. यानी 12 लाख, उसका 1/3, 4 लाख आप टैक्स करते हैं property tax. Have you, honorable movers of the bill, shown us that your own statement is that this bill will improve by garnishing an additional 200 crores. This is your own estimation. And the gap is 2,200 crores in 1 year. So is this an improvement bill? It is not an improvement bill. MCD, sir, we have to accept it. And I say it as a fact, when I started my law practice, we were told that DDA stood for Don't Do Anything Authority. It is much better if you go to their parks now. Sports parks are very good. Sir, if you call it MCD, the most corrupt department, MCD, that would not be a wrong acronym. Sir, if you put on the top of this bill photographs of the mountains of garbage, if you put on this photographs of this bill of the agony of the Aam Aadmi or the middle level person who goes to the office of MCD, then you will realize that this bill is nothing but political hypocrisy. Sir, मेरा तीसरा पहलू कि ये किसी प्रकार से सुधार का बिल नहीं है, ये राजनीतिक आडंबर से ओतप्रोत एक विलंब एवं बाधा डालने वाली चाल चली गई है। ये राजनीतिक भय से प्रेरित है। ये परोक्ष उद्देश्य इसका है जो स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। नाकामी और भ्रष्टाचार से बीजेपी ने एमसीडी का क्या कर दिया है हाल। नाकामी और भ्रष्टाचार से बीजेपी ने क्या कर दिया है एमसीडी का हाल। यदि एकीकरण करना ही था तो क्यों लगा दिए 7 साल या 10 साल? इसका कोई जवाब नहीं है। जिस दिन प्रदेश के चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि इस वक्त इस दिन हम घोषणा करने वाले हैं चुनाव के, उसके एक दिन पहले किस विशेष दुष्प्रभाव से आपने उनको एक और घोषणा करवा दी कि हम स्थगित करते हैं सब कुछ।
क्या इसलिए क्योंकि मान्यवर क्या इसलिए मान्यवर कि आपने हर संस्था पर सफलता से दुष्प्रभाव करने की पीएचडी करी हुई है? और मैं कहता हूं कि धिक्कार है ऐसी संस्थाओं के और उनके अध्यक्षों के जो इस दुष्प्रभाव पर ध्यान देते हैं या उसके आधार पर एक्ट करते हैं। सर, 272 से 250 करने का औचित्य क्या है जो आपने किया है? इसमें क्या तो हो सकता है? क्या ये जो जादुई बटन है कि 272 से 250 करना एक यात्रा है कुशासन से सुशासन की तरफ, कि 72 को आपने 250 कर दिया? तो इसका उद्देश्य एक ही है। अगर आपने 2 सीट भी कम की होती तो डिलिमिटेशन की आवश्यकता होती, और डिलिमिटेशन का मतलब है विलंब, बाधा। तो क्या यह राजनीतिक आडंबर नहीं है? किस रूप से 272 से 250 बनाने से एक जादुई छड़ी से ये पूरा एमसीडी अगर एकाकीकरण भी हो गया तो भी सुधार हो जाएगी, हमको नहीं बताया जा रहा है। सर, हमारी नहीं सुनते हैं तो कम से कम संविधान की सुन लीजिए, और उच्चतम न्यायालय ने जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विषय में कहा था उनकी सुन लीजिए। ये तो विशेष है, गुजरात से है, अहमदाबाद है। जहां तक अनुच्छेद 243U का सवाल है, जरा उसको उठा के पढ़ लें। मैं कोट कर रहा हूं, एवरी म्युनिसिपैलिटी अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ब्रॉट इन 93, 74th amendment. Every municipal corporation unless sooner dissolved shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer. और दूसरा, ये तो डिसोल्यूशन का है, आपका केस डिसोल्यूशन का नहीं है। दूसरा, an election to constitute a municipality shall be completed before the expiry of its duration specified above. ये सीधा लागू है। आपने जिस दिन घोषणा कर रहे थे चुनाव के कार्यक्रम की, उस दिन आपने ये घोषणा करवा दी। और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। एक्सपायरी है तो आपको उसकी एक्सपायरी या इसकी तारीख शायद मई में है, उसके पहले आपको घोषणा चुनाव करना पड़ता है। नंबर 6, जैसा मैंने कहा संविधान नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम उच्चतम न्यायालय को तो पढ़ लीजिए। 2006 में एक निर्णय है किशन सिंह तोमर, जो निर्णय है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विषय में, और उसमें कहा है कि ये 243U जो मैंने पढ़ा है, ये प्रावधान उच्चतम न्यायालय ने कहा है ये इसलिए बनाया गया है कि विलंब को हटाने के लिए बनाया गया है। संविधान में चुनाव नहीं होते थे एमसीडी में, उनको करवाने के लिए बनाया गया है। और फिर कहा कि एक ही अपवाद होता है इसका, कोई गंभीर और व्यापक प्राकृतिक विपदा, प्राकृतिक विकृति, और फिर उसके आगे का है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, भूकंप, कोई बहुत बड़ी बाढ़ इत्यादि, और ये भी व्यापक और गंभीर होने चाहिए। एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड, कोट अनकोट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव टू हैव इलेक्शंस ऑन टाइम। आप ये कर रहे हैं। मान्यवर, आप सब जानते हैं कि आप 243U को संशोधित नहीं कर रहे हैं, न कर सकते हैं आसानी से। आप ये भी जानते हैं कि 7 वर्ष से आपने पुनर्निर्माण करने का, या 10 वर्ष से एमसीडीज में कोई काम नहीं किया। आप ये भी जानते हैं कि आपने एकाकीकरण का नाम भी नहीं लिया इतने सालों से। इसलिए आपने चुनाव के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये जादुई छड़ी घुमा दी। ये क्या राजनीतिक आडंबर नहीं है जो मेरा तीसरा हेड है? मुझे याद आता है बाबा साहब ने, अंबेडकर साहब ने जो लिखा था एक बड़ी फेमस किताब, ग्रामर ऑफ एनार्की, एंड आई कोट, सर, आई डू फील हाउएवर good a constitution may be, it is sure to turn out to be bad, because those who are called to work it happen to be a bad lot, unquote. क्या आप इतिहास के बैड लॉट में जाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेवार सरकार नहीं चाहेगी। एमसीडी का एकाकीकरण तो सब सिर्फ बहाना है। दरअसल भाजपा को खुद की एंटी इनकम्बेंसी से बचाना है। इसलिए ये गलत नहीं होगा अगर आप इसको बीएनपी पार्टी कहें, भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय नियंत्रण पार्टी, कंट्रोल फ्रीक पार्टी। येन केन प्रकारेण किसी तरह से सत्ता में रहना है, संविधान का हनन हो या न हो। सर, माय 4th and last facet, it is legally untenable. Why, sir? We give the highest importance to decentralization. We give, in fact, decentralization is another name for federalism. Sir, 1 second aside, it's very interesting. The word federalism or federal
is not used anywhere in our constitution, which is the world's second or third largest constitution. There is a word federal used for federal court, but not federalism as you संघीय ढांचे की बात नहीं है कहीं भी, not a single word. And yet it is interesting that without using federalism or the word federal, the Supreme Court has held federalism to be part of our basic structure. Basic structure means that if you buy a constitutional amendment, take away federalism, you can't do it even then. Now, sir, I am asking this question that Parliament enacts 9 for panchayats, 9A for municipalities in 93 by the 73rd and 74th amendments. It gives a huge impetus for decentralization, local self-governance, pursuant to the LM Singhvi report on this issue. Para after para, 2018 judgment of the Supreme Court, Constitution Bench, 5 judges. I don't have the time to read you the paras. I'll give you the para numbers, those who are interested, 49, 52, 54, 56. They say, I'm quoting, the main purpose of representative government is to represent the public will, perception and the popular sentiment, unquote. Then they say, representative democracy, it is necessary that elected reps develop a sense of belonging with the constituents. Sir, by contrast, have you not driven a coach and 4 through this? Have you not decimated the spirit and the letter of Part 9 and 9A of the Constitution? You are governing Delhi's municipalities, the bottom level. Delhi has no panchayats as such, it's an urban. So the lowest level of governance, you are governing with a hukumnama from Delhi, farman from a distant emperor, with no regard to ground realities of decentralized governance. You are excluding the government, whosoever the government may be of Delhi, from participatory governance. And then, sir, why I said legally untenable, there is a very nice clause here in this bill you have got, sir. 2B, 2 bracket B. It says government everywhere shall mean central government. मैंने कहा था control freak, याद है आपको? Control freak सरकार. Central government, and you know this clause which you have put says it applies to 19 provisions I counted. It says this government used in 19 provisions shall mean central government. 3A, 5, 55, 56, 193, कौन से प्रावधान हैं? These are those provisions, sir, which provide for creation and division of wards, creation and division of zones, complete control over the commissioner, his own salaries, loans, general superintendence regarding building plans. These are words of government there. आपने कहा सब जगह उसको central government पढ़िए. This is decentralization. This is part 9 and 9A of the 74th, 73rd Constitutional Amendment. This is devolution of powers. And sir, before you abuse the late lamented Sheila Dikshit, remember, there was an India which was born and thought and acted before the BJP came to power. There was an India which born and thought and acted. This trifurcation, most people have not noticed this. The Balakrishnan committee recommended trifurcation in 1987, sir. जो आप जिसको knee jerk reaction समझते हैं किसी सरकार का, in 1980, I'm sorry, not 1987, 1989, the Balakrishnan committee. Then a Virendra Prakash committee recommended in its report of February 2001 splitting into 4 corporations. Then in 2011, a group of ministers of the central government recommended splitting into 5. That may be right or wrong, but it was not a knee-jerk reaction, and it has stood the test of time. Sir, my time is limited. Let me wind up by saying, with all these background, the statement of objects of this bill uses almost Alice in Wonderland language. It's long on rhetoric and short on substance. I've given you the amount of money you have deprived and starved the MCDs of. I've given you the fact that all municipalities require central government funds. And yet, what your SOR, your statement of objects says, after roughly 10 years of your governance in the MCDs or 8 years, you are the people there. You are able to say with a straight face in the SOR of this bill, which you are asked to pass, I quote, there was a huge gap in resources available to 3 corporations. And then you say, this gap has widened, increasing the financial difficulties of the MCD. ये तो बड़ी एलिस इन वंडरलैंड बात है कि केंद्र सरकार भी आपकी है, MCD में भी आप हैं. फाइनेंस कमीशन कहता है कि 488 रुपीस पर पर्सन पर ईयर देना है. सर, जस्ट 1 मिनट मोर. देयरफॉर आई वुड से विद रिस्पेक्ट कि ये बात गलत नहीं है कि हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम.
आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। Sir, when you talk of 272 to 250, delimitation, election postponement, do you talk of the corruption in the NCD under your watch? Do you talk of the mountains of garbage? Do you talk of the annual 2,200 crore deficit? Do you talk of the non-remittance of the central government funds? You don't talk of any of this. Where is the improvement going to be? By just making a jadui chhadi of 272 to 250 or saying trifurcation into unification. Therefore, I can only quote the words immortalized by the late lamented Sushma Swaraj. And I end with that, sir. Tu idhar udhar ki baat na kar, ye bata de kafila kyon luta. Tu idhar udhar ki baat na kar, ye bata de kafila kyon luta. हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबारी का सवाल है. Thank you very much. डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। माननीय उपसभापति महोदय, आज मैं यहाँ माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत एमसीडी एकीकरण बिल के ऊपर समर्थन में खड़ा हुआ हूं। देखिए, हम एकीकरण के पक्ष में हैं, वो विभाजन के पक्ष में हैं, तो हम सदैव अखंडता के पक्ष में रहते हैं, वो खंडता के पक्ष में रहते हैं। ये तो हमारे उनके बीच की सोच का एक सतत अंतर है। अभी हमारे विद्वान मित्र आपस में बात न करें प्लीज। डॉक्टर सिंघवी जी, who is a very learned legal luminary, and in a very intellectually loaded initial speech, he has used certain words: suspect, incompetence, control freak, chaos, political blunder. मुझे ऐसा लगा कि शायद ये शब्दों का समायोजन उन्होंने जो भी किया हो, ये मूल रूप से कहीं उनकी पार्टी के भाव से आ रहे थे। मुझे लगा कि अगर यह समायोजन किया जाए, that an incompetent suspect in an penchant for uncontrolled, to have a full control, committed a political blunder and plunged the party into chaos. तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहां मैं एक बिंदु और ध्यान दिलाना चाहता हूं, उपसभापति महोदय, आज 5 अप्रैल है। आज के दिन का एक महत्व है। आज से 11 साल पहले यही 4 और 5 अप्रैल के समय अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। दिल्ली की राजनीति में उसका बड़ा महत्वपूर्ण महत्व था, क्योंकि हमारे जो 2 प्रमुख विपक्षी दल हैं, एक के लिए जो कांग्रेस पार्टी थी, उनके लिए वो खलनायक थे जिन्हें जेल में भेजा जा सकता था। दूसरी पार्टी जो आज दिल्ली में सत्ता में है, उनके लिए वो गुरु थे, प्रेरणा के स्रोत थे, पितृ पुरुष थे, पर उन्हें बरगलाया जा सकता था, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि उन्हें बरगलाया जा सकता था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों ने ही गुरु माना। आपकी पार्टी में एक थे जो बहुत गुरु गुरु कहते थे, उन्होंने आपको निपटा दिया, और इधर जो गुरु के चेले थे, उन्होंने गुरु को निपटा दिया। एक हिंदी में कहावत है, नाम तो किसी का लिया नहीं, प्लीज उपसभापति महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपका जो समय होगा इतना ही बोल सकते हैं। कहावत है, जो समय जिसका उसी के अनुसार एक हिंदी में कहावत है कि गुरु गुड़े रह गए, चेला शक्कर हुई गए, तो वो यहां पर दिखाई पड़ती है। हमने नाम किसी का नहीं लिया है, समझने वाले समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। अब यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर जो इन्होंने बात कही, इस एकीकरण के 3 डायमेंशन हैं जो इस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। एक संवैधानिक है, एक व्यवहारिक है और एक राजनीतिक है। संवैधानिक दृष्टि से अभी बहुत सी बातें अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कही, तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जब लोकसभा में जब इसका उत्तर दिया, तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि संविधान प्रदत्त व्यवस्था के द्वारा ही इसमें यह परिवर्तन किया जा रहा है। संविधान के जिन अनुच्छेदों का वो उल्लेख करते हैं, 246 और 256, वो तो पूर्ण राज्यों पर लागू होते हैं। दिल्ली के संदर्भ में संविधान की धारा 239AA बहुत स्पष्ट है, और मैं सदन के सुलभ संज्ञान के लिए यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द आर्टिकल 239AA स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली क्लियर कट कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम इनैक्टिंग एट एनी टाइम
any law with respect to the same matter, including a law adding to, amending to, varying to, opening, repealing the law so made by the legislative assembly. तो ये संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत जो संसद को प्रदत्त अधिकार है, उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने यह काम किया है। और इतना ही नहीं, जो लोग आज ये कहते हैं कि सरकार को अधिकार नहीं होना चाहिए, वही लोग जनवरी 2016 में जब हाई कोर्ट ने यह पूछा था कि एमसीडी किसके हाथ में है, इसलिए मैं कोर्ट का वो उदाहरण भी कोट करना चाहता हूं। इन जनवरी 2016 when the high court asked who controls the municipal corporation of Delhi, अब समझिए राज्य सरकार क्या जवाब देती है। दिल्ली गवर्नमेंट in response said that the MCD did not come under it, but if court directs they are willing to take over the control of the corporation. यानी वो स्वयं तो कह रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, मगर हमारी इच्छा है कि यह मेरे अंडर में आ जाए, ये कोर्ट के सामने वो व्यक्त कर रहे हैं। जहां तक उपराज्यपाल के अधिकारों की बात है, तो 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो एक्ट बना था, उसी के अनुसार राज्यपाल को जो प्रदत्त अधिकार हैं, जो कांग्रेस शासन के समय में मिले थे, उसी के अनुसार हमारी सरकार ने काम किया है। और वो अधिकार एक बार रिव्यू भी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रिव्यू होने के बाद उन अधिकारों की जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वेटिंग हुई है, और उसके द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल या एलजी को यह अधिकार प्राप्त है। अब सभापति महोदय, प्रश्न यह होता है कि अधिकार तो किसी को प्राप्त होते हैं, तो वो करता क्या है। इनको अधिकार प्राप्त थे, गृह मंत्री जी ने अभी संकेत किया कि क्या किया था, मगर हमें अधिकार प्राप्त हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए 36 लाख बेसहारा लोगों को, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को स्थायी मकान देने का काम किया। और न्यायालय और संवैधानिक प्रावधानों के प्रति कितनी ईमानदारी है, यह इस बात से पता चलता है कि उसी न्यायालय ने जब यह कहा कि वित्त आयोग का गठन सरकार करेगी और उसके द्वारा निर्धारित पैसा एमसीडी को मिलेगा, मगर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी 2012-13 में चौथे वित्त आयोग ने 11,323 करोड़ रुपए एमसीडी को देने की संस्तुति की, परंतु वो उन्होंने नहीं दिया। और आज जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, इसके स्वयं के वित्त आयोग ने यह संस्तुति की कि 40,500 करोड़ रुपए निकायों को चलाने के लिए देने चाहिए। वो तो छोड़िए, सदन में यह प्रस्ताव किया कि हम इतना नहीं देंगे, हम 17,000 करोड़ रुपए देंगे, परंतु जब देने की बात आई तो 6,129 करोड़ रुपए मात्र दिए। इसीलिए गृह मंत्री जी ने उस शब्द का प्रयोग किया था कि एक सौतेला व्यवहार एमसीडी के द्वारा राज्य सरकार के साथ किया गया। और इतना ही नहीं, जब यह विषय हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार ने स्वयं अपने वित्त आयोग से जो निर्धारित किया है राशि, वह उन्हें देनी चाहिए। उस हाई कोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने लिखा, वी अकॉर्डिंगली अलाउ दिस एप्लीकेशन टू डायरेक्ट द जीएनसीटी to release the current financial year, the remaining amount due towards the BTA to the 3 corporations on the basis of their own revised estimate presented in the budget for the year 21-22. यानी हाई कोर्ट ने यह कहा कि आपने अपने बजट में जो प्रावधान किया है कम से कम उसके अनुसार कर दीजिए, परंतु इसके बावजूद भी पैसा नहीं दिया गया, केवल 674 करोड़ रुपए दिया गया। और फिर उसके बाद संवैधानिकता की जो लोग बात करते हैं, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने सीएए को लेकर अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किए, वो संवैधानिक था क्या? क्या विदेश संबंधी किसी विषय के ऊपर कोई विधानसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है? अभी एमसीडी को लेकर बात कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, क्या राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित किसी एक्ट के विरुद्ध एमसीडीज को अधिकार है अपने सदन में पारित करने का? नहीं। तो जिन लोगों ने संविधान का माखौल उड़ाया, वो आज संवैधानिकता की बात करते हैं, तो इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य होता। हां, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब किसी लॉ को पास होने की बात होती है, तो अभी हाल के दिनों में एक बड़ी मजेदार बात हुई। फार्म लॉ है, किसान संबंधी कानून, सबसे पहले जिस राज्य की विधानसभा ने उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया वो थी पंजाब, और वो साफ हो गए। और गलती से ही सही, जिस विधानसभा ने सबसे पहले उसके समर्थन में पारित कर दिया था, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, वो पंजाब में छा गए। तो अब आप सोचिए कि कई बार आप सोचते हैं कि आपने जो लॉ पारित किया है वो क्या किया है, वो सही या गलत, चुनाव का विषय भी इन्होंने इससे जोड़ने का प्रयास किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुझे ऐसा लगता है चुनावों में उन्होंने एक अप्रतिम काम किया है। शायद चुनाव आयोग ने जो उनको चुनाव चिन्ह दिया है वो बड़ा उपयुक्त दिया है। या तो वो झाड़ू फेर देते हैं
या झाड़ू फिरवा लेते हैं, बीच की कोई स्थिति नहीं रहती है। जैसे पंजाब में उन्होंने झाड़ू फेर दिया, मगर गोवा में 39 में 35 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में 70 में 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। दोनों जगह उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट की भी जमानत जब्त हो गई। और उत्तर प्रदेश में तो जितनी सीटों पे लड़े सब पे जमानत ही नहीं जब्त हुई। उपसभापति महोदय, 0.35% वोट मिला, जो नोटा से भी कम था। तो मुझे यह लगता है, अरे भाई, चुनाव का विषय बिल के संदर्भ में इनकी पार्टी के द्वारा लाया गया है। प्लीज संजय जी, माननीय संजय जी, प्लीज। देखिए, बिल्कुल हम बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनके चुनाव का विषय इनकी पार्टी की तरफ से लाया गया है कि आप चुनाव को टाल रहे हैं। चुनाव शब्द इनकी पार्टी के द्वारा लाया गया, हमारे द्वारा नहीं लाया गया, इसलिए मैं चुनाव शब्द पे जवाब दे रहा हूं। क्योंकि हकीकत क्या है कि लगता है उत्तर प्रदेश में सपा बसपा पर तो बुलडोजर चला, इन पे तो वैक्यूम क्लीनर चल गया, एकदम पता नहीं कहां पे जो रह गए थे वो भी निकल के बाहर आ गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने एकीकरण का यह प्रयास किया है तो क्यों किया। आज भारत दुनिया की एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति है। हमारी राष्ट्रीय राजधानी में हम शायद कोई और उदाहरण हमारे विद्वान सदस्य बताएं, क्या दुनिया में कोई दूसरा देश है जिसकी राष्ट्रीय राजधानी में कोई एक मेयर नहीं है? हमारे यहां 3 मेयर। कभी अगर आवश्यकता पड़े तो दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होगा? मैं कांग्रेस के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 2007 का वर्ष था, यूनाइटेड नेशंस में दिल्ली के मेयर के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए गए, तब हमारी पार्टी की मेयर थी। प्रणब मुखर्जी जी भी वहां उपस्थित थे, चिदम्बरम जी वहां उपस्थित थे, बान की मून जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल थे वो भी वहां उपस्थित थे, और दिल्ली ने अपना प्रेजेंटेशन किया। आज आपने ऐसी स्थिति बना दी कि अगर दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी प्रतिनिधित्व करना हो तो वो संभव ही नहीं था। और 2 MCD तो ऐसी बनाई थी कि उनके लिए तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जाकर स्थापित होने की संभावना ही बहुत कम थी। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं गृह मंत्री जी को कि अब तीनों का एकीकरण करके भारत की वैश्विक क्षमता के अनुरूप दिल्ली का भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त किया है। अब मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जो डिवीजन हुआ है उसमें संसाधनों का कैसा असंतुलित विभाजन हुआ, जिसका कि संकेत गृह मंत्री जी ने अभी दिया, इसका मैं सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूं कि ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 80% से अधिक क्षेत्र या तो अनऑथोराइज्ड या अनप्लान्ड एरिया में है, जहां से रेवेन्यू का बहुत ही कम सोर्स आता है। तो एक ऐसा क्षेत्र बन गया जिसके पास बहुत कम राजस्व आएगा, तो उसके लिए सस्टेन करना ही मुश्किल है। दूसरी तरफ नॉर्थ MCD में लगभग सभी बड़े प्रमुख जो MCD के हॉस्पिटल थे, 5 हॉस्पिटल्स आ गए, तो उनको कैपिटल रेवेन्यू बहुत उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, जबकि उनके पास उसके उपयुक्त आय का स्रोत नहीं है। क्योंकि जब एक दिल्ली थी तो यह विचार करके नहीं बनाया गया था कि ये हॉस्पिटल्स भी अलग अलग क्षेत्र में होने चाहिए और यह भी अलग अलग क्षेत्र में होने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, और देखिए टैक्स पेयर्स की ढंग से देखें तो ईस्ट दिल्ली में टैक्स पेयर्स की संख्या है 2,88,000, नॉर्थ में है 3,35,000 और साउथ में है 4,75,000। अब ये तो संख्या है, पर गुणवत्ता के आधार पर देखेंगे, संख्या के आधार पर देखेंगे, राशि के आधार पर देखेंगे तो उसमें साउथ दिल्ली की स्थिति बहुत बेहतर नजर आती है। इसलिए संसाधनों का एक बहुत असंतुलित डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसकी वजह से यह समस्या और बढ़ती चली गई। और उसमें फिर जब राज्य सरकार के द्वारा न्याय नहीं किया गया तो यह भी आप देखिए, दिल्ली का 1 साल का बजट 75,800 करोड़, MCD के लिए संस्तुति 40,500 करोड़ और आवंटन 6,129 करोड़। बस यह संख्या अपने आप में पर्याप्त है बताने के लिए कि MCD के लिए किस प्रकार का न्याय किया गया और क्यों MCD के एकीकरण की आज आवश्यकता थी। मैं इसलिए तुलना करना चाहता हूं, यदि दिल्ली की MCD की तुलना हो सकती है तो BMC से हो सकती है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका कि बजट 46,000 करोड़ रुपए का है। इसीलिए उसके अनुपात में 40,500 करोड़ रुपए का बजट युक्तिसंगत लगता है। परंतु 6,000 जब दिया जाएगा तो आप सोचिए कि कितनी मुश्किल होती है। परंतु उसके बाद भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि MCD ने इस विपरीत परिस्थितियों में भी 2020 में जहां 7.2 लाख बच्चे एनरोल्ड थे तो 22 में 8.70 लाख हुए और 47 नए विद्यालय भी खुले। दूसरी तरफ जो दिल्ली की राज्य सरकार है, स्वयं उसने जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस उनके साथ संबंध है, उसमें करीब 12 कॉलेज हैं, उसके लिए उन्होंने लिख के भेजा कि हमारे पास संसाधन आर्थिक कम पड़ रहे हैं,
हमारे लिए यहां पर सैलरी देना संभव नहीं है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज थे, और स्वयं इतना कम इन्होंने संसाधन दिए, इसके बावजूद एमसीडी ने बहुत अच्छे ढंग से उन विद्यालयों का संचालन किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। फिर चाहे दिल्ली के सौंदर्यीकरण का सारा भार एमसीडी के ऊपर हो, 15,000 पार्क हो, 3,700 पार्कों में झूले, 5,82,000 एलईडी लाइट्स लगाई गई, सारा सौंदर्यीकरण हुआ। कोविड के दौरान छतरपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल भी बना जिसका उद्घाटन गृह मंत्री जी ने किया था। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया, जैसे मार्केट में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट इत्यादि बनाने का भी काम उस समय सरकार के द्वारा किया गया। भले ही दूसरी तरफ किस प्रकार की व्यवस्था थी अलग बात है। दिल्ली जल बोर्ड जो पहले 10 साल पहले प्रॉफिट में था, आज हजारों करोड़ रुपए के, लगभग 57,000 करोड़ रुपए के घाटे में है, वो अपने आप में एक अलग विषय था। तीसरी बात यह थी कि एक ही प्रकार की चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पैराफर्नेलिया बहुत ज्यादा होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। 22 विभाग थे, 66 हो गए, 3 मेयर हो गए, 3 कमिश्नर हो गए, 3 विभाग, 3 गाड़ियां और अनेक प्रकार का जो सरकारी पैराफर्नेलिया होता है वो बढ़ता चला गया, जिसके कारण दिल्ली की जनता पर 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अधिभार बन रहा था, जिसको सरकार ने समाप्त करने का काम किया। एकीकरण होने से काम भी बेहतर होगा। और काम का उदाहरण देते हैं, अगर डीसीपी के 12 जोन्स हैं और वो यथावत काम कर रहे थे, तो यदि पुलिस के जोन उसी हिसाब से काम कर रहे थे तो प्रशासनिक जोन भी उसी ढंग से काम कर सकते थे, तो दिल्ली की जनता से ये 150 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अधिभार की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहां पर मैं ये भी कोट करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने 2006 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट को उसका अध्यक्ष बनाया था। दिसंबर 2020 में उन्होंने लिखा that it was the biggest mistake of then government to break the municipal corporation, which has led to the situation today. He said that his committee has recommended to the then union government, yani 2006 mein, and the Delhi government that MCD of the Delhi was not easily divisible and that its division could bring the multiple problems including the geographical challenges and the inequitable distribution of the resources. तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी सरकारों ने भी जो समितियां बनाई थी उनमें भी जो व्यावसायिक आपको सजेशन मिला था वो पूरी तरीके से आपने उसको नहीं माना, इसीलिए यह विभेदपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी तरफ इशारा किया गया कि एक नहीं अनेकों स्ट्राइक हुई। 2021 में म्युनिसिपल स्टाफ ने जो स्ट्राइक की उसमें 10 डिफरेंट ओकेजन पे लगभग 7 मिलियन वर्क आवर्स का लॉस हुआ, और जनवरी 6 से 21 के बीच में 52,000 इंप्लॉइज इन्वॉल्व हुए, और 52,000 इंप्लॉइज का इन्वॉल्व होना अभी तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक्स में से एक शुमार किया जाता है। दिसंबर 2020 में मेयर्स ने हंगर स्ट्राइक की मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के बाहर बैठकर। अक्टूबर 2019 में 260 टीचरों ने जाकर स्कूल के सामने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने प्रोटेस्ट किया। 2018 में अगर आप देखें तो सैनिटेशन वर्कर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा। यह कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि किस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया था, और जो एमसीडी का ड्यू था वो नहीं मिल पा रहा था, और स्ट्राइक लगातार हुई जनवरी 2017 में, जनवरी 2016 में, जनवरी 2015 में, परंतु किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि जो पार्टियां थी वो तो, जो पार्टी दिल्ली में थी वो तो नई राजनीति की प्रतीक थी। उनका कहना था नई राजनीति है, तो वो नई राजनीति के प्रणेता थे, तो नई राजनीति पे वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। और उनकी नई राजनीति की जो पूरी कथा है 11 वर्ष की, हम ये नहीं कहना चाहते, एक ही पंक्ति में अगर कह दूं तो पहले कहते थे राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। फिर कहते थे सारी संसद और विधानसभा के लिए बड़ा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करते थे, असंसदीय होने के कारण मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, वहां भी आ गए, उसके सिरमौर भी बन गए। शीला दीक्षित जी के लिए अभी हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी तो बोल रहे थे, पर वो भूल गए कि सारे ऑटो के बाहर 2013 में बेईमान जैसा शब्द लिखा हुआ। कहते थे हमारे पास तो सैकड़ों करोड़ की, सैकड़ों पन्नों की बुक है, और जब हम लोगों ने कहा कार्रवाई करो तो कहते सबूत ला के दीजिए। ये एक नई राजनीति थी। फिर कहा ना भाजपा समर्थन लेंगे ना कांग्रेस से लेंगे, फिर लिखित में समर्थन मांगा। फिर कहते थे जन लोकपाल लाएंगे, जन लोकपाल तो छोड़िए, अपनी पार्टी में एक लोकपाल थे उनके एडमिरल साहब, उनको भी समाप्त कर दिया। फिर कहते थे सीएम आवास नहीं लेंगे, वो भी लिया, सुरक्षा नहीं लेंगे, वो भी लिया, अब वो वैगन आर कार भी नजर नहीं आती है, और चार्टर्ड प्लेन की भी आवश्यकता पड़ी। कोई बात नहीं, कहते थे नो वीआईपी कल्चर। याद करिए 2015 में 26 जनवरी का दिन, जिस दिन बराक ओबामा आए थे, उस दिन बाकायदा उनकी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जो वीआईपी सीट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसका अर्थ यह हो गया। फिर इतना ही नहीं, बिहार में जाकर राजद और अन्य दलों के साथ वो खड़े हुए जाके, प्लीज प्लीज, हाँ जी बिल्कुल हो रही है मान्यवर, अरे और
अरे इतना नहीं, सुनिए तो प्लीज प्लीज बिल्कुल आप सुनाइएगा जनाब सुधांशु जी, अरे हमारे माननीय सदस्य प्लीज नई राजनीति के प्रणेता हमारे माननीय सदस्य लोग भी पार्टी ने जाकर उत्तर प्रदेश में सपा से भी गठबंधन करने का प्रयास किया। उनकी जो भी आपत्ति है मान्यवर बिल ऑनरेबल मेंबर एड्रेस द चेयर को एड्रेस करें। माननीय सुधांशु जी, कहना एड्रेस चाहता को चेयर को एड्रेस करें। माननीय सभापति महोदय, ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे कि हम नई राजनीति लाएंगे, वो आकर कैसे 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 रूप बदलते हुए कहां तक पहुंच गए। तो ये अन्यथा न ले, तो इनके लिए कहना चाहता हूं एक बिंदु कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बल खाई जाती है। तो ये बल खाते चले गए और ऐसा बल खाए कि इन्होंने एक नई राजनीति ये जरूर शुरू की कि पहले कहा एक दूसरे पे कि हम मानहानि का केस आरोप लगा देते थे, फिर माफी मांगते थे। हमारे नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी से भी माफी मांग चुके, नितिन गडकरी जी से भी माफी मांग चुके, औरों से भी किया। तो ये एक नई राजनीति जरूर है। ये मैं मानता हूं कि इन्होंने इस मामले में एक नई राजनीति का सूत्रपात करने में जरूर सफलता हासिल की। मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं, जब बिल के विषय में ये बात हो रही थी तो किस प्रकार का सरकार का संवेदनशील रवैया है, मैं ईमानदारी से पूछता हूं, यह बताइए, इनके मुख्यमंत्री महोदय शायद समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे पढ़े लिखे आईआईटी ग्रेजुएट हैं, पर वो क्या कहते वैक्सीन का फार्मूला सबको बांट दो। अरे भाई, कोई चूरन है जो सबको बांट देना चाहिए? ऐसी अव्यवहारिक बात मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता और नेत्री और चाहे आम आदमी पार्टी के नेता, इन्होंने अप्रैल 2021 में कहा बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया गया। इतनी छलपूर्ण राजनीति, उस समय तो पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था और सब ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे कि बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया गया। ये इस बात का प्रमाण है। और फिर इस ढंग की अव्यवहारिक बात कहते हैं, प्लीज इस ढंग की अव्यवहारिक बात माननीय सुधांशु जी ऑन द बिल। हाँ, इस ढंग की अव्यवहारिक बात कहते सभापति महोदय, प्लीज कोई सामान्य व्यक्ति कहे तो बात समझ में आती है। संजय जी यूट्यूब पे डाल दो, प्लीज संजय जी, अब वो प्लीज संजय जी, पे डाल दो। सुधांशु जी, इस ढंग की जो फिल्मों को डालने की यूट्यूब पे बात कहते हैं, एक बहुत ही हल्की बात लगती है। अब सुनिए, अरे भाई आगे बात तो सुनिए। प्लीज सुधांशु जी एड्रेस द चेयर। अब मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने जिस प्रकार की अव्यवस्था की, मैंने कोविड के दौर का क्यों जिक्र किया, हाई कोर्ट में लोग गए और हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोविड के दौरान जिस प्रकार की अव्यवस्था थी, मई 2021 का मैं हाई कोर्ट का कोर्ट बता रहा हूं, जब उसने कहा कि व्हाट इज द यूज ऑफ मोहल्ला क्लिनिक, इट इज द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, इफ यू मेड दिस infrastructure, what's the worth if it cannot be used for the purpose of dealing during the pandemic, जिसको ये सबसे बड़ा अपना महत्व मानते थे। फिर हाई कोर्ट ने दूसरी भी बात कही कि what is the point of having more beds when there are no sufficient doctors। ये दोनों टिप्पणियां हाई कोर्ट की इस बात के लिए प्रमाण है कि एक तरफ एमसीडी के डॉक्टर्स, एमसीडी के नर्स, एमसीडी का स्टाफ, एमसीडी के सफाई कर्मचारी कम वेतन मिलने की समस्याओं के बावजूद निरंतर उस दौर में काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो ये कर रहे थे उसमें इनकी जो वस्तुस्थिति थी साफ नजर आ रही थी। अब मैं कहना चाहता हूं, हमारे विरोधियों को चाहे लगेगा कि वो ये कह रहे हैं कि विषय के ऊपर, वन सेकंड, विच रूल, विषय के ऊपर डाइवर्ट होने की बात 238 which point? 238 which one? A, B, C, D, E, which one? Sir, a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending, make a personal charge against a member, use offensive expression about the conduct or proceeding of the House or any state legislature, reflect or any determination of the Council except on a motion for rescinding it, reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantiated motion drawn in paper terms. So this point need to be expunged, sir. This We'll point examine. need to be expunged. अब मैं आगे बताना चाहता हूं, देखिए टिप्पणी सुनना भी कितना कठिन प्रतीत होता है सभापति महोदय, यह इस बात को दर्शाता है। कोई बात नहीं, देखिए ये किस बात को दर्शाता है सभापति महोदय, बिल पे आते। जी बिल्कुल, नहीं अब मैं इस विषय पे भी आ रहा हूं। सारे बिंदु मैंने बिंदुवार गिनाए हैं, ये डर को दर्शाता है। प्लीज सभापति महोदय, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने लिया। नाउ लेट्स लिसन प्लीज, आई हैव अलाउड योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। सभापति महोदय, ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते थे कि हम डर गए, और अब
यदि कोर्ट की टिप्पणियों का विषय आए तो कौन डर रहा है या साफ नजर आता है। मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि जब इस विषय के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वयं यह बात बोली है, एमसीडी के संदर्भ में, प्लीज एमसीडी के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि डर गए, इसलिए मैं इस विषय के संदर्भ में ही बोल रहा हूं, क्योंकि यह डर का संदर्भ उनके द्वारा लाया गया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, हम डरेंगे? जो 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब वहां श्रीनगर में गए, प्राण दे दिए, उस समय नहीं डरे। सन 66 में गोरक्षा आंदोलन में गोलियां चलाई इंदिरा जी की सरकार में, तब नहीं डरे। आपातकाल के भयंकर दुर्धर्ष दौर में हम नहीं डरे। बोफोर्स के समय में 400 की मेजॉरिटी लेके जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब नहीं डरे। 92 में हमारी 3 सरकारें अकारण बर्खास्त कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिए गए, तब हम नहीं डरे। जिस जमाने में झूठे केस लगाए गए हिंदू आतंकवाद के, तब नहीं डरे। श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बेवजह के केसेस लगाकर उनके ऊपर फंदे कसने का प्रयास किया गया, गृह मंत्री जी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए गए, हम तब नहीं डरे। तो ये कह रहे हैं कि इनसे डरने की बात है। हम तो उस परंपरा के प्रतीक हैं जिसे मैं कहना चाहूंगा हम अकेले थे और आगे बढ़ते रहे, नहीं डरे। जिसे मैं कहना चाहूंगा कि अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। चिरवृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। मगर मैं यह बताना चाहता हूं, हमें डर नहीं है, हमें पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि इस दिल्ली के अंदर एमसीडी के कर्मचारियों को उनका रिक्विजिट ड्यू नहीं मिले, उस बात की पीड़ा है। हमें पीड़ा इस बात की है कि यहां पर 20,000 कश्मीरी हिंदू रहते हैं और उनकी पीड़ा को लेकर एक खिलखिलाहट जब वहां सुनाई पड़ती है तो वो हमारे दिल में पीड़ा उत्पन्न करती है। हमारे दिल में यह पीड़ा यह होती है कि जो पार्टी सत्ता में है, एमसीडी में जिसके काउंसलर अनेक प्रकार के रिश्वत के आरोपों से भी हैं, अनेक प्रकार के आरोप लगे हैं। एमसीडी के ही इनके काउंसलर थे जिसके ऊपर दंगे में इतना बड़ा आरोप लगा था, जिनके की छत के ऊपर हथियारों का जखीरा निकला था, उसके लिए दिल में बड़ी मोहब्बत है। इनके नेता ने बोला था शाहीन बाग हमारे दिल में है, उनके लिए रहमत है। मौलवियों का भत्ता 10,000 से 18,000 होना चाहिए, उसके लिए दिल में रहमत है। इन्होंने कहा सहायकों का 10,000 होना चाहिए, उसके लिए रहमत है। मगर एमसीडी के लोगों को सैलरी देने के लिए दिल में हिकारत है। सीनियर मेंबर सुधांशु जी कंक्लूड करें, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। सभापति महोदय, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, उन सब के लिए दिल में रहमत है। और एमसीडी के सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, उनकी तनख्वाह देने के लिए आपके दिल में रहमत नहीं है, उनके लिए वो आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं आपको अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, हकीकत में जानते हैं भय क्या है? ठीक है, किसी को थोड़ा विषयांतर लग सकता है, परंतु ये दिल्ली अब बदल रही है और दिल्ली बदल रही है तो बदलने वालों को शायद वो बदलना स्वीकार नहीं हो रहा है। मैं यहां पर यदि पूछूं, इस दिल्ली में अंतिम भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान हुए थे। शायद हम में से भी बहुत कम लोगों को पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान जी के पिता का नाम क्या था, शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोगों को पता होगा। वैसे जो बिल प्रोड्यूस किया है तो माननीय गृह मंत्री जी को तो इसकी अच्छी जानकारी मुझे व्यक्तिगत चर्चा से भी पता है। मगर इसी दिल्ली में बैठकर हम में से किसी से पूछा जाए, चाहे वो दक्षिण भारत का क्यों ना हो, कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, तो पूरी की पूरी वंशावली पता होती। दिल्ली की यह सोच अब बदल रही है। महरौली का जहां पर स्तंभ हमारा खड़ा हुआ है, बगल में कुतुब मीनार है, हमारी मेट्रोलॉजिकल एक्सीलेंस का प्रतीक दिल्ली में खड़ा है, उसको प्रतीक न मानकर किसी ऐसी चीज का प्रतीक जिसके बारे में जहां से कहा जाता आए थे पता नहीं वहां तो कोई खंभा भी बना था कि नहीं कभी, ये पता नहीं है, परंतु उसको प्रतीक मानते हैं। यह भय है कि अब दिल्ली अपने वास्तविक स्वरूप में उभर कर सामने ना आने पाए। दिल्ली भारत का केंद्र है और भारत की चेतना का वह स्वरूप उभर कर ना सामने आने पाए, वह भय है। इस भय के लिए मैं अंत में सिर्फ अटल जी की उस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं जिसमें दिल्ली का उल्लेख है। अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सुनिए तो मैं बता रहा हूं, आपका भय उसमें सामने आ जाएगा। उस पंक्ति उनकी मैं 4 पंक्तियां कहकर अपना विषय समाप्त करता हूं। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश,
जगती का करके सर्वनाश कब चाहा कर लूं निज विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। आपने शरणागतों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था सीए में। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो यह साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में, हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बस ये इनका असली भय है, परंतु वह भय इनका रहने दीजिए, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू श्री जवाहर सरकार जी। श्री जवाहर सरकार जी। Thank you, sir. We have heard a lot of talk about rising above politics, but for the last half an hour, all I heard was a level of politics that would rather suit the Delhi Legislative Assembly more. I respect it more than this House. Be that as it may, sir, we have risen because we are duty-bound to stand up for federalism, for the spirit of federalism that holds this country together in spite of whatever some temporary occupants of power may think they have. This country has essentially survived on the spirit of heterogeneity. Do not go in for homogeneity, do not go in for trampling, do not go in for one-way decisions. The very decision that you have taken or about to take or about asking us to endorse is one that speaks of control. My former speaker, Mr. Singhvi, has already mentioned about these things. In 2011, after several discussions, 3 bodies were trifurcated out of the Municipal Corporation of Delhi. Okay? You know that, I know that. Now, you say the Honorable Home Minister, who has introduced the topic of not speaking on politics only, mentions that they have a revenue deficit. Fair enough. So if one has a revenue deficit of 2, the other has a revenue deficit of 3, the third has a revenue deficit of 4, if you add them together, you get -2, -3, -4, -9. Where do you get the positive from? Administration has been my occupation. So I would note that just the mere reunification of 3 disparate bodies that were split for an administrative reason does not confer ipso facto any virtue of revenue stability. That's my first point. The second, I would say, is it's a question of compactness of administration. Do I take this as a hint that you would not go in for splitting of unwieldy states? You would not go in for splitting of unwieldy administration? That you are back to control through large unwieldy bodies, unmanageable bodies? You can provide the answer. Talking of size, the Kolkata Municipal Corporation, the Mumbai Municipal Corporation are larger in size, but we have managed. We are managing. So don't bring in size there. The sum and substance of what I have understood is that you desire to postpone elections. That's all. Because once you go in for a step like this, it will go in for a delimitation, and that delimitation will take you 18 months. And therefore, effectively, you are bringing a municipal issue to a national issue, because exactly 2 years from today, we'll be facing a national consensus, a national referendum. So please do not drag, for the sake of retaining power, I would submit that we do not break down every institution that we have just for the retention of power. When we talk about it, I mentioned about one institution, the Director of Local Bodies. The present Act has a Director of Local Bodies as some sort of an overwatch. In the amendment, you are wiping out the post of Director of Local Bodies without explanation. Even on revenue, you have not provided an explanation, just a one-liner saying that revenue is deficit. So I would submit, sir, don't go in, even if you have to tamper with institutions, please go in for an explanation as to why you did away with it. Maybe you have some valid reasons, but we need to be more elaborate, more transparent. There is this talk that 272 seats would be compacted into 250. Section 3, subsection 5 mentions that the central government will decide the number of seats to be decided by the government of India. The overwhelming presence of a government, of the central government in the Delhi Municipal Corporation Act
is unbearably omnipresent. It's there everywhere. It does not speak. The spirit of local body is autonomy. Autonomy is spontaneity, is vibrancy of local decision making, not thrusting down from the top. This is what hurts us. This is what hurts us, and my party sincerely believes in it. Now, having spoken on the number of seats, as I said, it is not 250. Let's come out openly and said, tomorrow if the central government decides to make it 370, it can make it. You are keeping that empowering provisions. Sir, we are in 2022 when there has been so much talk of the scourge, the curse of scavenging and waste disposal. Not a single word. Oh, no, I will not say that. There's been one word on scavenging. That's all. Scavenging and waste disposal should have occupied, because this act, the spirit of this act would be copied in other parts of India. And you should have provided a model, even if you had political compulsion for going in for it. Nothing about scavenging, nothing about the curse of scavenging. You have provided for e-governance. E-governance, sir, will be happening anyway, whether you provide for it or not. Now, when you merge all these bodies, what happens is you bring in different cadres. They're humans, they're families. When you bring them together, all this seniority and juniority and other things get in. Morale gets affected, motivations get affected. Don't, like when you are amalgamating banks, you don't know, it will take you 10 years for issues to be sorted out. Honorable member mentioned about 12,000 crores. My account says that there is an 11,800 crore running deficit. That is what is required, a bailout package for whoever runs the government. It doesn't matter. It's for the citizens of Delhi, in spite of all the faults that it has. The total liability is 11,800 crores. When will the revenue, when will the package come? Is it tied to this pact? Is it tied to this deal? That is what we'd like to know. I repeat, we got up primarily because the Delhi Assembly was not consulted. My party sincerely believes in consultation with every elected body at every level. We may take their opinion or not, but we need to consult them. This sort of complete unilateralism, let me give you just a few examples because they strengthen what we have said. Even in COVID, an act that we had prepared, I was also part of the preparation once upon a time, the act, the NDMA Act, was brought in as if it was an enabling, it was a weapon that could be utilized for the totalization of power. That is not the correct attitude. The initial faltering that we made, the mistakes that we made as a nation arises from the mentality of control freak, as somebody put it. Even in COVID, there was no consultation at all when the lockout, when the lockdown was imposed. At every level, every step shows an arrogance, if I may put it, shows an uncaring attitude for the sensitivities of others, for regions, for states, as if just a pack of people running in Delhi, including bureaucrats, would determine the fate of every mohalla of Delhi. No, sir, this will not do. When the BSF rules were extended to all states, no consultation was made. That was another. Draconian laws and draconian regulations are sought to be expanded at the expense of at the contraction of the space available for the individual, for society, local government and state government. That is my submission. And that is my submission. Even the ED, the Enforcement Directorate and the CBI are regularly used to weaponize, to summon, to humiliate and to hegemonize over others. It's happening all the time. Now, even in Delhi, I would submit. Please conclude, Delhi honourable member. Amendment. Please conclude. I'll just half a minute. I'll wrap it up. The submission that I have felt as an outsider to this politics of Delhi is that this is only a ploy to postpone the elections, and that is dependent upon the prospects of their victory or not. Do not treat the national capital as just a trump card in your politics. I oppose the bill, sir. Thank you. Honorable Shri R.S. Bharti ji. Honorable Vice Chairman, sir, thank you for giving this opportunity. At the outset, on behalf of DMK,
I want to oppose this bill, sir. This is undemocratic, as rightly pointed out by my previous speaker, Mr. Singhvi. He has rightly pointed out what are all the illegal acts that this government is trying to do by unifying these three municipal corporations. I would like to ask the government, you apply one rule to Kashmir and Jammu and Kashmir, there you separate. You bifurcate. Here you are uniform. What is your policy? I want to know that. There, for your convenience, you gave so many explanations for bifurcation of Kashmir and Jammu. Here, you are giving lame excuse because you want to postpone the elections. Everybody knows that. What were you doing all these 5 years? You were in power from 2014, you are sitting here. What prevented you from bringing this bill 2 years back? Why were you sleeping? Because of the Punjab result and the other states result, Uttar Pradesh also, you did not fare well. Therefore, you have no confidence in your people. Therefore, you want, with an ulterior motive, the only motive is to postpone the elections. You say you want to increase the strength of the parliament members to 1,000. But whereas in this bill you say from 272 you want to bring it to 250. What is the logic, sir? So, you want to create some lacunas in this bill and give room for people to go to the court and stay the bill such that elections will be postponed further. Therefore, I would request the Honorable Home Minister said that stepmotherly treatment is done by the local government. Can I point out the central government and say that what is the central government doing? What applies to Gujarat should apply to Tamil Nadu also. What applies to Gujarat should apply to Kerala also. What applies to Gujarat should apply to West Bengal also. What applies to Telangana to Gujarat should apply to Telangana also. What applies to Gujarat should apply also to Andhra Pradesh. Sir, Tamil Nadu was suffering. Our Chief Minister appealed to you. Your team visited and saw the floods and the so many disasters that was caused to Tamil Nadu. But did you come forward to give the amount claimed by the state government of Tamil Nadu, sir? No. What you gave to Gujarat comparatively, you say. Therefore, this is not a valid reason. Because the state government is giving a stepmotherly treatment to one of the reasons stated by Home Minister is not acceptable. Therefore, I would request the Honorable Home Minister to withdraw this bill and conduct the elections to the local body at the earliest, because in democracy, and moreover since I have been a municipal chairman for more than 2 decades, continuously 4 terms in Alandur, I know what is the difficulties the people will face once there is no municipalities. From the cradle to the grave, everything is to be taken care of by the local bodies. Local bodies should be given powers. But this government, central government, is trying to accept power after all the powers you want to take away from the states. Education you have taken. Now you want to take away the registration also. So state governments are going to become more or less a municipality, and municipalities are going to be still worse. So therefore, sir, I would urge upon the Honorable Home Minister to withdraw the bill and to pave way for early conduction of elections in Delhi, sir. Thank you. माननीय श्री प्रसन्नाचार्य जी. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, many doubts are being raised about the constitutionality of the bill. Sir, I'm not an expert in the Constitution as Manu Singhvi ji is. But whatever little knowledge I have about the Constitution and whatever I know, the power and authority that has been granted to the state of Delhi with the Constitution is not at par with other states. And sir, I think
under Article 239A, 3B of the Constitution, I think constitutionally the central government has the competency, has the authority, and has the jurisdiction to bring such a bill. So I'm not going to question the constitutionality of the bill, sir. But my only doubt or only question is about the propriety of getting such a bill. Because, sir, Government of India is a big thing, it is not a small thing. And Government of India has many responsibility to discharge. They have to eradicate poverty of the country. They have to improve the GDP of the country. They have to take care of security of the country, the border of the country. So a lot of greater responsibilities are to the central government. So I, as a layman, fail to understand what is the necessity of the central government being taking over directly or indirectly the responsibility, the charge of a municipality. It is a bigger municipality, sir. That is my only question. And the second thing is, but constitutionally, as per the constitutional provisions are concerned, the central government has every competency to bring such a law. And if any doubt is there, any question is there about constitutionally, the court of law is there, sir. They are the final authority to take a decision about the constitutionality of the bill, because in the past, many laws that have been passed in this house or in the parliament has also been checked. Law is the final authority to decide. Sir, one thing I do not understand, our argument is after the trifurcation of the corporation, the financial condition, the situation went worse and worse. And there was imbalance in collection of revenue and streamlining the expenditure between the three corporations. But whatever figure I have got with me is, before trifurcation also, before 2011, when it was one corporation, the financial condition of the corporation was not very sound. Sir, if my information is correct, there was a deficit when it was unified corporation of around rupees 2,451 crore when it was a unified corporation. So I don't think there is any logic in saying that after trifurcation, the financial condition went wrong, and after unified again, it will go right. So therefore, sir, we have to streamline the revenue collection and streamline the expenditure, sir. Sir, Sudhanshu Trivedi was very rightly pointing out, even the Delhi State Finance Commission recommendation was not implemented by the Delhi government. The Delhi, if my informations are correct, the Delhi, the fourth and fifth State Finance Commission recommendation, the fourth Delhi Finance Commission had recommended for 100% reimbursement on education sector, but the Delhi government did not implement that recommendation. I do not know why. So we accuse each other about doing politics in all these affairs, but I think none of us are above these politics. Sir, moreover, sir, likewise, sir, the fifth Delhi Finance Commission recommended to give 40,561 crore to the three corporations, but the Delhi government sanctioned only 7,000 crore. So how can we streamline the corporation? So either you bifurcate it, either you trifurcate it, or you unify it. Unless and until you streamline the revenue collection and streamline the expenditure, you are not going to solve the problem. Sir, one interesting thing I will cite here for your and for the particularly for the attention of the Honorable Home Minister, sir. Sir, the fees or rates of revenue collection prescribed in the old schedule in the DMC Act of 1957 are surprisingly still continuing. I will cite only one example. For example, there is a theatre tax, cinema hall tax. For each show, the cinema authority has to pay a tax to the corporation. And in 1957 Act, the tax rate in the 14th schedule of the DMC Act was only 10 rupees per show. About 65 years before, it was 10 rupees per show, and today also it is 10 rupees per show. Very surprising and amusing. So how can we expect the revenue collection of the corporation, whether it is a unified corporation or whether it is a trifurcated corporation, will go up, sir? So therefore, sir, all these things has to be taken into consideration. And I think there is no mention in the bill about who will fund now. Now the power has been taken over by the central government. Funding will be made by the state government. I find a contradiction in this.
So there is no provision in the bill about where from the corporation will get the funding, the subsidies, the assistance. I think the Honorable Home Minister, while replying, will clarify that one also. Sir, one important thing is that Honorable Home Minister was rightly pointing out, there are more than 1 lakh employees in the 3 corporations. It is 1.25 lakh employees, sir, and many of those employees are not regular employees. Even after completion of service of 5 years, 10 years, 15 years or 20 years, the employee services are not being regularized. There are doctors, they are temporary. There are paramedical staff, they are temporary. There are primary teachers under the corporation, they are temporary. And during the last COVID time, the corporation doctors of the 3 corporations, they rendered beautiful services. And I know few of the doctors, they succumbed to death while putting their services. But they didn't get any benefit as the regular employees are getting. So how can we expect better service from these employees? So my urge to the government is, I do not know whether the central government will do it or the state government will do it or the Public Service Commission will do it. All such employees who have rendered services for more than 10 years, 15 years, 20 years, they are still suffering in the corporation, all the 3 corporations, they should be regularized. At least for once they should be regularized for once for all, so that the services of the corporation, the employees will go up. And my last point is, sir, I was going through one provision, just half a minute, sir, about the scavengers. The present bill provides for omission of section 388 of the Main Act, which provides that any scavenger or sweeper has to give a 15 days notice if he wants to quit the job. This was the earlier provision. Now in this bill, the provision is being omitted. I do not understand the logic. Because scavenging and this cleaning service is very essential service. And sir, all of a sudden, if one scavenger, one employee who is giving such service stops working without notice to the authorities, there will be a chaotic situation. So I do not understand why this provision is being omitted from this bill, sir. With this, sir, though I have expressed many doubts, and I hope the Honorable Home Minister will clarify no doubt, because the corporation is going to be unified. It is a very good proposal. We support it. My party support it, but with one condition: let us not defer the election of the corporation on any pretext, sir. I know. I want to know from the Honorable Minister whether on what basis, on this basis of which censor the delimitation work is going to be conducted. Whether it is on the basis of the 2011 census or it is on the basis of the ongoing census. If you are going to do it on the basis of the ongoing census, then election will be delayed for minimum 1 year time. So therefore my proposition is, let us do it on the basis of the 2011 census, so that as quickly as possible election can be held and power can be handed over to the local representative of Delhi. Thank you very much. Thank you. The next speaker is Ayodhya Rami Reddy. Please. Thank you. No. You are nobody to ask a clarification from him. Please. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity to speak on the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022. Sir, the municipal governance in Delhi has been inefficient ever since the Congress-led Delhi government split the Delhi Municipal Corporation into 3 separate corporations back in 2012. Congress has left behind a legacy of illogical and unscientific bifurcations, made one rich MCD and 2 poor MCDs like the East and North Delhi ones, just like they did it in the case of Andhra Pradesh. No wonder Congress itself is bifurcating now. Hence, I thank the Centre for introducing this bill and taking the necessary steps for reversing this irrational trifurcation at the hands of Congress. The positives: financial inequalities will be removed. After this bill is introduced, the trifurcation problems will be resolved and geographical divisions and revenue generation sources will improve, and South Delhi is going to bring back the inputs, and some of the resources that are available will come back, and it gets integrated with the other 2 corporations. If you see, sir, South Delhi has almost 4,000 crore of revenue,
and East Delhi has 2,900 crore, where the development needs are higher in East Delhi and than South Delhi. There is no parity between resources and obligations of the corporations. By unifying the three corporations, these financial inequalities will be addressed. The second point, pending funding issues will be resolved. The employees in the corporations, from sanitation workers to doctors and teachers, have been on regular strikes every few months since 2020 due to delays in payment of salaries, pensions, contractors' bills. These dues are estimated to be around 13,000 crores. Many development projects, especially in the financially starved areas of East Delhi, North Delhi, have been long pending for want of funds. With this bill, financial administration of the municipality will be centralized at the union level, ensuring stability and equality in funding. E-governance system will be instituted. This e-governance bill will bring in the corporation an efficient system for citizens on any time, anywhere basis. This is a welcome move, especially in the aftermath of the pandemic when digital services have become the new normal. Sir, AP has been at the forefront of the e-governance revolution. Our visionary Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy Garu has launched the AP Seva Portal 2 to ensure digital delivery of citizen services. The portal offers more than 100 citizen services pertaining to revenue and land administration, civil supplies, rural development and energy development. So this e-portal is a very good initiative by the centre. We have few suggestions. It should be ensured an effective decision making and efficient administration to be brought in by taking into consideration multi-parallel bodies within the three corporations have confused everyone as to which body has what power and to what extent. There are 3 mayors, 3 commissioners, 12 additional commissioners and several committees. All have overlapping functions. This has not only complicated decision making, but also increased salary, expenses and added to the financial crisis. The government must ensure that the unification process eliminates unnecessary bodies, leads to targeted decision making and reduces administrative expenses. Then second one, we have to fix the responsibility for the loss suffered in the last 10 years. Sir, this is very important. Yeah, please wind up. Then also you have to bring in the procedures that have been prescribed for delimitation of wards. So finally, sir, in Delhi is our capital and हमारा इज्जत है. Delhi को on all aspects we have to make it the best. If you see the central government, state government, municipal corporation, North Delhi corporation, cantonment areas, PWD, CPWD, इतना organizations हो गया है कि इतना confusion हो गया है. तो इसको पूरा बंद करना है. ये area को पूरा, we have to really bring into the best standard under one governance, one rule. We have to really put it into the right shape. Otherwise, the best of the people in this country who are staying here, for them, we have to give, and we also showcase to the world that एक हमारा दिल्ली को सही नहीं रख सके तो पूरा देश को क्या रखेगा. तो ये हिसाब को हमको सब we have to go beyond politics and then please ensure that we make Delhi the best. Thank you, sir. Thank you, Mr. Reddy. The next speaker is Dr. M. Thamudurai. Thank you, Vice Chairman, sir. On behalf of ADMK party, we are supporting the Home Minister's bill as brought to merge the 3 municipalities, Delhi municipal together. Sir, Delhi, despite being a single city, is governed by 5 separate local bodies, including 3 municipal corporations of Delhi, New Delhi Municipal Corporation and Delhi Cantonment Board. Sir, this municipal corporation, Delhi used to govern almost 90% of the population till 2012. But unfortunately, this has been bifurcated unnecessarily. It is high time this government, Modi ji government, under the Home Minister, now has brought a bill. ADM is welcoming, sir. At the same time, mentioned about the financial problems, what faced make the government to bring together all the municipalities, despite of so many corruption, so many problems, salary not paid. You mentioned that. I appreciate that. At the same time, I have seen that opposite side, DMK side, they started to spend politics in this.
Why the municipal, instead of facing Delhi Municipal Corporation, they are building a central federal system. As and state government is suffering a lot because of the Modi ji government of Tamil Nadu. That is not correct. Modi ji has got so many schemes for Tamil Nadu. In that budget itself, they mentioned Modi ji plan only in the, they mentioned the DMK government. And also, recently, Chief Minister of Tamil Nadu met all the ministers here, including Prime Minister, Home Minister, Nadaji also they met. After meeting that, what they said? No, I'm telling everything. The press statement, Minister said, Prime Minister said, we are satisfied with the talk with the ministers. Now he is telling, criticizing that. That is not correct. What happened regarding the local administration elections? What happened in Tamil Nadu? Our Edapadi Palaniswamy made a grave statement. This present government, DMK government, misused all the power in the municipal election, corporation election. We are deprived of them. So many seats are. No, I'm telling this is what happened. This is a fact I want to tell. It has to bring to the house. When they are criticizing this government, I have to criticize. When my parties, when they are suffering a lot. I am suffering. Mr. Jairam, No, I'm please. telling. No, say, 18 years. Don't speak without my permission. Don't speak without my permission. DMK and the central government. What they made an attempt to take the power. When the power, if they want central state government power, they would have fought at the time. 10 years with your Congress government, 5 years the BJP government, 15 years other VP Singh government, 18 years there was central government DMK, now saying federalism, power has gone, the Tamil Nadu municipality. What is the municipality? They would have fought at the time. Now the time has come, they have not fought at that time. Now they want to politics. He addressed the chair, Mr. Thamudurai. You don't have to reply to him. When they are criticizing this government, I am appreciating the Modi government. They have given lot of schemes for Tamil Nadu. They are giving also many schemes. That is why what even the budget of Tamil Nadu presented recently, they said all Modi government, Modi ji schemes on central government schemes, not any scheme. Therefore, bringing politics unnecessarily and criticizing this government is unfair. I am supporting this bill because it's a municipal, New Delhi Municipal Corporation problem only we are discussing. Therefore, what our Honorable Home Minister has brought with the concern of the Prime Minister ji, I am appreciating, supporting, merging the all municipal corporations. Thank you. Thank you, Mr. Sambudurai. The next speaker is Srimati Jaya Bachchan. Please. Thank you, sir. Sir, I oppose this bill. I'm not opposing this just for the sake of it, but this bill is an attack on the federal structure. Half power has been taken by the Lieutenant Governor. The other half is going to be taken over now, of course, because you have a large number, you have a large voice, and you have the muscle. And, sorry? Please don't disturb her. This taking over makes the elected government ineffectual. सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी. त्रिवेदी जी के हिंदी और जवाहर जी के अंग्रेजी से मेरा दिमाग इतना बौखला गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी भाषा में बोलूं. मैं हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में बोलूं. सर इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना काम है. स्वच्छ भारत है, फिर अच्छे दिन का है, और भी अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, फार्मर्स का प्रॉब्लम है. सर ये स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स को छोड़ देना चाहिए. आप बोलते जाइए, आप मुझे एड्रेस कीजिए और बोलते जाइए, दूसरा का मत सुनिए. मैं दूसरों का सुन नहीं रही हूं. जब इनको हमने अच्छे से शांति से सुना, इनको भी सुनना चाहिए. Empty vessels makes the most noise. Sir, will this government, I'm very concerned about the unemployed. Will this government assimilate and keep the staff working in these after they have taken over? I mean,
you know, it's almost quite a helpless situation for all of us. उन लोगों ने गलती की, ये भी गलती कर रहे हैं, हम लोग रजिया बैठे हुए हैं यहाँ, कुछ नहीं कर सकते. Or will they employ a lot more people? I hope they do. Since our hands are tied, the only voice that I have, I say, I oppose the bill. It's not democratic. Thank Leave you. states alone. Thank you very much. The next speaker is John Brutus. Sir, I stand to oppose the bill. Sir, Amit Shah ji ne bola hai, he doesn't get angry, except on Kashmir. I am glad that if he is receptive on the Delhi municipal bill, he would withdraw the bill. Yes. It's precisely because it's against the public announcement they make with regard to federalism. Every time they say that, they are for cooperative federalism. Sir, I would have appreciated the Home Minister if at all he had convened a meeting of all parties, including the state government, to explore the possibilities and telling them, look, why can't we converge or merge these municipal corporations? They haven't done anything like that. They have bypassed the state government. If he had a difficulty of sitting with Kejriwal ji, they could have called Sanjay Singh ji, such a decent man. They could have called him. उनका पंगा तो ये केजरीवाल के खिलाफ है, ठीक है. They could have invited Sanjay Singh ji. Sir, I will just quote a statement. And I would, at the end, I would say, kiska hai? If the government ruling the entire country rules over Delhi, it will neglect its duties as a national government and will do injustice to the people. Delhi has mostly been under the direct control of the central government. If the center again puts it under its control further, it is the bureaucracy which will govern Delhi instead of people's representatives. किसने बोला है? मार्गदर्शक मंडल का मेंबर है LK Advani ji. Mr. LK Advani made this statement when he was the opposition leader. You should be staring at their face, sir. Amit Shah ji, if you are receptive to Advani ji, please withdraw the bill. Because actually what he has stated, you are doing it. You are depriving the people. You are denting the federalism. You are denying the basic rights of the democracy, people. You are leaving the state to the mercy of bureaucrats. That is essentially what you are doing, sir. Amit Shah ji, while he was replying in Lok Sabha, he was saying that Election Commission had convened the press conference not for declaring the election, but for declaring the merger of the corporations. ये उनका काम है क्या? ये merger करने के लिए? Can you ever imagine a election commissioner convening the press conference to declare that I am going to merge the corporations? How can the Home Minister of this country, make such statement? Sir, I yield, Honorable Home Minister. सभापति महोदय, मेरा भाषण हिंदी में था, शायद वो समझ नहीं पाए होंगे. हिंदी समझते सर. तो जरा ध्यान से सुन ले, वो जो मुझे कोट कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं बोला हूँ. इतनी ही स्पष्टता करने के लिए मैं खड़ा हूँ. Sir, if I am wrong, I stand corrected. But that was the sum and substance of his statement. He also said that, sir. Sir, he also said that. Sir, now let us see what is the status of this corporation. People have been quoting 11,000 crore, 12,000 crore, which the central government offered to these corporations. Sir, I will just cite one thing. Sir, the 5th Delhi Finance Commission underlined chapter 8.22. Sir, please note down. At the irregular diversion of a plan funds worth for rupees 459 crores. And even the EPF contribution was diverted. By whom, sir? The corporations under BJP. Sir, did you take any action? Have you uttered a word against them? Sir, you have allowed those corporations to be steeped deep in corruption. Mr. Britters, your time is up.
Your Sir, time is up. one, sir. Honorable Minister is listening to me. He wants me You to conclude. speak further. Please conclude. Please conclude. Sir, Home Minister wants to Please hear me. conclude. Listen You to don't me. have to refer. I Please am trying to conclude. help him, sir. Okay. Sir, let us see. If they had a genuine interest for the people of Delhi, ये क्या होता है sir इधर? Last 5 years, hangama. It's a LG rule. Do they believe in basic democracy? They unleashed the officers against elected representatives. What sort of tamashas were happening in the state of Delhi, sir? Thank Sir, you. Your on a time is fine up. morning, Mr. Bitas, fine please. morning, if they can dismiss Please, a please. state government. Please sit down now. Sir, I only request the Home Minister, please heed to the sound counsel of the different political parties. Please withdraw the bill. If you don't get angry, Thank please you. also be receptive. Now, please, Mr. Wahab. Abdul Wahab. We are talking about decentralization always. Every time we are talking decentralization, even Kashmir also we have seen it is now decentralized. Everywhere. Now in Delhi it is unification. Okay, we can agree on that one regarding the expenses, so many mayors, so many commissioners and all. Why can't we unify all states? No governors, no chief minister, no minister. वो करेगा क्या? Karega, let them. Yeah. If I am, because of me, they are doing, do it. And so this is, you don't interfere me. This is the way. Government and everybody is saying decentralization. Panchayati Raj and everything. Please, I know that we will say yes, 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 no, no, no. And we are going to see within few minutes. But it is not going to happen. Still, we can appeal to Home Minister that please withdraw the bill. Thank you. Thank you, Abdul Wahab ji. Now the next speaker is Z.K. Vasan. Sir, the purpose of this bill is unifying the three corporations of Delhi. In 2011, MCD was split into three. For what purpose? They wanted 3 mayors, 3 commissioners, 3 deputy mayors. Did the purpose? I am feeling for it now. I am feeling for it now. I am feeling very badly for it now. Mr. Ramesh. Mr. Ramesh. Sir. Mr. Ramesh. Mr. Bitas, nobody disturbed you, you are disturbing. When you spoke, nobody disturbed, but you are disturbing. Sir, the decision Stop which was disturbing made. now. Mr. Ramesh, please be seated. Mr. Vasan, please continue. Please continue, you don't have to reply to that. Sir, we are feeling for it, sir. It should not become like Andhra and Telangana. They are seeing, the Congress party is seeing the wrath of it today. Sir, the decision was to ensure efficiency in municipal services in Delhi. But unfortunately, sir, in 10 years, we have witnessed that the bifurcation is not met. Indeed, MCC still face many efficiency and sustainability related challenges, sir. It's time, sir, that it has to be changed. Delhi is not only the capital of our country. We need a world-class city to live and show a model MCD. Sir, the fact of the matter is, we have to fix infrastructure, air pollution, choking traffic, water supply, drainage system beyond Lutyens Delhi, sir. Unfortunately, sir, we all know Delhi has emerged as the most polluted capital today. It is time to think of a box solution for Delhi, sir. The need of the hour is insightful planning. In the absence of this, investments cannot help the MCD. Long-term solutions cannot take place. Sir, unplanned urbanization could result in serious downsides in future. So, sir, we must rethink, reimagine, and re-establish the very purpose and approach towards planning of Delhi. To conclude, sir, it's time we decentralize power.
invested in MP MLAs at the municipal level. Let there be a bottom-up approach. Let's think of a fresh with this amendment on improving Delhi municipalities. Let it become a model for rest of the country. With this, I support this bill, sir. Thank you. Thank you, Mr. Basan. The next speaker is Sanjay Singh. धन्यवाद मान्यवर, आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया और क्योंकि ये दिल्ली से जुड़ा हुआ बिल है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरे ऊपर थोड़ी कृपा आपकी होगी। मैं अपनी बात विस्तार से रखना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने आज गृह मंत्री जी से समय सीमित है, कारण समय सुना, के अंदर बोले। कारण सुना कि क्यों एमसीडी का एकीकरण जरूरी है। उन्होंने उसके तमाम फायदे गिनाए, लेकिन इसके साथ साथ यह सरकार यह कहना चाहती है मान्यवर कि यह हिंदुस्तान की सबसे बुद्धिहीन सरकार है। 7 वर्षों तक ये सत्ता में रहे, इनको एमसीडी के एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, तब एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा की, संजय जी, चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए, जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा, I have allowed a point of order. Under what rule? 38. He has used the words buddhihin for the government. These are certainly not acceptable. गवर्नमेंट के लिए बुद्धिहीन कहा, ये शब्द को हटाया जाए। बुद्धिहीन सरकार अनपार्लियामेंट्री है, इसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। बैठ जाओ। If anything unparliamentary, it will be expunged from the record. Please. 7 साल के बाद इस सरकार को दिन में अचानक सपना आया। उस दिन मान्यवर 9 मार्च की तारीख थी। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के लिए करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसी के ठीक पहले इनको सपने में आया कि एमसीडी का एकीकरण करना है, एमसीडी को एक करना है, और इन्होंने चिट्ठी भेज के चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता को खत्म करने का काम किया है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से रोका। मानव, यह बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है मानव, यह बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए। केजरीवाल को रोकने के लिए कह रहे हमें एमसीडी चलानी है, एमसीडी चलानी है। संजय सिंह, मैं अरे क्या क्या बोला गया सर? नहीं Don't go in the personal level. Don't make personal comments. क्या क्या बोला? Don't make personal. मैं आ रहा हूं, मुद्दे पे आ रहा हूं सर। मान्यवर, ये केजरीवाल फोबिया बिल है। केजरीवाल से इनको डर लगता है। रात के सपने में इनको केजरीवाल आते हैं। चुनाव हारने की गाथा बता रहे थे। गृह मंत्री जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग राजनीति में कायर होते हैं जिनके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता। आपने बहुत अच्छा किया बताया, उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हुई। बहुत अच्छा किया बताया आपने कि गोवा में हमारी जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में हुई। मैं सोच रहा था 51 से निकालूंगा तो आप ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा बात से ही शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हो सर। ये 80 में चुनाव में लड़े, तमिलनाडु में 0 सीट आई। 84 में लड़े, 0 सीट आई। 89 में लड़े, 0 सीट आई। 91 में लड़े, 0 सीट आई। 96 में लड़े, 1 सीट आई। 2001 में लड़े, 4 सीट आई। 2006 में लड़े, 0 आई। फिर 2011 में लड़े, 0 आई। 2016 में लड़े, 0 आई। 41 साल, 42 साल टू डू विद द बिल। आप बिल अरे बोले बिल पे कितना बोला इन लोगों ने। यहां पे जमानत जब्त की कहानी सुना के बंद करूंगा। साहस रखिए, साहस रखिए। केरल में 82 में 0, 87 में 0, 91 में 0, 96 में 0, 2001 में 0, 2006 में 0,
2011 में जीरो, संजय सिंह जी, 2016 में जीरो। आपका और टाइम हमारे खत्म हो चुका है, प्रतापी आपका प्रधानमंत्री- टाइम इतना ही है सर, और आपका टाइम खत्म हो सर, चुका ये है। गलत, फिर भी आप बोले रहे ये हैं गलत तरीका है। और एक ही बात को रिपीट दिल्ली का करें। बिल है, दिल्ली के बिल पे बोलने रिपीट दीजिए ना सर। करें, दिल्ली के रिपीट ना पे करें, बोलने बिल दीजिए। पे बोलिए। यहाँ ये बताया गया कितने सीटों पे जमानतें जब्त हुई। सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, 2012 में 10 साल पहले तो ये बिल लोग है, चुनाव लड़े, तो दो ही उत्तर 398 प्रदेश सीट पे ये बिल दिल्ली के लिए दिल्ली का बोलिए। गृह मंत्री जी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आपकी पार्टी का जमानत जब्त कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतिहास पलटिए और जानिए। और मैं आपको बताता हूं, परम प्रतापी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने, 73 सीटों पे लड़े ये लोग, 54 सीटों पे वहां इनकी जमानत जब्त हुई। अब एमसीडी बिल पे आता हूं, सर आप खत्म इन्होंने कहा कंक्लूड कीजिए। सौतेली मां, ये गृह मंत्री का शब्द है सर, गृह मंत्री के शब्दों का जवाब नहीं दूंगा सर। सौतेली मां उन्होंने कहा, सौतेली मां, वाइंड अप कीजिए, आप वाइंड अप सौतेली कीजिए। मां कौन है? आप दूसरे बात बोले जा रहे हैं। सौतेली मां कौन है? सुनो जरा ध्यान से। 2014-15 में दिल्ली को मिला 325 करोड़, 2015-16 में 325 करोड़, 2016-17 में 325 करोड़, 2017-18 में 325 करोड़, 2018-19 में 325 करोड़, 2019-20 में 325 करोड़। सर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स दिल्ली की जनता देती है, मात्र 325 करोड़ रुपए आप हर साल देते हैं। और हमने एमसीडी को कितना दिया? माननीय गृह मंत्री जी जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। एमसीडी को सर आप वाइंड अप कीजिए, आपका टाइम खत्म हो देखिए मुद्दे पे बोल, आप कहिए तो फिर नहीं बोलते। मुद्दे का कोई शक आप नहीं है, कहिए तो नहीं बोलते सर। टाइम आप कॉन्स्टेंट है, कहिए तो नहीं बोलते। दिल्ली से जुड़ा हुआ मुद्दा, ये मुद्दा भी नहीं सुनने देंगे। एमसीडी का मुद्दा तो वो सुनने दीजिए सर। आखिरी 1 मिनट आपको दे रहा हूं, आखिरी 1 मिनट। ऐसे करोगे तो फिर कोई बोल नहीं पाओगे। इतना कमजोर मत समझना, इतना कमजोर मत समझना। एक आदमी नहीं बोल पाओगे, एक आदमी सदन चलने नहीं पाएगा। ये ठीक बात है। कायरता वाले काम मत करो, नहीं कायरता के काम मत करो। तो सर मैं ये कहना चाहता हूं, 30% इसको एक्सपांड किया जाए, दिल्ली ने दिया, इसको एक्सपांड किया जाए। जो थ्रेटनिंग वर्ड्स है इसको एक्सपांड किया सर खत्म कर रहा हूं। सर हमने इनको 2016-17 में 2700 करोड़ दिया, 2017-18 में 3224 करोड़ दिया, 2018-19 में 3444 करोड़ दिया, 2019-20 में 4756 करोड़ दिया और इस बार इनको 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा धन इनको दिया। थैंक यू, एमसीडी। अरे सर अब हो गया, अब हो गया। ऐसे नहीं खत्म कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, कंक्लूड कर रहा हूं सर। नहीं, आपको 5 मिनट पहले मैंने कह दिया आपका टाइम खत्म हो चुका है। सर कंक्लूड कर रहा हूं, नहीं सर कंक्लूड कर रहा हूं, अंतिम पॉइंट खत्म कर रहा हूं सर। करिए, खत्म कर रहा हूं सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव से भागना है, तो इस बिल का नाम मैं फिर आपको सजेस्ट कर रहा हूं, केजरीवाल फोबिया बिल रख दीजिए। और अंत में एक लाइन कह के खत्म करूंगा सर, खत्म कर रहा हूं। श्री राम जी, ये बिल आपके खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं बिल्कुल। ये बिल खत्म हो चुका है, आपके कायरता की कहानी लिखेगा। ये बिल आपके भगोड़ेपन की कहानी लिखेगा। ये बिल आपके संविधान को कुचलने की कहानी लिखेगा। ये बिल आपके द्वारा चुनाव आयोग को समाप्त करने की कहानी लिखेगा। और आप आप बैठ जाए, आप बोलिए। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को भी। मान्यवर माननीय गृह मंत्री जी ने इस बिल को यहां पर रखा और उसमें ये बात कही है माननीय गृह मंत्री जी ने 1,20,000 कर्मचारियों को सुचारू रूप से काम करने के लिए और बेहतर सिविक सर्विस देने के लिए ये बिल लेकर आए हुए हैं। मान्यवर समस्याओं का निस्तारण आवश्यक है,
चाहे वो सफाई कर्मचारियों को लेकर हो, चाहे वो दिल्ली की सफाई को लेकर के हो। मान्यवर, तमाम रिपोर्टों से, तमाम लोगों से बातचीत करने पर यह मालूम हुआ कि दिल्ली में जो एमसीडी में कर्मचारी हैं, उन्हें 5 से 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। और इसके अलावा मान्यवर, रिटायर कर्मचारियों को 5 से 6 महीने की पेंशन नहीं मिली है। साथ ही मान्यवर, सफाई का काम करने वालों को कोई सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता है, कोई आधुनिक इक्विपमेंट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर पिछले 5 सालों में 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई है सीवर और सेफ्टी टैंकों में काम करने पर। इस बात पर भी एक गहन विचार होना चाहिए कि इस समस्या का निदान कैसे होगा। साथ ही मान्यवर, दुख की बात यह भी है कि आज जो सरकारें हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन करके काम करती हैं, वो अधिकांशतः कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखती हैं, एम्प्लॉइज को रखती हैं। ऐसा काम जिससे मानसिक और शारीरिक तकलीफ होती है, इस काम को करने से उनको 5 से 10 हजार रुपए महीना सिर्फ वेतन मिलता है। अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को बेहतर मुआवजा भी नहीं मिलता है। ये ऐसा कई जगह पर देखा गया है। और मान्यवर, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि सफाई कर्मी भी हमारी रक्षा करते हैं, तमाम तरह की बीमारियों को भगाते हैं और खुद तमाम तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। और इसमें भी एक रिपोर्ट आई है 5 अप्रैल 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने एमसीडी के डाटा के अनुसार कहा है कि 2013 से 17 के बीच में 2400 लोग रिटायरमेंट से पहले ही खत्म हो गए। माने कि वो लोग कभी रिटायरमेंट की एज को पूरा नहीं कर पाए, माने कि तमाम तरह की गंभीर बीमारियों की वजह से उनकी मौत हो गई, उनको बेहतर मेडिकल सुविधाएं भी नहीं दी गई। इसलिए मान्यवर, ये बड़ा दुख का विषय है। देखिए, पूरे देश के अंदर ऐसी हालात है कि इन कर्मचारियों के साथ में दुर्व्यवहार होता है। मान्यवर, मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी के से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो इस तरह के जो कर्मचारी हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट और सेफ्टी नॉर्म्स की तरह काम कराइए और उनको 8 घंटे की ड्यूटी कराइए। क्योंकि अभी एक ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर इस प्रकार से साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कि उसमें कहा गया है 21 मार्च 2022 में कि जो एसआई, एसएसआई और एसजी के जो कर्मचारी हो गए वो 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करेंगे, हमारे 15 घंटे काम करेंगे। दूसरा ऑर्डर सफाई कर्मचारियों के लिए हुआ है कि 7 बजे सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करेंगे, माने कि 10 घंटे काम करेंगे। और इसके अलावा मान्यवर, ये दुखद विषय है कि जो मान्यवर, ये इंपॉर्टेंट विषय है, मेरी बात को सुना जाए। मान्यवर, जो टॉयलेट पे एम्प्लॉय लगाए जाते हैं उनके लिए अलग से एक नियम बनाया गया, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो टॉयलेट, जहां पे टॉयलेट का स्टाफ होता है वो काम करेगा, माने 16 घंटे काम करेगा। अगर 16 घंटे के काम करेगा तो अपने जीवन में कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएगा। इसलिए मान्यवर, इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और मान्यवर, मैं मान्यवर, धन्यवाद। आपके माध्यम से लास्ट पॉइंट है माननीय, कि मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 2007 से लेकर 2012 में उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार थी, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की सरकारी भर्ती की गई, लेकिन उसके तहत उन तमाम परिवारों को रोजगार मिल गया। ऐसी ही भर्ती दिल्ली के अंदर भी की जाए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम ना हो, ये सरकारी भर्ती के तहत काम कराया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। मुआवजा भी, इनकी मौत पर कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देने का काम करे, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद। विनय विश्वम जी। Thank you, sir. Sir, Honorable Amit Shah ji and his party came to power with a very great slogan, that is, less governments and maximum governance. A beautiful slogan to be called. But what happened here? On every passing day, we see that the government is acquiring all the powers at the center, and the government is not satisfied by capturing all the powers in this country. Now it is the government of less governance and maximum government. And this bill also proves that. A government is now trying to jump upon Delhi, the national capital, to capture all the powers that municipality has. Sir, we have heard of 2 in 1. Now you are practicing 3 in 1. North, South and East Delhis are going to be one Delhi Municipal Corporation.
and what will happen there. Sir, the government has no idea how to make a national capital municipality to function in the proper way, because the government has no proper direction of running the state and the country and the municipality. Sir, go beyond the Luton Delhi, to the underbellies of Delhi, to suburban Delhis, and see how the people live there. Sir, crores of people in Delhi suburban area are living without safe drinking water, in very, very pathetic conditions. They have no safe air to breathe, no food to eat, and this government shut their eyes and give all facilities for the rich and only the rich. And I am asking the Minister, Home Minister, whether the government has a proposal to address these issues. The government has no idea. And this government is trying to capture each and every rights of the municipal administration also. In the small bill, we can see central government, central government, central government, I don't know how many times. 11 times. Every time central government. The number of the councillors, central government. Reservation numbers, central government. Administration, central government. And if there's a doubt on anything, central government will clarify by notification. And central government is going to control everything. And which is central government? The central government is a government of authoritarian rule. They made in Kashmir their idea to bifurcate Kashmir. And they come to Delhi with the slogan of unifying Delhi. For what? Because they are afraid of elections. They are afraid to go to the people. They know that if they go to the people will show them a lesson, teach them a lesson. So to defeat the people, they want to do this unification on Delhi. So that's why my party, the Communist Party of India, opposed this bill. Thank you. The next speaker is Naresh Gujarji. Thank you, sir. Sir, when India got independence, population of Delhi was barely 8 to 10 lakhs. And at that stage, we had the New Delhi Municipal Committee and the Municipal Corporation of Delhi. Thereafter came the Metropolitan Council, which got converted into Delhi Assembly. So one has seen various phases of these governments as Delhi grew. Basic thing was NDMC, New Delhi Municipal Committee, functioned very well, and even till today keeps on receiving awards after awards, year after year, for being the best municipality, basically because of its size. It's small in size, so it caters to the requirements of the people. Sir, that is why Mrs. Sheila Dixit, in her wisdom, decided that Delhi had grown, population had grown manyfold, to have 3 corporations. Now, the problem is, whatever in their wisdom they've decided, they want to have 1 corporation. But I have one problem, sir. They want to reduce the number of corporators. Sir, world over, there is a tendency to have smaller municipalities so that people's problems can be addressed expeditiously. When you have less number of corporators, it's the people of Delhi who will suffer. So I would urge the Home Minister, sir, that make them into 500, not just don't reduce, double the number, because a normal person has small problems, electricity, road, school. Mr. Gujarat, just 1 minute, because it's 6 o'clock. So, the time, it is already 6 o'clock, but we would like to conclude this discussion and then dispose of the bill. So we may sit till it is disposed of. is that the sense of the House? Yes. Okay. So, House is extended. Sir, Please carry I hope on. I will get time tomorrow. Please carry on. Okay, right. Okay, good. Sir, time is okay, extended. I won't take long. I am only saying, sir, let us also debate the 2 basic issues which have come up. Number 1, sir, the Honorable Home Minister talked of the revenue stream. And I think it will be advisable for the government to follow the recommendations of the Finance Commission, and not just for Delhi municipality. For all municipalities in the country, they need to have a dedicated revenue stream. And the second, and I think the whole House would agree with me,
municipalities all over the country have become dens of corruption. Sir, I hate to say our corporators have become corrupt to the core. In Delhi, you can't get a plan passed for a house, wherever you may be. Mafias have taken over, illegal construction happening everywhere. I think this is the issue, and the Honorable Home Minister has to now relook at the powers of the corporators all over the country, because we all know that they're corrupt. We all have to feed them, because otherwise you can get nothing done. I have told the Honorable Urban Development Minister, I had to get a plan passed. I'm a member of Parliament in New Delhi Municipal Committee. It took me 1.5 years. And I know that when I go for the completion certificate, it will take me another 1 year unless I bribe. So I think we all need to look at these basic issues. How can we change the whole complexion of our corporators? So basically in urban areas, corporators, these municipalities, corporations were supposed to be nurseries of creating tomorrow's leaders. But unfortunately, what is going on, that is why we see corruption on a mass scale everywhere, because at the bottom, we are not tackling the problem. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. Gujral. The next speaker is Sakti Singh Gohil ji. Your party time is over, but the chair has allowed a few minutes for you. Please, please. धन्यवाद मान्यवर। हमारे विद्वान साथी सिंघवी जी ने इस संविधान के कैसे खिलाफ का ये कानून है उसकी बात की है, तो इसे मैं दोहराना नहीं चाहता। कानून राजनीतिक मंशा या फायदे के साथ नहीं लाना चाहिए, कानून के हिसाब से लाना चाहिए। मूवर ऑफ द बिल गृह मंत्री जी कह रहे थे कि जब ट्राइफिकेशन हुआ तो आनंद पानंद में कर दिया होगा। नहीं, आपको देखना होगा, बालकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट थी कि इसको अलग अलग कॉरपोरेशन में बनाइए। वीरेंद्र प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आई कि इसको आप विभाजित कीजिए, क्योंकि दिल्ली में म्युनिसिपैलिटी छोटे छोटे हिस्से में काम करेगी तो ही फायदा होगा। तो ये जो हमने किया था वो दो एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद किया। आपने क्या किया? और हमने जब किया तो एक ख्याल रखा था कि चुनाव के बिना दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी नहीं रहनी चाहिए। पहले से काम करके दिया और चुनाव भी टाइम पे हुआ, कोई एडमिनिस्ट्रेटर रखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने क्या किया? अगर आपको एक भी करना था तो आप क्या 2 साल 3 साल पहले ये कानून नहीं ला सकते थे? आप तब नहीं किया। आपने जब 5 राज्यों के चुनाव के बाद आपके किसी एक्सपर्ट कमेटी ने नहीं कहा, भाजपा के दिल्ली के नेता मिले और उन्होंने कहा कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, चुनाव टलना चाहिए। और इसीलिए आप ये कानून लेके आते हो और इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं। हमने ट्राइफिकेशन करने के बाद हमारी सरकार थी शीला दीक्षित जी की, हर वक्त पैसे दिए, ना कभी स्ट्राइक हुई, ना कभी तनख्वाह रुकी, ना कभी पेंशन रुकी, ना किसी को दिक्कत आई, क्योंकि हम न सौतेली मां थे, हम न सौतेले बेटे थे। अभी तो जो लड़ाई है ये 2 बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में सौतेली मां और सौतेली बेटे की ये नुरा कुश्ती के बीच में आप ये लेके आए हो। अब थोड़ा इतिहास को देख लीजिए। अभी मैंने एक फिल्म देखी 10वीं, जिसमें अभिषेक का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, जो इतिहास से ना सीखता है वह इतिहास बन जाता है। थोड़ा सा इतिहास से सीख तो लीजिए आप। हमने बहुत सीखा है और अपने आप को बदला भी है। हमने हार भी देखी है, हमने जीत भी देखी है। ना हम जीत में अहंकार पे बैठे हैं, ना हम हार से मायूस हुए हैं। हम वो ताकत है जो लड़ते हैं, गिरते भी है पर संभलते हैं और दुगनी ताकत से लड़ते हैं। तो हमारी चिंता मत कीजिए। आप लाइए, आप मेयर इन काउंसिल लेके आइए, हिम्मत है तो वो भी करके दिखाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 2017 का बीजेपी का मैनिफेस्टो देख लीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष तिवारी जी ने भी कहा था कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे पैसे दे देगी म्युनिसिपैलिटी को। आपने क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये तो आपके मैनिफेस्टो में था। आपने सेक्शन 1, सेक्शन 3A, सेक्शन 5, सेक्शन 6,
सेक्शन 32A, सेक्शन 55, सेक्शन 56, 57, 93, 330A, 499 सब जगह पे गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट करने की कोशिश की है। ये फेडरल स्ट्रक्चर के पर अटैक है। जो इस बिल को समर्थन कर रहे हैं, आज कहीं और पे कल आपके ऊपर भी ये हो सकती है। मुझे 1 मिनट में मैं ये और एक बात करना चाहता हूं कि आप जो दिल्ली के फाइनेंस कमीशन ने 12.50% शेयर बढ़ाने के कहा था, वो नहीं किया हमने जो शिलाजी के वक्त में कॉरपोरेशन और इनके बीच में संवाद बना था, वो संवाद नहीं हुआ। दिल्ली की रैंकिंग कहां होगी? उन सफाई सैनिक जो हमारा काम करता है, उस ठेकेदारी में उसका शोषण होता है, उसकी आप चिंता नहीं करते हो। आज ही आपका म्युनिसिपैलिटी एक डिसीजन लेता है कि अगर ऑनलाइन मीट जितना चाहे आप नवरात्रि में ले लो, पर छोटा दुकानदार हमको हफ्ता नहीं देता है, तो उस छोटे दुकानदार को हम बंद करेंगे। क्या इस तरह के डिसीजन कभी होते हैं? आप कहोगे कि 239AA, 3B और 3C के संविधान के प्रावधान हमारे फेवर में है। आपका ये बिल अल्ट्रा वायरस होगा। आप ये नहीं इसका शरण ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो संविधान के प्रावधान बने हैं और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से पास होना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से पास नहीं होता है। धन्यवाद। तो मैं जरूर यही कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी, इसको सिलेक्ट कमेटी को आप भेजिए। आप जब पावर में नहीं थे तो कभी कभार भी हंस लेते थे, अभी तो बहुत गुस्से में रहा करते हो। पता मुझे नहीं है, पर इसको सिलेक्ट कमेटी को जाने के लिए जरा सोचिए। धन्यवाद। उपसभापति महोदय, इस बिल पर बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस बिल के समर्थन में बहुत कुछ कहने के लिए खड़ा हूं। और हमारे विपक्षी दल के कई नेता को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यहां उनके स्टेटमेंट्स और बाहर में बहुत ज्यादा फासला है, बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि बृहन मुंबई कॉरपोरेशन इलेक्शंस होने वाले हैं, बट लेकिन वो हो नहीं रहे हैं। 10 कॉरपोरेशंस महाराष्ट्र के 25 जिला परिषद के चुनावों को पोस्टपोन करने के लिए हाल ही में 2 विधेयक को पारित किया महाराष्ट्र असेंबली में। तो हमारे कांग्रेस के मित्र जो बहुत दुहाई दे रहे हैं हमको चुनाव समय पे होना चाहिए, कि अभिषेक जी ये सलाह आप क्यों नहीं देते हैं अपने ही गठबंधन सरकार को, ये मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया है। और जो हमारे तृणमूल कांग्रेस के साथी और डीएमके के साथी जो कह रहे थे, उससे मुझे लगा यदि 3 इतना अच्छा लगता है आपको, क्यों कोलकाता में फिर चेन्नई में अभी भी इलेक्शन हुए हैं, वो 3 कॉर्पोरेशन वाला फार्मूला वहां अपनाते, बहुत कुछ अच्छा हो जाता आपके लिए। लेकिन वहां तो एक ही कॉर्पोरेशन चाहिए। अभी अभी चुनाव आप जीत गए, तो यदि दिल्ली के लिए 3 अच्छे हैं आपके हिसाब से, कोलकाता के लिए क्यों अच्छे नहीं है? चेन्नई के लिए क्यों अच्छे नहीं है? यदि आपको कांग्रेस के द्वारा बनाया गया 2011 का कानून इतना अच्छा है, तो आप वहां नकल करिए। और हमारे डीएमके के साथी कह रहे थे आप उत्तर प्रदेश में अभी हार गए, तो मैं चौंक गया। मैं वो कौन से चैनल देखते हैं, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश में हमारी भव्य जीत हुई अभी अभी, तो हम चुनाव से डर गए। इतने सारे चुनाव जीतने वाले हम डर गए, और सारे चुनाव हारने वाले कांग्रेस विजय श्रृंखला चला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वास्तविकता से बहुत दूर उनकी विचार प्रकट होते हैं। और डिलिमिटेशन के द्वारा नंबर ऑफ वॉट्स बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा। जहां तक मैंने कानून को देखा है, डिलिमिटेशन होगा। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या महाराष्ट्र में जो बिल मैं जिसकी जिक्र कर रहा हूं, ये दोनों बिल का उद्देश्य यही है। वहां डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। वहां आपने स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिकारों को हनन करके अपने हाथ में लिया, सरकार ने अपने हाथ में लिया। आप यहां आकर के हमें आकर के कांग्रेस वाले मित्र हमें यहां दुआ दे रहे। तो ये कहीं आपका टाइम है, आप बोलेंगे। नहीं, ये विरोधाभास। आप बैठिए। नहीं, ये जो विरोधाभास है, इसका तो एक्सप्लेनेशन उनको देना ही होगा। और जहां तक
इस बिल के कुछ मुख्य उद्देश्य है, मैं उस पर बिल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिल, जो गृह मंत्री जी द्वारा जो बिल में लिखा गया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल विल बी टू क्रिएट ए कॉम्पैक्ट म्युनिसिपैलिटीज providing more efficient civic services, and the current wards or the distribution is uneven in terms of territorial divisions and revenue generating potential. इसमें क्या आपत्ति है? जो 1957 का जो मूल कानून है, ये कानून बनाने वाला ये पार्लियामेंट था। दिल्ली जिस कानून को हम आज अमेंड कर रहे हैं, ये कानून का जो मूल कानून है 1957 एक्ट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957, ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में बना गया। क्या पार्लियामेंट को ये अधिकार नहीं है? जो कानून वो बनाती है उसी का संशोधन कानून नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो इस प्रश्न का भी हमारे वरिष्ठ साथियों को इस पर भी ध्यान देना होगा। और अनंत फनन में ये कानून लाया गया, इसमें कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे पास ये इसके पहले 1957 एक्ट, द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957, उसका उद्देश्य यह था, 13 संस्थाएं दिल्ली में उस समय काम कर रही थी। आज हम 3 की बात कर रहे हैं, उस समय ऐसे 13 संस्थाएं थी, और इन 13 संस्थाओं को उसमें म्युनिसिपल कमिटी दिल्ली शादरा, म्युनिसिपल कमिटी वेस्ट दिल्ली, म्युनिसिपल कमिटी साउथ दिल्ली, नोटिफाइड एरिया कमिटी मेहरौली, ऐसे 13 बॉडीज थे। 57 एक्ट को बनाया था, और उसमें जो लिखा गया, ये मैं नीड टू हैव ए यूनिफाइड बॉडी टू एडमिनिस्टर द म्युनिसिपल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वाज स्ट्रांगली फेल्ट। ये उस बिल से मैं पढ़ रहा हूं। Accordingly, to consolidate and amend the laws relating to municipal government of Delhi, the municipal corporation bill was introduced in parliament. 13 बॉडीज को एक बनाने में तब अच्छा था, और 3 कॉर्पोरेशन बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? बिल्कुल ये राजनीतिक उद्देश्य है। ये इसलिए मैं कहता हूं, मैं कुछ ये 2011 का बिल से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें 1989 की कमिटी का हवाला दिया गया। क्या 1989 और 2011 में दिल्ली में कोई अंतर नहीं था? मैं दिल्ली आया था 1988 में, तब की दिल्ली और अब की दिल्ली में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये पुराने कमिटी को आप हवाला देते हुए आप 3 कॉर्पोरेशन अनंत फनन में बनाते हैं। इसमें आपने ये लिखा है, एक कोई नया पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये 3 कॉर्पोरेशन बनाए जाए, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, यही लिखा गया। तो इसके पहले क्या कोई हर एक कॉर्पोरेशन के उनकी एरिया क्या होगी, उनकी रिसोर्सेज क्या होंगे, इसका अध्ययन क्यों नहीं किया था? एक ही बात थी, क्योंकि बीजेपी बार बार जीतती है एमसीडी दिल्ली में, तो इसलिए बीजेपी को कमजोर करना है। तब भी वही सोच, आज भी वही सोच है आपकी। टारगेट बीजेपी इज द फॉर्मूला। हम देखिए, हम तब जो मुख्यमंत्री थी उनको भी लगता था दिल्ली भी एक म्युनिसिपैलिटी की तरह है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और दिल्ली सरकार की दायरे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बिल में लिखा, माननीय मंत्री जी ने कहा 95% ऑफ द एरिया फॉल्स अंडर द कॉर्पोरेशन। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक पर्सनालिटी वाली एक क्लैश होती है, एक ईगो इश्यू हो जाता है। मैं मुख्यमंत्री हूं, कोई मेयर कैसा हो पूरे प्रदेश का, तो इसलिए उसको बांटो, उसको छोटा छोटा करो ताकि मैं बड़ा दिखूंगा। तब भी वही मानसिकता है, आज भी वही मानसिकता है, जिसके कारण इस बिल को ये अपोज कर रहे हैं। और जो फाइनेंस कमीशन, जो 3rd फाइनेंस कमीशन के बारे में, जो 4th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद 5th फाइनेंस कमीशन भी रिपोर्ट आई। मैं फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट से 5th कमीशन से पढ़ के आपको कुछ 2 लाइन सुनाना चाहता हूं सभापति जी। इसमें यह लिखा गया, क्योंकि यहां दिल्ली प्रदेश में दिल्ली सरकार ने 4th फाइनेंस कमीशन का अमल नहीं किया है, इसके कारण तीनों कॉर्पोरेशन दिल्ली में वो पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। मैं पढ़कर सुनाता हूं। सेक्शन 9.22,
as the recommendation of the बैठ के fourth, कमेंट ना करे, आपको समय मिल चुका है। नहीं 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 नहीं, बैठिए, बैठ के कमेंट ना करे, नहीं, ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये फिफ्थ फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। बैठिए सुनिए। John Betes, when you spoke, nobody disturbed you. Why are you disturbing? दिस इज द फिफ्थ फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट, है तो खोल के देखिए, पेज नंबर 260 पॉइंट सेक्शन 9.22 मैं पढ़ रहा हूं। एज द रिकमेंडेशन ऑफ द fourth Delhi Finance Commission could not see the implementation, the recommendations of the third Delhi Finance Commission continue to operate even for the award period of the fourth DFC. फोर्थ DFC में भी आपने थर्ड का ही लागू किया, उसके बाद दैट इज फॉर वेल ओवर 5 years, 5 साल तक आपने ये काम किया है। दिस हैज बीन अ पीरियड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस हैज बीन अ पीरियड लॉन्ग इनफ to let 3 major factors break the fiscal backbone of not only an inherently weak municipality like the MCD East, but it also shook the fiscal strength of even a potentially strong municipality like the MCD North. ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है। आपने फोर्थ फाइनेंस कमीशन को लागू न करके दिल्ली के तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को कमजोर करने का साजिश किया है। यह सौतेला व्यवहार नहीं है तो और क्या है सर। इसके बाद जो अवार्ड है सालाना जो है, कुल मिलाकर 40,000 करोड़, 5 साल में जो आवंटन 5 साल में जो देना था वो न दे करके उसको 33,000 करोड़ कम दे करके तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को खत्म करने का, उससे दिल्ली की जनता को सताने का, उससे राजनीतिक लाभ उठाने का साजिश आपने किया है, जिसके लिए दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। सर, इसके अलावा जो BTA बेसिक टैक्स असाइनमेंट के तहत तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को प्रदेश सरकार को पैसा देना है, वो नहीं दिया है, टाइम पर नहीं दिया है, महीनों तक नहीं दिया है, तो इसलिए स्ट्राइक बार बार होते हैं। मैं यहां एक फॉर्मर ऑफिसर को कोट करना चाहता हूं, जो दिल्ली के सर्किल्स में एक जाने माने ऑफिसर हैं, राकेश मेहता, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के कमिश्नर रहे 2002 से 2007 तक, तो इसलिए बहुत अच्छे जानकार ऑफिसर हैं। उनका यह कहना है, द डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स टिल 2019 was based on the recommendations of the third Delhi Finance Commission report, which had no provision for a truncated municipal corporations. Recommendations of the fourth Delhi Finance Commission were not implemented. And I further read, नहीं, ये पूरा रिपोर्ट है भाई। और इसके अलावा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोल के, दिल्ली के मुख्यमंत्री गुमराह करके, दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तो आपको ठीक लग रहा था, बैठिए। सर इन्होंने दिल्ली झूठे बोले झूठे कहा जाएगा अगर इसमें कुछ, हाँ, नहीं, बैठिए सर, झूठ में आई रिपीट सर, सुनिए, वो आपके टाइम में बोल रहा है, आपका टाइम में आपने बोला है, अगर कोई अनपार्लियामेंट्री होगा वो नहीं जाएगा। बैठिए, जनता को गुमराह करने की काम करते हैं। प्लीज बैठिए। ये फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट को न मानते हुए दिल्ली के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं, अपने संवैधानिक ड्यूटीज को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं और एक जो विषय कहना, हम चुनाव से हार जाएंगे और एक फ्रिंज पार्टी से हम हार जाएंगे, जो एक कोने में केवल चुनाव में लड़ते हैं, उससे हम हार जाएंगे। आप गलतफहमी में मत रहो। ऐसे गलतफहमी में वाराणसी गए थे और कैसे लौटे देश की जनता जानती है, ठीक है? तो गलतफहमी में मत रहो,
गलत फहमी में मत रहो। यही दिल्ली में सर, इसी दिल्ली में हम 2014 के लोकसभा चुनाव डंके के चोट पर जीते, 7 के 7 जीते। 2019 में 7 के 7 लोकसभा सीट जीते लाखों मेजॉरिटी से। इसी दिल्ली में 2017 के एमसीडी चुनाव जीते बड़ी बहुमत से। तो इसलिए आपको गलतफहमी हो सकती है, दिल्ली की जनता को नहीं, दिल्ली की जनता को भी आपको छुटकारा चाहिए। क्या हमें आपके मुख्यमंत्री के भय है? ये शब्द का प्रयोग करना, इसका मैं आपत्ति जताता हूं। लेकिन ये शब्द बताने वाले संजय भाई को कहना चाहता हूं, आपको दामाद आने का भय सता रही है, इसलिए आप इस प्रकार का आरोप लगाकर आप जाइए सीट पे। इस प्रकार अगर का इसमें आरोप- कुछ आएगा मैं नहीं, अपने सीट पे जाइए। आप अपने सीट पे जाइए। आप अपने सीट पे जाइए। आप अपने सीट पे जाइए। अगर उसमें कुछ अपनी सीट पे जाओ। सर, मेरे खत्म हो रहा है। आप अपने सीट पे जाइए। मिस्टर संजय सिंह की सीट पे जाइए। अपने सीट पे जाइए प्लीज। सर, ये सरकार का सर, आप अपने सीट पे जाइए, मैं रिकॉर्ड देख लूंगा। ये तरीका नहीं है मिस्टर संजय सिंह। डोंट बी अनरूली। आई नेम इट। सर, क्या इतना भक्ति? अपने सीट पे जाइए। Honorable member, please go to your seat. If there is some objectionable, I will look into the record. Please go. आप बोलो। बैठ जाए। नरसिम्हा राव जी। चेयरमैन साहब, अभी सर, आप कंप्लीट कर रहा हूं सर। नहीं सर, प्लीज कंक्लूड। सर, हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाले पार्टी हैं। Let him complete. Let him complete. सर, Please be seated. Let him complete. No, not now. I will allow you. Let him complete. मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। After him, Mr. Jivel Narasimha Rao. कर दो ना. Please conclude. सर रुको प्लीज। सर, स्पीकर को एक ऑनरेबल मेंबर। सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हम परिवारवाद के खिलाफ सर, बैठिए। हाँ सर, हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाले पार्टी हैं, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। इसलिए कहीं बेटा बेटी दामाद का हित भी होता है, हम उस पर राजनीतिक व्याख्या करते हैं। सर, दिल्ली मॉडल Mr. Sen, be seated. Sir. Your time will come. I'll allow you. Not now. How can you do that? No, please. सर, दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। Point of order after him. सर, After him. Let him finish. सर, दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ये इनका मॉडल ये है, स्टार डेवलपमेंट, I'll allow you. स्टार डेवलपमेंट,
Now you sit. I'll allow you. So, Delhi model of governance है starve development and saturate advertisement. हर जगह अपने नेता की चित्र दिखने के अलावा कोई विकास नहीं है. आप मॉडल है, आपका दूसरा नाम है ऑलवेज प्रचार और कुछ नहीं. धन्यवाद सर. थैंक यू. Now you tell me what is your point of order, under what rule? Like. Unfortunate to note that even the point of order is not being allowed. Don't cast aspersion. I am allowing you. Don't cast aspersion. I am allowing you. The point of order was regarding his speech. No. He allowed to continue. No. That's not the proper attitude. Mr. Santanu saying you read the rules. You have a point of order. You can say now. Sir, my point of order was regarding his speech, but you didn't allow. No, you are not supposed to disturb one's speech. Sir, my point You of are not order... supposed to disturb someone's speech. If you have to say something, you say about it. Sir, point of order... Sir, point of order is not disturbing, sir. Point of order doesn't mean causing disturbance, sir. Point of order never means causing disturbance. Under which rule, Mr. Santanu said? Sir, Tell you me didn't the allow rule. me that time. You allowed him to continue, but you didn't allow me. So you don't have any point of order. Rule So I will call the 240. next speaker. Rule 240. Sir, please see. Rule 240. Irrelevance or repetition. Sir, the chairman, after having called attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by the other members in debate, may direct him to discontinue his speech. But you have continued him already. Very bad. So what is the point of using point of order? We'll look at it. We'll look at it. Dr. Fawzia Khan. थैंक यू वाइस चेयरमैन सर. सर, हमारे देश के सम्माननीय गृह मंत्री जी, जिन्होंने अपने सम्माननीय हाथों में वो डोर पकड़ी हुई है जिस पर हमारे देश के कानून व्यवस्था की पतंग सवार है सर. बेशक ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है. हमारे देश की जनता ने ये जिम्मेदारी इनको सौंपी है सर. और जमहूरियत के सांचों में इंसानियत को ढालकर भारत के निर्माण का महान कार्य की जिम्मेदारी भी भारत की जनता ने इन्हीं को सौंपी है. न्याय, भाईचारा, शांति, उन्नति, प्रगति, संस्कृति के रंगों से बने हुए इंद्रधनुष को निखारने की जिम्मेदारी भी देश की जनता ने आप ही को दी है. सर, आदरणीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा था, ये बिल संविधान के धाराओं को लेकर ही उसके अनुसार ही लाया गया है. लेकिन सर, जब इन्होंने कहा कि इसमें असंवैधानिक कुछ नहीं है, सर, आर्टिकल 239 के की उन्होंने बात की थी. एनी लॉ पास्ड बाय द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. Sir, 243P and 243R of the Constitution of India says, to constitute municipalities, the power lies with the state governments. Article 246, read with the 7th schedule, entry 7 of the state list, the power to constitute municipal corporation is the states. और जिन amendments का उल्लेख आदरणीय मनु संघवी जी ने किया, उसको भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है. एक और बात सम्माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा के अपने भाषण में कही थी. उन्होंने इमरजेंसी के बारे में बात कही थी वहाँ. सर, जो इमरजेंसी हर भारतीय की नज़र में इतिहास का सबसे निंदनीय और सबसे काला दौर माना जाता है, 1975 और 1977 के बीच में. लेकिन ये इमरजेंसी प्रावधान के अगर बात करें तो इमरजेंसी लगाने का भी तांत्रिक प्रावधान संविधान में ही था सर. उस समय बहाना चाहे कुछ हो, लेकिन तांत्रिक धाराओं के आधार पर ही इमरजेंसी लगाई गई थी. आज मैं ये पूछना चाहती हूँ सभापति महोदय कि कोई भी भारतीय आज इमरजेंसी को जस्टिफाई कर सकता है क्या? या कोई भी भारतीय, हम में से कोई भी
अगर इस इमरजेंसी को उसके पॉलिटिकल संबंध, उसके पॉलिटिकल होलसम कॉन्टेक्स्ट के बगैर हम देख सकते हैं क्या? नहीं। इस तरह का बिल सदन में लाते हुए समय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भूल नहीं सकते हैं इस बिल के संदर्भ में। सर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात सिर्फ धाराओं से हम नहीं कर सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात इस बिल के संदर्भ में कोर स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से करना आवश्यक है और कोर स्पिरिट को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सर, जस्ट गिव मी अ मिनट। लेकिन सर, संख्या के बलबूते पर तो यह बिल पास हो जाएगा, इसमें दुमत नहीं है। लेकिन इतिहास कहीं हमें वो सवाल ना करे जो सवाल आज हम इमरजेंसी पे कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। आज जो जनता ने जनादेश देकर दिल्ली सरकार में जो सरकार को बिठाई है सर, उनको जो जिम्मेदारी दी है, एक इलेक्टेड सरकार बनाई है, उन पर विश्वास रखा है। मैं ये कहना चाहूंगी आज कि अगर हमारी सरकार, हमारी यूनियन गवर्नमेंट इस बिल को पास करने से पहले उस सरकार से बात करती, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेती, उनके साथ संवैधानिक चर्चा करती, तो वो एक विशाल मन की और सही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबूत होता था सर। आज तो बात ऐसी हो रही है कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, जो करे सो आप करे, हमको अबस बदनाम करे। सर, मुझे ये बात आखिर में आप करने दीजिए कि government should not become like a three-armed man where one arm is used to pat your own back all the time. Sir, I request the Honorable Home Minister to please withdraw this bill and give justice to the government, Priyanka to the nation. Thank you so much, Honorable Sir. I won't take too much of your time. एकदम से फटाफट। सर, गृह मंत्री जी ने बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बातें कही थी अपनी ओपनिंग स्पीच में। उन्होंने कहा था ये यूनिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि करप्शन है, पॉलिसीज़ में डिफरेंसेस हैं, अनइक्वल एक्सेस है। हम सब इससे सहमत हैं कि अगर कोई निर्णय लेना है तो निर्णय होना चाहिए। पर मैं यहाँ पर जब आई थी, राज्यसभा में जब आई थी, मैं संविधान की शपथ लेकर आई थी और वो संविधान मुझे बताता है कि अंडर सेक्शन 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे अर्बन गवर्नेंस की बात होती है, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात होती है। तो आज दिल्ली की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, पर हम उन MLAs को वंचित कर रहे हैं जो दिल्ली की ही जनता ने चुनकर उनको असेंबली में भेजा है और हमने उनसे पूछा भी नहीं है कि वो ये यूनिफिकेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सर, ये तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मैंने बात की है। अगर मैं साथ में आर्टिकल्स 243P, 243R एंड 246S ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मैं बात करती हूँ, तो वो भी कहता है पावर फॉर यूनिफिकेशन और ट्राइफिकेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज ऑफ दिल्ली वेस्ट विद द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड नॉट विद द यूनियन गवर्नमेंट। Sir, we are talking about federal cooperation and also talking about constitution and democracy. आज इनकी सरकार है, शायद नहीं रहेगी, कल इनकी सरकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, शायद नहीं रहेगी। वाजपेयी जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहकर गए थे, सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीतिक पक्ष उभरेंगे और गिरेंगे भी, पर जो हमारा संविधान है और जो हमारा प्रजातंत्र है उसका हनन कतई नहीं होना चाहिए। तो आपके माध्यम से सर, मैं माननीय गृह मंत्री को यही कहना चाहूंगी, जरा इस पे पुनः विचार करें और यहाँ पे जो दिल्ली असेंबली है, जो इलेक्टेड दिल्ली असेंबली है, उनसे भी सलाह मशवरा कर ये निर्णय लें। थैंक यू सर। थैंक यू। श्री विवेक ठाकुर जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी को नववर्ष विक्रम संवत 2079 चैत्र नवरात्रि एवं चैती छठ की शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। यह बिल विगत 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और पारित भी हुआ। महोदय, कल जब दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर मैं उतरा, हम लोग में से कई हफ्ता के अंत में अपने क्षेत्र जाते हैं और सोमवार सुबह आते हैं जब सत्र चलता है। उसी क्रम में मैं भी आया, एयरपोर्ट पर एक स्टैंडी देखा
और उसमें मिर्जा गालिब की 2 लाइनें अंग्रेजी में लिखी हुई थी। मैंने नोट किया, मुझे लगा कि सदन में बताना यह अनिवार्य है, और संयोग से मुझे आपने ये मौका दे दिया बोलने के लिए। उस पर लिखा हुआ है, आई आस्क्ड माई सोल व्हाट इज दिल्ली, शी रिप्लाइड द वर्ल्ड इज द बॉडी एंड दिल्ली इट्स लाइफ। महोदय, दिल्ली नगर निगम पूरे राजधानी क्षेत्र के 95% हिस्से की नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी उठाता है। ये सब अब हम सब भली भांति जान गए हैं। तीनों निगम में लगभग 1,20,000 कर्मचारी काम करते हैं, ये भी हम जान गए हैं। कई वक्ताओं ने इस फैक्ट और फिगर को बोला भी है। राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण यहाँ पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सचिवालय, दूतावास और कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स के स्थान के साथ साथ कई अहम इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली के तीनों नगर निगम के ऊपर पूरी तरह से है। मेरे मित्र ने बहुत विस्तार से 1957 की एक्ट की चर्चा की। 13 बोर्ड थे, कमिटी थी और 2 एक्ट भी थे जिसके तहत चलता था उस समय का दिल्ली, और मल्टीप्लिसिटी के चलते यह एक्ट लाया गया। अब समझिए 2 एक्ट भी थे और उसमें ठीक ही बोला कि लिखा हुआ था, विथ सो मेनी बॉडीज एंड लोकल अथॉरिटीज लुकिंग आफ्टर द म्युनिसिपल अफेयर्स, complications and problems were being faced by various authorities as well as by the public. A need to have a unified body to administer the municipal government of Delhi was strongly felt. Accordingly, to consolidate and amend the laws relating to the municipal government of Delhi, the Municipal Corporation Bill 1957 was introduced in the Parliament. महोदय, स्थिति वही है आज, और यह एक्ट हमारे पूर्वजों ने बड़ा सोच समझकर दिल्ली और दिल्ली वासियों के हित में बनाया था, और दिल्ली इस एक्ट के तहत बहुत सुंदर और सुचारू रूप से चली। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2011 तत्कालीन कांग्रेस की दिल्ली सरकार और केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई की यूपी सरकार ने जो ये विधेयक को लाकर दिल्ली नगर निगम को खंड खंड में बांटा, यह समझ नहीं आया। परिणाम यह हुआ कि बीते समय के साथ दिल्ली की व्यवस्था, जो पूरी सिविक व्यवस्था थी, चरमराती चली गई और दिल्ली बन गई बेदिल दिल्ली। आज महोदय 10 साल हो गए, अनुभव भी सामने आ गया, विश्लेषण तथ्यों पर हो रहा है, और उसके उपरांत ये भारत सरकार ने निर्णय किया है कि अनिवार्यता वही है, गो बैक टू द बेसिक, फिर से एक बार तीन निगमों को एक करके पूर्ववत स्थिति की जाए, और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। महोदय, बड़ा आनंद फानंद में बंटवारा हुआ था, सही कहा गया है। कोई विवेक का इस्तेमाल इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं देखने को नहीं मिलता है। रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, नीतियों का मतलब कोई सब में समानता नहीं। बड़ी एक विचित्र स्थिति में दिल्ली चली है पिछले 10 साल में, और वो युग था 2011-12 का, ये सब जो काल था, शासन जमींदारी की व्यवस्था के जैसा चलता था, किसी निजी हित या निजी स्वार्थ के चलते, ना कि जनहित में कई निर्णय भारतवर्ष में हुए, और उसी क्रम में दिल्ली को बेदिल दिल्ली बनाने वाला भी यह निर्णय हुआ। महोदय, मैं उस समय की खबरें पढ़ा तो बड़ा स्पष्ट पॉलिटिकल डिजाइन इसके पीछे से उभरा। 12-13 जनवरी 2012 में दिल्ली के अखबारों में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का स्टेटमेंट, और उसमें उन्होंने कहा, मतलब इतने लंबे अरसे तक वो मुख्यमंत्री रही, और जब पत्रकारों ने पूछा कि आपका अचीवमेंट इतने दशकों का क्या रहा है, लगभग 13 साल का, तो उन्होंने अपने मतलब वक्तव्य में कहा कि द सिंगल बिगेस्ट थिंग वी डिड इन द लास्ट 13 years was the trifurcation of MCD। ये एक अजीब मनोभाव दर्शाता है कि ऐसा इंसिस्टेंस और रिजिडिटी, और सबसे बड़ा अचीवमेंट पूरे 13 साल के शासन का यही था। ये 370 नहीं था महोदय, ये 370 नहीं था। वो तो आन बान का एक चीज था पूरे भारत के लिए, लेकिन ये तो दिल्ली खंडित हो गया और दंश झेलती रहे दिल्ली की आम पब्लिक, आम जनता। महोदय, बहुत वर्षों से एमसीडी में भाजपा, मतलब दशकों से कह सकते हैं, लगातार जीतते आई,
और इससे लगता है कि जो आधिपत्य की राजनीति करने में दिल्ली सरकार को बाधा पहुंचती थी तब, और लगता है कहीं आज भी, ये एक स्टेप मदरली एटीट्यूड निगमों के प्रति बड़ा स्पष्ट रूप से प्रमाणिक होता है। आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा। महोदय, इस बिल पर तरह तरह की लीगैलिटी आधारित आपने उसमें क्या प्रोविजन किया, इस पे भी चर्चा हुई। देखिए महोदय, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स इस बिल के अंदर है। पार्षदों की संख्या 272 से कम करके ज्यादा से ज्यादा 250 तक सीमित करने का प्रस्ताव भी है। ई गवर्नेंस सिस्टम दिल्ली की जनता के लिए एनी टाइम एनीवेयर बेसिस पर स्थापित होगा, पारदर्शी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में। इस बिल पर लोकसभा और आज मैंने देखा राज्यसभा में भी चर्चा के दौरान कुछ कांग्रेस के सदस्यों ने इस बिल के लीगैलिटी पर क्वेश्चन किया, और इसको डिकोड करेंगे तो दिल्ली नगर निगम विधेयक बिल 2022 संविधान के अनुच्छेद 239A के प्रदत्त संविधान के अनुसार लाया गया है, और संविधान के अनुच्छेद 239A 3B एंड C के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उसके संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पे साफ साफ स्पष्ट किया है। इसलिए सरकार यह विधेयक एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाई है, और यह पूरी तरह से संवैधानिक है, और इस बिल में निर्वाचन की प्रक्रिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, और इसमें संघ राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण भी नहीं है। महोदय, फाइनेंस कमीशन के संबंधित बड़ी विस्तृत बात होगी। सार इतना ही है, जो फाइनेंस कमीशन चौथी बैठी, पांचवी बैठी, कहा पैसा दे दो, पैसा नहीं मिला। एमसीडी को देना था दिल्ली सरकार, ये भी पहले तय हो गया था। इसलिए मैं विस्तृत फिगर में जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि विधानसभा में जो वर्तमान सरकार है वो फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को सीधे तौर पे कह दिया कि हम नकारते हैं, और वहां पे स्वीकारा कि 17,000 करोड़ देंगे। इसलिए वो क्या डिफिसिट फंसा उसमें नहीं फंसना है। मजेदार बात यह है कि जब सदन में स्वीकार लिया 17,000 करोड़ देंगे, तो उसके बाद भी दिए केवल 6,129 करोड़। तो बात की गंभीरता क्या सदन क्या बाहर, इसकी अनुभूति धीरे धीरे दिल्ली को भी हो रही है, हम सबको भी हुआ है, और कोविड काल में तो पूरे भारत ने देखा है। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस चला रहा। चूंकि बीजेपी एमसीडी में काबिज है तो इसको डिफंक्ट कर दो। क्या जनहित और जन सेवा की संस्था ऐसे मारा जाना गवर्नेंस है? जो संस्थाएं यानी तीनों नगर निगम दिल्ली के 95% आबादी के जन सुविधाओं का दिल्ली के रख रखाव, सफाई, सौंदर्यीकरण, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर दायित्व है, उसके प्रति इतना पूर्वाग्रह एटीट्यूड रखने से क्या दिल्ली किसी भी सूरत हाल में वर्ल्ड सिटी बन सकता है जिसका इन्होंने घोषणा किया? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय। और तो और छोड़िए, हाईकोर्ट के रूलिंग के बाद भी कॉम्प्लायंस नहीं हुआ। मेरे मित्र ने एक टिप्पणी भी पढ़ी होगी जो हाईकोर्ट ने कहा, संक्षिप्त में है, वी अकॉर्डिंगली अलाउ दिस एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द GNCT टू रिलीज इन द करंट फाइनेंशियल the remaining amount due towards BTA to the three corporations on the basis of their own revised estimates presented in the budget for the year 21-22. कुछ हमारा नहीं है, न मेरे पार्टी का, न मेरे किसी नेता ने बोला, यह कोर्ट का टिप्पणी। महोदय, कैसे चलेगा दिल्ली? राजनीतिक प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन इसका मार झेल रही दिल्ली की आम जनता, क्या यह न्याय संगत है? यदि आपकी समस्या बीजेपी से है तो करिए ना झगड़ा, हम भी तैयार हैं, लेकिन उसका दंश दिल्ली की आम जनता क्यों झेले? इसका भी तो जवाब तय कहीं खोजना पड़ेगा। महोदय, दिल्ली के 3 भाग जब हुए, ये हम सब जान गए हैं कि मतलब चूंकि पुअरली कंसीव्ड, इल प्लान्ड पूरा चीज हुआ। अलग अलग संख्या थी टैक्स पेयरों की, एक ईस्ट और साउथ में लगभग 2-2 लाख का डिफरेंस था। तो अब प्रश्न यह होता है कि एमसीडी को टैक्स मिलता कहां से? रेवेन्यू रिसोर्सेस क्या है? तो प्रॉपर्टी टैक्स है, एडवर्टीजमेंट है, प्रोफेशन टैक्स है, ट्रांसफर ड्यूटी टैक्स है, पार्किंग है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। लेकिन ये सब कलेक्ट करती है दिल्ली सरकार। लेकिन एमसीडी तब चलेगी जब दिल्ली सरकार यह पैसा एमसीडी को देगी, तभी तो। दिल्ली सरकार कलेक्ट करती है,
उस पर अपना कमीशन और सर्विस चार्ज काट कर एमसीडी को देना है, तो यह गला घोंट व्यवस्था के अलावा और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था महोदय। तो देश बड़ा स्पष्ट था, एमसीडी मजबूत हुई तो राजनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी बार बार जीती। महोदय, दूसरी तरफ जो 3 निगम हैं, उसने अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए निरंतर रूप से प्रयास किया और अनुमति मांगी। दिल्ली सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 3 प्रपोजल दिए, एक नहीं 3। पहला 2020 में प्रस्ताव दिया, हम कमर्शियल टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं, इससे हम रेवेन्यू बढ़ा लेंगे, इसकी हमें अनुमति दी जाए। हुआ क्या? परमिशन डिनाइड। पार्किंग के द्वारा हम इनकम बढ़ा लेंगे, हुआ क्या? परमिशन डिनाइड। फिर तीनों कॉरपोरेशनों ने कहा कि हम अपना बॉन्ड जारी कर सकते हैं, परमिशन पेंडिंग है, डिनाइड ही मान लिया जाए। अगर दिल्ली के तीनों एमसीडी अपना रेवेन्यू लेना चाहती है तो आखिर आपत्ति है क्या दिल्ली सरकार को? ये थोड़ा समझना हम सब चाहते हैं। मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है, ये सिंपल केस ऑफ हाइट ऑफ सैडिस्टिक गवर्नेंस है और उसके अलावा कुछ नहीं। महोदय, कि इसमें यह बताइए कि उन सफाई कर्मचारी, टीचर जो पढ़ाते हैं, पेंशनधारी, जो विधवा है, विडोवर्स हैं, ओल्ड एज होम यानी जिसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, जो सेंटर्स का मेंटेनेंस ना हो सके, ऐसी घृणित राजनीति करके गरीबों और जरूरतमंदों को वंचित अवस्था में रखना, ये सैडिज्म नहीं है तो और क्या है? महोदय, दिल्ली में आयुष्मान भारत जो सिर्फ गरीब की स्वास्थ्य की चिंता करता है, वह लागू नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं, यह सदन तय करे। वित्तीय बात हो रही है, बहुत वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर रहे हैं जवाहर जी, उन्होंने बड़ा लंबा एक रेवेन्यू डेफिसिट और एक्सपेंडिचर की बात की। मैंने कहा कि देखिए, पृष्ठभूमि 11 में लिखा आपने, उस समय जब बैलेंस शीट था तो लगभग 1800 करोड़ का बैलेंस शीट था, जो एमसीडी का, जब बाइफरकेशन ट्राइफरकेशन के पहले किसी तरह का ग्रांट रेट दे देती दिल्ली सरकार, स्क्वायर अप हो जाता, एक नए बैलेंस शीट के साथ तीनों निगम बाजार में उतरते और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आगे बढ़ते। लेकिन ना, ये हो नहीं सका, और ग्रेजुअली उसके बाद उसका जो ये गला घोंट व्यवस्था में फंसा दिल्ली का एमसीडी, तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू आप देखिएगा तो इतना बड़ा गैप होते गया कि ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्सपेंडिचर है लगभग 2500 करोड़, रेवेन्यू है 628 करोड़। नॉर्थ का है लगभग एक्सपेंडिचर 5000 करोड़, तो रेवेन्यू है 3100 करोड़ के आसपास। साउथ है 4000 करोड़, तो रेवेन्यू है 2300 करोड़। ये डेफिसिट का देखिए आलम, और कुल का उस समय 1800 करोड़ था। और अलग अलग जोन से उस जमाने के पदाधिकारी कहते हैं कि हम एक दूसरे को ऑफसेट भी कर लेते थे, लेकिन मंशा कुछ और थी। और देख लीजिए महोदय, अब जो सोशल एस्पेक्ट है, इतने कॉन्स्टेंट्स और कमी के बावजूद भी दिल्ली में एमसीडी में 8 लाख गरीब बच्चों को पढ़ाती है और निःशुल्क पढ़ाती है, दोपहर का भोजन भी देती है, यूनिफॉर्म भी देती है और किताब भी देती है। ऐसे लगभग 1616 स्कूल चलते हैं एमसीडी के द्वारा। अब महोदय, वहीं दिल्ली सरकार के अधीन 6 से 12वीं कक्षा तक के 1026 स्कूल है और इनका बहुत एडवर्टीजमेंट भी होता है, लेकिन उनकी अंदरूनी हकीकत सुनिएगा तो ताजुब करेंगे आप। महोदय, 392 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं, 363 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। मैं दावा करता हूं महोदय कि अगर 90% लोग दिल्ली में हाहाकार में रहते हैं कि हमारे बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला हो, तो यही सब तो कारण है, और है क्या? और जो विज्ञापन हम देखते हैं महज 15-20 से अधिक नहीं है महोदय, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, कई चीज ये सब रिपोर्टेड चीजें। अब देखिए कि तीनों एमसीडी ने मिलकर 95 स्कूल बिल्डिंग बनाए, और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली जो है उसके अनुसार दिल्ली सरकार ने केवल 20 नई बिल्डिंगें बनाई। महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस बिल के पेश होने के बाद सदन में दिल्ली में रिएक्शंस क्या क्या है। संजय जी की पार्टी यहां पर रूल करती है, उनको लगता है कि सब कुछ हमें पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये आगे मैं बताऊंगा, मैं भी बोल रहा हूं, पेपर भी बोल रहा है, कि जो रिएक्शंस आए इस बिल को पेश होने के बाद, अलग अलग मतलब समाज के लोगों द्वारा, सेक्शंस द्वारा,
ये सबको जानना जरूरी है, संजय जी को खास करके। जब तीनों निगम का बंटवारा गलत और अविवेकी था तो यह बिल पेश हुआ, तो उसको दो मेरे मित्र ने बताया है। लास्ट एमसीडी कमिश्नर ने क्या कहा, वो राकेश मेहता का कहे, और जो लास्ट थे उनका नाम था केएस मेहरा। उन्होंने दोनों का एक संयुक्त एक तरह से विचार था कि रियूनिफिकेशन इज अ गुड आइडिया फॉर इंप्रूविंग गवर्नेंस ऑफ द नेशनल कैपिटल। ये सब कमिश्नर रहे हैं, अपने जमाने की बात कर रहे हैं। We had better discipline and much senior cadre officers at the helm of affairs before 2012. We don't need 3 engineering chiefs, 3 commissioners, and 3 HODs for everything. Empowering the 12 deputy commissioners and zonal bodies would suffice. Prior to trifurcation, there were 12 administrative zones, and the number remained the same even after it was split. The exercise led to greater प्लीज पीछे बैठकर आपस में बात ना करें, प्लीज पीछे बैठकर। अब देखिए, सुभाष आर्य बेचारे कहे उस जमाने की बातों को याद करके कि पहले मेयर और जो कमेटी होती थी उसका अवधि 5 साल का होता था, अब 1-1 साल का हो गया। जब तक संभलता है मेयर और कमेटी, उसका अवधि समाप्त होता है। कैसे चलेगा प्रशासन? दिल्ली के अतुल गोयल जी है कौन? यूनाइटेड RWA जॉइंट एक्शन कलेक्टिव बॉडी है ऊर्जा, उसके वो हेड है। वो क्या कहते हैं कि कंडीशन ऑफ ड्रेन, स्ट्रीट्स एंड जनरल सैनिटेशन शोज दैट दिल्ली इज सफरिंग एंड दैट यूनिफिकेशन हैज बीन आवर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। शीला जी के साथ एक बड़े वरीय ब्यूरोक्रेट काम करते थे, योगेंद्र मान, बहुत लंबा बोला, लेकिन एक लाइन में अगर उसको अगर आप करते हैं तो उनका बस यही कहना था कि ट्राइफर्केशन वाज नथिंग बट ट्रबल इनटू 3 टाइम्स। महोदय, कर्मचारी का भाव क्या है? हम सब गरीब की बात करते हैं, थोड़ा उसकी भाव भी चर्चा कर लें। ये एपी खान हैं कौन? कन्वीनर हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज यूनियंस के। क्या कहते हैं? उनके हिसाब से there were no salary delays since MCD came into existence in 1957 till 2012. The trifurcation happened and lakhs of employees and 60,000 pensioners are suffering. This unification was needed much earlier. Conclude बस सर, खत्म करो। सर, मेरा ये कहना है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये हम सब समझें और दिल्ली की सरकार समझे और सहयोग करे और मिलजुल के दिल्ली के हित में निर्णय करे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जनता कहेगी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आप ही आती। महोदय, सूची बड़ी लंबी है, मतलब, लेकिन लगता है कि काफी कुछ एक विज्ञापन की बात होती है, फिस्कल डेफिसिट है यहाँ पर, और मतलब इकोनॉमी दिल्ली का सरकार की जो है एकदम शैम्बल्स में है जिसको कहते हैं। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल हुआ बीते कोविड काल में महोदय, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 12 जून को 2020 को समय में प्रिंट ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल है, मैंने नहीं बोला, प्रिंट ने लिखा, अरविंद केजरीवाल हैज रन आउट ऑफ एक्सक्यूजेस ओवर हिज कोविड फेलियर इन दिल्ली, a wasted lockdown with no creation preparation of, बस खत्म कर रहा हूं सर, of the medical infrastructure. We had been warned of what was in the coming. If it was to be like this, lives can't be saved. माननीय विवेक जी, आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट कोट कर रहे हैं सर। अगर प्लीज उस समय की जो हालात थे सर, अगर भगवान न करे कभी दोबारा हाल हो, तो वर्ल्ड कैपिटल की जो बात कर रहे हैं सर, ये किसी भी समय ये फलीभूत नहीं होने वाला है सर। और यह बिल इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब नहीं तो कब सर, जब फसल सूखकर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। थैंक यू सर। इसी बात से अंतिम में मैं सबसे यह आग्रह करूंगा कि इस यूनिफिकेशन बिल का सभी लोग समर्थन करें, क्योंकि दिनकर ने सही कहा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का जवाब। माननीय उप सभापति महोदय, मैं जो बिल लेकर सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें श्री अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर श्री विवेक ठाकुर जी तक
पक्ष और विपक्ष के 20 सांसदों ने अपने अपने विचार इस बिल पर रखे। कुछ स्पष्टताएं भी मांगी गई, कुछ पॉलिटिकल कटाक्ष भी किए गए, कुछ हमारी मंशा पर सवाल भी उठाए गए और कुछ रचनात्मक सुझाव भी आए। मगर सभी प्रकार से सभी सदस्यों ने जो कुछ भी विचार इस सदन के पटल पर रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। उपसभापति महोदय, जब मैं बिल पायलट कर रहा हूं तो मेरा दायित्व है कि बिल के बारे में जितनी भी बातें उठाई गई हैं, वो सभी बातों को बिल पायलट करने वाले मंत्री के नाते स्पष्टता मुझे सदन के पटल पर रखनी चाहिए और मैं एक एक कर सभी चीजों का जवाब इस सदन के सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये बिल लाने की भारत सरकार की संवैधानिक क्षमता पर सवाल उठाया गया कि भारत सरकार ये बिल ला सकती है या नहीं ला सकती। और उस वक्त मान्यवर 1.5 साले फेडरल स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजों के भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। मैं सबसे पहले इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 239 ए में प्रदत्त संसद की शक्तियों के अनुरूप लाया गया है। अगर इसको ध्यान से कोई पढ़ लेगा तो सारे कंफ्यूजन वहीं पर समाप्त हो जाए। अनुच्छेद 239 ए के साथ अनुच्छेद 239 ए 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 239 ए 3C, इसके तहत संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप को बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय ढांचे की बात सारे लोग करते हैं। कल कोई तमिलनाडु में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ना जी, मैं नहीं कर सकता वहां पर, क्योंकि वह पूर्ण राज्य है। आप ये सारी आर्ग्यूमेंट करते वक्त ये भूल जाते हैं कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र पूर्ण राज्य नहीं, इसका यूटी से भी एक अलग स्टेटस है और इसके लिए संविधान के अंदर अलग प्रोविजन है। और जो कहते हैं कि हम पावर हंग्री हैं, मान्यवर, ऐसा जो लोग कह रहे हैं वो जरा आईने में अपना चेहरा एक बार देख ले, उन्होंने क्या क्या किया। मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, 2014 से लेकर अब तक देश में कई चुनाव लड़े हम, कई चुनाव हारे भी, कई चुनाव जीते भी। न हमें हारने का भय है, न जीतने का अहंकार है। मान्यवर, हम तो वो पार्टी से आते हैं जिनके कभी लोकसभा में 2 सदस्य हुआ करते थे और वो 2 सदस्य देखकर कांग्रेस की ट्रेजरी बैंक से ताने लगाए जाते थे, हम 2 और हमारे 2। शक्ति सिंह भाई ने ठीक ही कहा
जो इतिहास को भूल जाते वो इतिहास बन जाते हैं। शक्ति सिंह जी, ये कहावत नहीं, मैं तो सदन में ही देख रहा हूं। जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास ही बन जाते हैं। जो ताने लगाते थे साहब हमें कि हम दो हमारे दो, उनको मालूम नहीं था लोकतंत्र में सर्वशक्तिमान परिवार नहीं होता है, 130 करोड़ की जनता हो, 130 करोड़ की जनता हो। और आज भी मैं कहता हूं, जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। हम नहीं भूले इतिहास को। मान्यवर, मैं इस बात पर बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं जो फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देते हैं और यहां पर जो चर्चा होती है उसमें हम अनजाने में, अज्ञान से या आशय के साथ जो भी बात करते हैं इसको देश श्रद्धा से देखता है। अगर गलत बात करते हैं तो गुमराह भी होता है। इसलिए मेरा दायित्व है कि जो गलत बातें करी गई है उसका मैं एक एक कर स्पष्ट उल्लेख करूं। ये बिल फेडरल स्ट्रक्चर पर किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से कोई आघात नहीं करता। मान्यवर, फेडरल स्ट्रक्चर पर तो आघात तब होता जब किसी पूर्ण राज्य के लिए मैं बिल लेकर आता। सबको मालूम है दिल्ली संघ राज्य है और राजधानी क्षेत्र के सरकार का एक अलग कानून है, इसके लिए एक अलग प्रोविजन किया है। और जो लोग सत्ता में हैं और हर रोज आहे तौबा करते हैं, उनको चुनाव लड़ते वक्त ये देख लेना चाहिए कि लड़ने के बाद कितने अधिकार मिलेंगे। अगर ये अधिकार से संतुष्टि नहीं है तो नहीं लड़ना चाहिए। आप संघ राज्य क्षेत्र का, एनसीडी का चुनाव लड़ो, यहां राजधानी क्षेत्र का चुनाव लड़ोगे और मांग और महत्वाकांक्षा पूर्ण राज्य की रखोगे, ये तो संभव ही नहीं। कहीं न कहीं आपकी सोचने में थोड़ा फर्क है। इसको रिपेयर कर लीजिए तो सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी। इसको समझने के लिए मान्यवर स्पिरिट से संविधान को देखना पड़ेगा। अभी कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी जी और शक्ति सिंह भाई भी यही बात को कहते हैं। हालांकि शक्ति भाई बाद में मोरालिटी पर आ गए संविधान से निकलकर, परंतु मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, जब ये कानून लाया गया तब तत्कालीन देश के गृह मंत्री ने जो बात कही है मैं पढ़ना चाहता हूं, और मैं बता दूं वो हमारी पार्टी के नहीं थे, उन्हीं की पार्टी के श्री चिदम्बरम जी थे और बहुत अच्छे धाराशास्त्री भी हैं। उन्होंने जो मैं कह रहा हूं वो सभी लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 300 और 239A 3C के तहत परंतु के आधार पर डीएमसी अधिनियम 1957 में संशोधन करने वाला अगर विधानसभा करती है तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के बगैर अमल में नहीं आ सकता। एक, इसके अलावा संसद के पास केंद्र शासित प्रदेश GNCDTD के लिए किसी भी मामले, ब्रैकेट में उन्होंने स्पष्ट किया अपनी पेन से, अर्थात तीनों सूचियों में से कोई भी मामला के संबंध में कानून बनाने की समवर्ती शक्तियां निहित है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 239AA 3C के दूसरे प्रावधान के तहत भले ही संशोधन अधिनियम को सहमति दी गई हो, संसद मतलब वो अधिनियम जो दिल्ली सरकार ने पारित किया है, सहमति दी गई हो, संसद किसी भी समय एक ही मामले में किसी भी समय एक ही मामले में कोई भी कानून बना सकता है, इसको संशोधित भी कर सकता है, इसको निरस्त भी कर सकता है, जो मैं कर रहा हूं। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आज चिदम्बरम साहब क्यों नहीं आए, होते तो काफी स्पष्टता हो जाती
वही खड़ा होकर इनको समझाते थे कि बैठ जाओ भैया, मैंने ही कहा है, आप काहे पे सारी बवाल कर रहे हो। अगर होते तो कह भी देते मान्यवर, मगर मालूम नहीं कल मेरा भाषण सुनकर ना आए या इनको थोड़ी सरलता रहे बात करने की, इसलिए नहीं आए। मैं कल पूछने का प्रयास करूंगा अगर मेरा फोन वो उठाएंगे तो। मान्यवर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपने भाषण के अंदर लोकतंत्र, फेडरल स्ट्रक्चर, ये सारी बातें कही। अभिषेक मनु सिंघवी जी अगर टीएमसी से आते तो थोड़ा बहुत करते तो मैं अलग जवाब देता, मगर कांग्रेस से आते हैं, इमरजेंसी डालने वाली पार्टी, एक ही अधिनियम देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेने वाली पार्टी, विपक्ष के 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को कोई दोष के बगैर जेल में डाल देने वाली पार्टी। मान्यवर सभी, मैं बताता हूं क्या व्यवस्था है, मैं बताता हूं। प्लीज 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 माननीय गृह मंत्री जी बोले कृपया सीट पर बैठ कर। मान्यवर प्लीज, सारे देश के अखबारों की स्वतंत्रता का गला घोटने वाले पार्टी, पिक्चर के गाने ड्यूएट होते थे, वो भी किशोर कुमार की आवाज छुपा देने वाली, कटवा देने वाली पार्टी आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। और फौजिया खान जी ने ठीक कहा, प्लीज प्लीज, फौजिया खान जी ने ठीक कहा प्लीज कि कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा। आज भी ये समर्थन कर रहे, मुझे रोक टोक कर आज भी समर्थन कर रहे हैं। मान्यवर फौजिया खान जी ने ठीक कहा कि देश में इमरजेंसी का कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना करना चाहिए, ना आज भी मैं आपको कहता हूं मत करिए, वरना बहुत दिक्कत है। प्लीज 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 प्लीज, माननीय गृह मंत्री प्लीज, मान्यवर बोले सीट पर, सीट पर मान्यवर बोले, प्लीज प्लीज। तो आप टिप्पणी आप नकारते हैं क्या? प्लीज आपस में बात न करें प्लीज। मान्यवर उन्होंने कहा कि प्लीज प्लीज, मान्यवर उन्होंने कहा कि केवल और केवल भय के कारण ये बिल लाया गया है। भय किस बात का भय? चुनाव के हार का भय? हम तो लोकतंत्र में मानते हैं हार कभी भी किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी जनता जो तय करेगी वो जीतेगा, नहीं करेगी वो नहीं करेगा। मगर एक मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, भय किसको है मान्यवर? क्यों अभी चुनाव कराना है? 6 महीने बाद करोगे तो हार जाओगे क्या? भय किसको है? हम एक व्यवस्थापन खड़ा करने के लिए 6 महीना मांग रहे हैं, तो बाद में हार जाओगे क्या? लोकप्रियता डाइल्यूट हो जाएगी क्या? मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि निचले मतलब स्थानीय निकायों के अंदर चुनाव समय पर होना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है अभी? कितने चुनाव अटका कर बैठ गए? क्यों बैठ गए? अगर स्पीड थी तो भाषण में कहते हमारी महाराष्ट्र सरकार भी ठीक नहीं कर रही है। और ये हमारे माननीय सदस्य तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार जी बोले, मैं जवाहर सरकार जी को बताना चाहता हूं, जवाहर सरकार जी अभी क्या हुआ है बंगाल के अंदर, जरा बोल देते अच्छा लगता। आप तो कम से कम स्पिरिट वाले लगते। 2020 में चुनाव होना था, 22 में कराया, कोई कारण नहीं। और एडमिनिस्ट्रेटर भी अपने एमएलए को बनाया, अपने एमएलए को बनाया। क्या बोल रहे हैं भैया आप? कहां बोल रहे हैं? ये अज्ञानियों का मेला है क्या? कोई बंगाल को नहीं देखता? हम देख रहे हैं साहब। कम से कम आप तो मत बोलिए, आप तो मत बोलिए, और लोग बोले जिन्होंने नहीं किया है। और आज भी मान्यवर 2022 हो गया, 20 में चुनाव ड्यू थे, 4 कॉरपोरेशन और 108 नगर पालिकाओं में चुनाव नहीं कराया गया है। कोई कारण भी नहीं कहता है।
और हमें पूछ रहे हैं कि चुनाव ठाल रहे हो। अरे भाई, जरा आईने में अपने आप को देखो, आत्मचिंतन करो। हमें पावर हंग्री कहा जा रहा है। मैं कभी नहीं छिपाता माननीय, और मैं कह देता हूं, मैं चाहता हूं कि हर चुनाव में मेरी पार्टी जीते, ऐसी मेरी मंशा भी है और हम प्रयास करें। इसमें कोई बुराई नहीं है। लोकतंत्र में हर दल ये प्रयास करेगा। तो क्या आप चुनाव हारने के लिए मैदान में उतरते हो? हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरती है, मगर हमारा रास्ता कार्यकर्ताओं को मार देने का नहीं है जवाहर साहब, कार्यकर्ताओं की पत्नियों पर बलात्कार करने का नहीं है, उनको उड़ीसा तक भाग जाना पड़े, ये हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता चुनाव का रास्ता है और चुनकर हम आना चाहते हैं, लोकतंत्र के आधार पर आना चाहते हैं। हमारी मंशा पर कैसे सवाल कर रहे हैं मान्यवर? मैं बताना चाहता हूं ये क्यों लाना पड़ा है। आज मैं जब यहां पर हूं तब संजय भाई ने कहा फोबिया हो गया है। संजय भाई की तरह भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर सकता मान्यवर। आजकल कर मुझे 27 साल हो गए किसी ने किसी विधायिका में रहते हुए, मैं इसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, परंतु सदन की मान्य भाषा में जवाब जरूर दूंगा और मेरा अधिकार है मान्यवर। उन्होंने कहा कि फोबिया हो गया है। अरे भाई, फोबिया कैसे होगा, किसको होगा? आप हमारी डिपॉजिट जमानत का आधा डेटा लेकर आए, मैं दे देता हूं। बहुत इससे भी ज्यादा गई है हमारी जमानत, कोई नई बात नहीं है। मगर एक म्युनिसिपैलिटी जीतकर हम ऐसा नहीं कहते थे कांग्रेस को हमारा फोबिया हो गया है, ऐसा अहंकार हम नहीं पालते थे। हम भी देखे हैं समय भाई, बोटाद में आनंद हो जाता था, कह रहे भाई चलो एक बार म्युनिसिपैलिटी जीत गए, परंतु बाद में यहां आकर अटल जी ये नहीं कहते थे कि जवाहरलाल जी आपको अटल बिहारी वाजपेयी का फोबिया हो गया। मान्यवर, इस चुनाव में ऐसा क्या परिणाम आया है, क्या परिणाम ऐसा आया जिससे हम डरे? मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर उनको 0.38% वोट मिला है आप पार्टी, और 349 डिपॉजिट जब्त हो गई और 306 जगह नोटा से भी कम वोट मिला है। नहीं, मैं फोबिया का जवाब दे रहा हूं रमेश भाई, हमें फोबिया होने का कोई कारण ही नहीं है। मैं जवाब देता हूं पूरा। उत्तराखंड में 68 जमानत जब्त हो गई 70 में से, गोवा में 39 में से 35। प्लीज 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 बोलता हूं मैं। माननीय एलओपी प्लीज प्लीज सीट पर बैठकर बात करें। माननीय एलओपी प्लीज प्लीज प्लीज। और मान्यवर, कोई माननीय गृह मंत्री के अलावा अभिषेक किसी की मनु बात सिंघवी जी ने कहा, प्लीज। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि हम भय से और भय के आक्रांत से बिल लेकर आए। मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों में 454 जगह पे उनकी डिपॉजिट, मुझे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। 4 राज्य में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने फिर से सरकार बनाई, हमें डरने की जरूरत नहीं मान्यवर। मगर ये सवाल पूरा जो खड़ा हो रहा है वो भय का नहीं है। जिस प्रकार का, अब मैं फिर से सवाल कहता हूं, फिर से शब्द प्रयोग करूंगा, सौतेला व्यवहार आप पार्टी की सरकार ने तीनों निगमों के साथ किया है, इसके कारण ये बिल लेकर आना पड़ा। मान्यवर, हमसे तो दुश्मनी हो सकती है, दिल्ली की जनता से क्या दुश्मनी है? उन्होंने तो आपको वोट दिया है, सरकार बनाने का मौका दिया है। भाजपा की खुंदक दिल्ली की जनता पर क्यों निकाल रहे हो? मान्यवर, मैं कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर चौथा वित्त आयोग तो पूरा उन्होंने सिरे से निकाल दिया, चलो छोड़ दो। दिल्ली का 5वां वित्त आयोग, जिसमें अनुशंसा की गई कि दिल्ली सरकार ने 40,561 करोड़ रुपया तीनों निगमों को देना है प्रोरेटा। दिल्ली सरकार सहमत नहीं हुई, 21,000 करोड़ के आधा कर दिया। 21,000 करोड़ से सहमत हुई, 19,000 करोड़ तो उड़ा ही दिया, 21,000 करोड़ भी पूरा नहीं दिया मान्यवर, और इसका कारण भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमने राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को
जो 5वें दिल्ली वित्त आयोग ने की, उसको मानो ऋण माफी नहीं माना, शिक्षा क्षेत्र व्यय की पूर्ण प्रतिवृत्ति जो प्राथमिक शालाएं कॉरपोरेशन चला रही है नहीं माना, स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण नहीं माना, बकाया ऋणों पर ब्याज माफ करना नहीं माना, और ये कहते हैं कि हम सौतेला व्यवहार नहीं करते। मान्यवर, टोटल 5 साल के बाद तीनों निगम की कुल देनदारी 16,415 करोड़ है और 19,000 करोड़ इन्होंने तो यही नहीं दिए, बाकी नीचे का तो अलग टोटल होता है। ये 19,000 करोड़ देते तो आज तीनों कॉरपोरेशन प्रॉफिट में होते और 3,000 करोड़ रुपया और नगर निगमों को सुविधाओं के लिए प्राप्त होता। इसको मैं सौतेला व्यवहार ना कहूं तो क्या कहूं मान्यवर? ये सौतेला व्यवहार ही है। वो इसलिए किया जाता है कि नगर निगम का चुनाव आ रहा है, जनता त्राहिमाम हो जाए और आप पार्टी को वोट दे। संजय भाई, ऐसे स्वप्न कभी पूरे नहीं होंगे। जनता सब जानती है, जब ये एकीकरण हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, आ जाइएगा चुनाव के मैदान में, कर लगेंगे 2-2 हाथ, कोई नहीं डरता जी, कोई फोबिया नहीं, जरा भी नहीं डरते। मान्यवर, जिस प्रकार से हमने तीनों निगमों ने व्यवसायिक कर को बढ़ाने के लिए 2020 में प्रस्ताव भेजा, जवाब ही नहीं। वो सहायता तो देते नहीं है, कर बढ़ाने नहीं देते। तीनों निगमों द्वारा एक बार की पार्किंग प्रभारों को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा, कोई जवाब नहीं है, परमिशन नहीं देते हैं। जो कह रहे हैं ना, क्यों दखल कर रहे हो, मैं कारण दे रहा हूं। एनडीएमसी ने स्थानांतर शुल्क के संशोधन के लिए प्रस्ताव हुआ, कोई जवाब नहीं है। दक्षिणी निगम की मंशा, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट अच्छी थी, दक्षिणी निगम ने कहा कि हम बॉन्ड लाकर आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बॉन्ड लाकर हमारा निगम चलाना चाहते हैं, परमिशन नहीं दी। शराब और ईंधन पर बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी से अर्जित राजस्व, साहब इतनी शराब की दुकानें खोल दी है, मुझे तो कई बार होता है, लगता है पूरा दिल्ली मैखाना न हो। मगर ठीक है, जो करना था वो आपने कर दिया। इसके राजस्व में नगर निगम का हिस्सा देते ही नहीं है मान्यवर, ये कैसे चलाना? कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इससे इनकम कैसे बढ़ जाएगी। 1+1+1 का थ्योरी समझाया। आप क्या समझते हो? आप न समझाते हो तो हम नहीं समझते, हम भी समझते हैं। मगर 3 निगमों में से एक निगम की आय ज्यादा है, दूसरे की मध्यम है और तीसरे की कनिष्ठ है। तीनों अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो कठिनाई कम होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कम होगा, कमिश्नर एक हो जाएगा, मुख्यालय एक हो जाएगा, चीफ इंजीनियर एक हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं, खर्चा भी कम होगा। और इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है मान्यवर? और मुझे सवाल कर रहे थे कि आपने क्या दिया दिल्ली सरकार को। मान्यवर, मैं 2011 से बोलना चाहता हूं, 10-11 से। 10-11 में 443 करोड़, 11-12 में 582 करोड़, 12-13 में 800 करोड़, 13-14 में 582 करोड़। उसके बाद हम आए, 14-15 में भी हम नहीं थे, मगर 568 करोड़। हम आने के बाद 2016-17 में दिल्ली को देने वाला पैसा 817 करोड़, 857 करोड़, 887 करोड़, 19 में 812 करोड़, 20 में 1116 करोड़, 21 में 1030 करोड़ और 22 में 1000। मान्यवर, इसमें भी अर्ध सत्य है। एक तो हमने एक पैसा भी कम नहीं किया है, डबल किया है, जो पहले से कांग्रेस सरकार से चला आता है। मैं नहीं कहता कांग्रेस सरकार कम दे रही थी, मगर जो दिया जाता था उसमें हमने एक आने की भी कटौती नहीं की है मान्यवर। मैं फ्लोर पर बोल रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं मान्यवर। फिर भी यह अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए इन्होंने एक ही मद को किया है। टोटल कर एवज में केंद्रीय सहायता, ग्रांट इन एड, यूटी का आपदा राहत फंड, एक्सटर्नल एड और प्रोजेक्ट्स, ये सब मिलकर बहुत बड़ा फंड होता है। पुलिस का खर्चा पूरा भारत सरकार उठाती है। ये सब मिलाकर 17,000 करोड़ से ज्यादा हर साल दिल्ली की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मगर आंकड़े ऐसे रखेंगे भाई, मेरी पार्टी के तो संस्कार ऐसे नहीं है।
मालूम नहीं कि आप कैसे बोलना चाहते हैं। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ना इसके अंदर ये बिल लाने में सरकार ने कोई संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, हर संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ये बिल लाए हैं। ये बिल में हमारी कोई मंशा नहीं है। न ही इस बिल के लागू होने के बाद, निगमों की तिथि समाप्त होने के बाद हम कोई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर रखने वाले हैं। एक स्पेशल ऑफिसर आएगा एक्ट के तहत। वो पुराने एक्ट का प्रोविजन है, नए एक्ट का प्रोविजन नहीं है। जो पहले से एक्ट था उसी का है। हम कोई पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं रखेंगे बंगाल की तरह। मान्यवर, एक स्पेशल ऑफिसर आएगा, जो ऑफिसर इसको चलाएगा। और चुनाव भी मान्यवर समय पर ही होंगे। चुनाव के समय से हमें ना अभी डरने की जरूरत है, ना 6 महीने के बाद डरने की जरूरत है। मगर 6 महीने के बाद जिन लोगों को डर लग रहा है, उनको चुनाव का हवा लग रहा है। मान्यवर, हम तो हर जगह ऑल इंडिया पार्टी है। हम हर जगह हर महीना कोई ना कोई स्थानीय इकाई का चुनाव होता है। और हमारी देश में बहुत सारी सरकारें हैं, बहुत सारी जगह पे अलग पार्टी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। कभी हमने दोहरा व्यवहार नहीं किया। कांग्रेस के शासन में बहुत सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारी भी है, कहीं हमारे पास आज तक दोहरा व्यवहार नहीं हुआ। ये पहली बार दिल्ली में सौतेले मां जैसा व्यवहार करने की परंपरा हुई है। दिल्ली की जनता इसको अच्छे से जानती है। मुझे लगता है हमारे गुजरात में कहावत है, हवेली लेता वडोदरू खोलू। एक गायकवाड़ की हवेली थी अहमदाबाद में, वो लेने के लिए गायकवाड़ सरकार हमला लेकर आए और कोई बड़ोड़ा ही पूरा छिन गया था। अगर आप इस तरह से सत्य जो नहीं है वो बताते रहेंगे, असत्य बात सदन के अंदर करते रहेंगे, तो मान्यवर एमसीडी लेते लेते दिल्ली सरकार शायद आपकी न चली जाए, इसकी जरा चिंता करना। क्योंकि एमसीडी पर जो प्रताड़ना आप कर रहे हो, एमसीडी को जो आप प्रताड़ित कर रहे हो, वो एमसीडी को नहीं कर रहे हो, दिल्ली की जनता को कर रहे हो। दिल्ली की जनता भी मेरा ये भाषण सुन रही है मान्यवर, और जाकर हम गली मोहल्ले में बताएंगे भी। इसलिए हमें चुनाव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक आनंद फानन में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। शायद वो गलती के बाद भी राज्य सरकार का सौतेला व्यवहार न होता तो निगम चला भी लेते। मगर आज स्थिति ऐसी हुई है मान्यवर कि चलाना असंभव है। इसके लिए इसको एकीकृत करने का मैं प्रस्ताव लेकर आया हूं। कृपया सभी लोग इसका समर्थन करें, ऐसा सबको अनुरोध कर मेरी बात को समाप्त। धन्यवाद। I shall first put the amendment moved by Sri John Britas for reference of the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajyasabha to vote. The question is that the bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act 1957 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajyasabha consisting of the following members: Sri Vikas Ranjan Bhattacharya, Sri John Britas, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Jose K. Mani, Sri Tiruchi Siva, Dr. V. Shivdasan, Sri K.C. Benugopal, with instruction to report by the last day of the first week of the next session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. In the amendment moved by Sri John Britas is negative. I shall now put the motion moved by Sri Amit Shah to vote. The question is that the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are two amendments, number 1 and 2 by Sri John Britas. I move the amendments. You are moving? Yes. Okay. Moved. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted.
Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment, number 3 by Sri John Britas. I don't move it. You have not moved. No. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There are two amendments, number 4 and 5 by Sri John Britas. So not moved. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There are 15 amendments. Number 6 to 9 by Sri John Britas. Number 20 to 23 by Sri Binay Vishwam. Number 20 to 30 by Sri Binay Vishwam. Sri John Britas, are you moving? Amendments moved. Yes, amendments moved. Mani Sri Binay Vishwam ji, are you moving? I move. Okay. Can you say one word? Amendments moved. I shall put the amendments moved by Sri John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Sri Binay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There are two amendments. Number 10 by Sri John Britas. Are you moving? I don't move. Not moved. Number 13 by Sri Binay Vishwam. Sri Binay Vishwam. Not moving. Are you moving? Not moving. Not moving. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There is one amendment. Number 11 by Sri John Britas. Please to accept it. You have moved. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those Aye. against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 8 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted. Clause 9 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 is adopted. Clause 10 stands part of the bill. There are three amendments. Number 12 to 14 by Sri John Britas. Not moving, sir. So amendments not moved. Amendments not moved. I shall now put clause 10 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 10 is adopted. Clause 11 stands part of the bill. There is one amendment, number 15 by Sri John Britas. Not moving, sir. Not moved. I shall now put clause 11 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 11 is adopted. Clause 12 stands part of the bill. There is one amendment, number 16 by Sri John Britas. Not moving, sir. Not moved. I shall now put clause 12 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 12 is adopted. Clause 13 stands part of the bill. There are three amendments. Number 17 by Sri John Britas. Not moving, sir. Not moving. Number 32 to 33 by Sri Binay Vishwamji. I move, sir. So moved. I shall now put the amendments moved by Sri Binay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 13 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 13 is adopted. Clause 14 stands part of the bill. There are two amendments, number 18 and 19 by Sri John Britas. Very important, sir. Please, Home Minister, are sir. you moving or not? Not moving. Not moving. So not moved.
I shall now put clause 14 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 14 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Amit Shah to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. हाँ. तो वोट कर दिया. डिवीजन आप खत्म होने के बाद कह रहे हैं संजय साहब. वो भी हाँ मैं बता आपके अमेंडमेंट्स के बारे में लेट मी अमेंडमेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं हुआ. डिवीजन भी बिल पे मांग रहे हो. लेट मी इन्फॉर्म द हाउस प्लीज. बिल पास हो चुका है. आपने समय से डिवीजन नहीं मांगा. नंबर 1. नंबर 2, आपने अपने अमेंडमेंट्स की बात की. मैं सदन को बताना चाहूंगा यह दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 डिटेल्स ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ कॉपीज ऑफ द बिल ये लोकसभा में एडवांस सर्कुलेशन 24/3/2022 को हुआ. लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ 25/3/2022 को. पास किया लोकसभा ने 31/03/2022. अंडर रूल 95(1) of the rules of procedure and conduct of business in Rajya Sabha, a notice of amendment has to be given 1 day before the day on which the bill is to be considered. Please let me complete, Sanjay ji. Let me complete. The above bill is listed for consideration and passing in today's list of business, that is 5/4/2022, while the notice of amendments by Sri Sanjay Singh was received today, 5/4/2022 at 12:45 p.m. Accordingly, the notice of amendments could not be admitted. Now, please. I have. नहीं ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया. लोकसभा से पास हुआ, सर्कुलेट हुआ. डेट मैंने आपको बता दिया. I put everything on the record, Sanjay ji. Now a special mention. माननीय श्री सुशील कुमार मोदी. उपसभापति महोदय, India is extremely reliant on newsprint imports and is the largest importer of newsprint globally, importing 45% from Russia alone. The Russia-Ukraine crisis and associated sanctions have stuck shipping containers of newsprint, leading to supply shortages. Such disruptions have been occurring frequently. Workers strike in factories in Finland, Canadian truckers strike in Canada, both significant import sources for India. Moreover, freight costs of ocean transportation have risen by 400% in the last 2 years, also resulting in newsprint supply chain disruptions. The increased cost is translated into higher import costs for domestic newspaper firms, as newsprint alone contributes 40 to 50% of newspaper cost. The prices faced by newspaper firms have risen from $450 per ton in 2019 to $950 ton now. As a consequence, business has become increasingly uneconomical. Even loss-mounting domestic newsprint manufacturers are converting their mills to producing packaging material for robust demand in e-commerce sector. Currently, a tiny fraction of the mills produce newsprint in India. Emerging from the COVID crisis, in which many had stopped taking newspapers and advertisements revenue had dried up, the industry has been suffering since long and needs urgent revival. Most newspapers have stopped sending their edition to rural areas where the demand is low, as distribution costs are not being met by revenues there. Newspapers empower the citizen with information and is essential in a democracy.
I therefore urge Government of India to intervene by securing supply of newsprint, provide relief by scrapping the 5% import duty on newsprint, and to introduce a scheme to incentivize domestic newsprint production. Thank you. Dr. M. Thambedurai. Deputy Speaker, sir. Deputy Chairman, sir. Mr. Chairman, sir, through I would like to bring to the notice of this August House and Honorable Minister of Railways the following matter, urgent public importance, and also my request to the Honorable Prime Minister and the Minister of Railways. Sir, as you know, Bharat Ratna Purachitalu MGR was Chief Minister of Tamil Nadu for 3 consecutive terms and is a respected leader not only in Tamil Nadu and India but also the entire world even today. To pay respects to him and also to respect the sentiments of the Tamilians living all over the world, a request was made by all party leaders, EPS and OPS through then Tamil Nadu government to the Honorable Prime Minister and to the Railway Minister to rename the Chennai Central Railway Station as Chennai Purachittalavar M.G. Ramachandran Railway Station. The request was acceded by Honorable Prime Minister Sri Modi ji, and subsequently the Railway Minister effected the change the name of the railway station. Even now, sir, Dr. MGR is living the hearts of millions of Tamilians all over the world. Hence, it is only fit and proper if the statue of Dr. MGR adorns the Chennai MGR Purachittalavar MGR Railway Station. In this regard, I request Honorable Prime Minister and the Honorable Railway Minister that necessary permission may be kindly granted for the installation of the statue of Dr. Purachittalavar MGR at the entrance of the Chennai Railway MGR Railway Station at the earliest. Thank you, Mr. for giving the opportunity. Thank you. Sri Maharaja Sanjabo Lesichma. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me this opportunity. My special mention is demand for inclusion of ethnic indigenous communities, Meitei or Meitei, in the scheduled tribe list under Article 342, Clause 1 of Indian Constitution. Since 2013, the Meitei have made many representations to Honorable Prime Minister, Home Minister, Minister of Tribal Affairs and other union leaders for consideration of including Meitei in the ST list under Article 342, Clause 1, but till today, any positive or concrete action has not been come out from the union and the state government so far, unless they are provided with constitutional safeguard, that is, the ST status. Without further delay, they shall be reduced to minority, being vulnerable to become refugees in their own ancestral land, once a proud nation state for more than 5,000 years. So, I request the Government of India through this House to kindly take up necessary action and instruct the state government to do the needful as early as possible. Thank you, sir. Thank you. Sri GVL Narsingh Rao, please. Sir, thank you, sir, for the opportunity. So my special mention is about early sanction for construction of. Sir, the mic is not okay. So my special mention is about early sanction for construction of a short railway link line between Narsarawpet and Nakirikallu in Andhra Pradesh for connectivity to Hyderabad. So Narsarawpet is a prominent trading town and district headquarters of New Palnadu district of Andhra Pradesh. Narsarawpet is connected by rail to Bangalore and Kolkata, but not to Hyderabad, the biggest city in the region, with which it has strong trade and commerce links. So Narsarawpet region is a prominent agricultural zone with a large number of food processing industries in its close proximity. Narsarawpet is also a major trading center witnessing huge cargo movement from and to Hyderabad. Large-scale movement of edible oils, pulses, flours, etc. from Narsarawpet to Hyderabad, and textiles, fertilizers, pharmaceuticals and foodstuffs to Hyderabad offer a sizable cargo opportunity for railways. So Narsarawpet can be connected to Hyderabad
by laying a short railway link line to Nekrikallu, which is just 18 kilometers away on New Piduguralla Savalyapuram section of Guntur Railway Division, which is part of the new Nadikudi Srikalahasti railway line being constructed. Survey report by Railway Board for constructing a new railway link line between New Piduguralla to Narsaropet via Sitarampuram, Nekrikallu and Rupenagunta stations has been estimated to cost only rupees 237 crores with a rate of return ROR of minus 0.44%, sir. This has been submitted to the Railway Board, which has kept the project pending. Andhra Pradesh government representatives have assured the Honorable Railway Minister, Shri Ashwini Vaishnavji, in my presence, that the state government will provide or acquire land required for the project or may share cost of the project. In view of this, I request the Railway Board to undertake this project expeditiously. Thank you, sir. माननीय वी विजय साई रेड्डी, नॉट प्रेजेंट. माननीय श्री डेरिक ओब्रायन, नॉट प्रेजेंट. डॉक्टर शांतनु सेन जी, श्रीमती मौसम नूर और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना will associate with Dr. Shantanu Sen, please. Thank you, Deputy Chairman, sir. My special mention is of immense importance of urgent need of bringing Central Act to protect the doctors and healthcare workers. Sir, despite rendering their best possible services, even at the cost of their lives, doctors often get assaulted, though their untiring efforts have been noticed even during this COVID pandemic. Recently, in Viratnagar of Rajasthan, on 28th of March, a 22 years pregnant woman was brought to Anand Hospital and admitted under Dr. Archana Sharma. As there was a sudden and profuse bleeding, in spite of taking her to the labor room and taking all possible measures, the patient could not be saved. This profuse bleeding, that is PPH, postpartum hemorrhage, is one of the most common complications of pregnancy, sir. The patient party was initially convinced and they took the body home. But thereafter, some political persons and one journalist, they instigated and they to bring the body back to the hospital to demand money and to lodge FIR under IPC 302. On 29th of March, that lady doctor, Dr. Archana Sharma, unfortunately committed suicide, writing a suicidal note in which she has categorically mentioned she did not kill anyone and she did not do any mistake. She has urged to stop harassing doctors and not to harass her family. She has also written that her death might prove her innocence. I would therefore sincerely request our government to bring a central act to protect the doctors and healthcare workers, as no one can work in such fearful atmosphere, sir. Thank you. मौसम नूर जी, आप टाइटल पढ़कर ले करें क्योंकि सेम सब्जेक्ट है. Just 1 minute, it will take just 1 minute. 2 मिनट नहीं, पूरा पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है. चेयरमैन साहब ने एसोसिएट किया है, सेम सब्जेक्ट. प्लीज. Sir, on 29th March, the country was left in shock by the news of female obstetrician committing suicide after an FIR for murder was filed against her following a death of a patient in her care. She pleaded in her suicide note, "Do not harass innocent doctors." The entire medical fraternity echoed the sentiment in pain and anger. The newspaper bears witness to the increasing violence against doctors across the country. However, it is shocking to note the lack of data on this issue. The only data available is sparse and anecdotal in nature. Whatever little is known might as well be the tip of the iceberg. A 2017 survey by Indian Medical Association reported that over 46% of doctors in India fear violence. Following the pandemic, the repeated instances of violences have multiplied. Unfortunately, no initiative has been taken by the government to collect data on the issue yet, as per an answer laid in the Rajyasabha. In 2019, Ministry of Health framed a draft central legislation to address the issue of violence against the healthcare service professionals and damage to property of clinical establishments. However, the Ministry of Home Affairs did not favor the need for a separate law to check violence against the fraternity. The need for a comprehensive law on the issue has surfaced again. I urge the ministry to take a note to collect data on violence against doctors and to introduce a separate legislation in this regard. Thank you, sir. डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी, सेम सब्जेक्ट है, आप एसोसिएट. हाँ, थोड़ा मेरा कंटेंट्स अलग है. जी.
हर मरीज की मौत को डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से जोड़ देने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टरों पर हमले करने का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाल ही में राजस्थान में एक महिला डॉक्टर ने दबाव के कारण खुदकुशी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 के अपने फैसले में कहा था कि डॉक्टर सर्वोच्च क्षमता के साथ मरीज का इलाज करता है। किसी कारण से मरीज की मौत होती है तो उसके कारण डॉक्टर लापरवाही का दोषी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के अनुसार सर्जरी के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर की लापरवाही नहीं माना जा सकता। इसके लिए चिकित्सा साक्ष्य जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के एक फैसले के अनुसार अदालतें फैसला देने से पूर्व डॉक्टर को अपना पक्ष सुनने का मौका दें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में बॉम्बे अस्पताल के केस में कहा था कि मरीज की मौत के हर मामले को चिकित्सीय लापरवाही से नहीं जोड़ना चाहिए। डॉक्टर, नर्स से मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में एक बिल का मसौदा तैयार किया था, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में तोड़फोड़, हिंसा या कार्य में बाधा डालने पर परिजनों के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया जाना नितांत आवश्यक है। अतः केंद्र सरकार से मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा करने की दृष्टि से सख्त कानून संसद से पास किया जाए। डॉक्टर फौजिया खान जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री जयराम रमेश जी। Mr. Chairman, sir. Sir, before I start, I just want to mention that parliamentary convention and tradition is that a cabinet minister is present when the house is in session. I have to point out that there is no cabinet minister present. Sir, my special mention is on protection of monuments. There have been some news reports recently that the Union government is planning to bring amendments to the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 2010. I rise to express my concern at this move. The Act was unanimously passed by all parties in Parliament. It brought within its ambit of central legislation a prohibited zone of within 100 meters around protected monuments where no new construction is allowed. Alongside, there is a regulated zone of a minimum of 200 meters beyond the prohibited zone where any proposed changes to be made would require clearance from a public authority. The purpose of this was to protect precious sites that reflect the wonderful cultural diversity that has defined and enriched India for centuries. There are some 3,700 odd monuments today which are protected by the Archaeological Survey of India as monuments of national importance, along with more than double that number in states and union territories also protected in this way. The number of protected monuments in India must increase significantly. Laws passed by Parliament must be implemented in letter and spirit. The statutory National Monuments Authority, created in 2010, must remain a professional body. Its present chairperson does not meet the qualifications prescribed by Parliament. It must be fully empowered to accelerate the preparation of bylaws. Sadly, so far, such heritage bylaws for only 5 monuments have been placed before Parliament as required by the 2010 law. These bylaws are vital for reconciling developmental imperatives with conservation needs. I seek the urgent attention of the government on this issue. Thank you, sir. माननीय वीर रंजन विश्वास जी। So my special mention is on disbursal of loans without customer consent using identity theft. Sir, an extensive consent scam involving 84,000 loans at the Bharat Financial Inclusion Limited, that is BFIL, reportedly due to a technical glitch, has brought to light the lack of regulatory oversight and proper consent collection system at financial institutions. The absence of a robust regulatory and consent collection system has been an enabling factor in these fraudulent transactions. Thousands of loans have been availed
from the bank by fraudsters using other people's names and PAN details without their knowledge or consent. The issue has been reported by several affected people, including BFIL employees, to the RBI and the board of the IndusInd Bank. The Economic Times, a business daily, had published whistleblowing reports exposing lapses in governance and accounting norms that had led to the evergreening of loans. Despite this, no concrete action has been taken, nor has there been an acknowledgement of the severity of these issues. This is not an isolated event. In February, a similar incident was reported from Dhani Loans and Services Limited, a private company, where several loans were disbursed without consent of the person under whose name the loans had been availed. The ever-increasing reliance on digital banking and transactions have heightened the need for a more robust regulatory system and grievance redressal mechanism. OTP frauds need to be studied and the digital rights of consumers should be strengthened. Hence, I urge the Finance Minister to take cognizance of the severity and urgency of the issue and undertake appropriate action. Thank you, sir. Thank you. Mani Shri Mohammad Nadimul Haq to associate, not present. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Wednesday, the 6th April 2022. Thank you, sir.